प्रकरण के ये अवलोकन लोग कौन है? मान सिंह, उइके, कुमुद शुक्ल, सब इसमें रमाशंकर मिश्रा। ये लास्ट पैरा में आया साहब, पेज नंबर 15 पे आया। चलिए पहले इसको सीरियसली पढ़ते चलिए आप। हाँ। नियुक्त करने के पूर्व निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेखों को न तो देखा गया और न ही उनके संबंध में कोई जांच की गई। जनपद पंचायत द्वारा रिक्त पद उपलब्ध न होते हुए भी नियुक्तियां की गई जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि आवेदिका विमला द्विवेदी। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा लिंक टूट गया, कहाँ पर पढ़ रहे थे? ये 5 पॉइंट साहब रेज किए थे। उसका पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। आप कौन सा पढ़ रहे हैं? मैं ये 5 पढ़ चुका हूँ, आगे देखा 5 फिर से पढ़ देता हूँ। हाँ। पहला साहब, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देश व आदेश विधि प्रक्रिया के प्रकरण में आय तथा भर्ती हेतु बनाए गए नियमों के विपरीत है। दूसरा, जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से 5 को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति करने के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से न तो अनुमति ली गई और न इस संबंध में पदों की रिक्तियों की कोई जानकारी शिक्षा विभाग से प्राप्त की गई। और अगला है साहब, बगैर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए वो तो पढ़ लिया। नियुक्ति करने के पूर्व शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेखों को न तो देखा गया न ही उनके संबंध में कोई जांच की गई। जनपद पंचायत द्वारा रिक्त पद उपलब्ध न होते हुए भी नियुक्तियां की गई जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त की जा रही। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है आवेदिका विमला स्वयं 1/10 जाब्ता दीवानी के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत के प्रकरण में बतौर निगरानी पक्षकार बनाए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन 5/9/14 को सुनवाई कर आवेदन स्वीकार किया गया तथा पक्षकार बनाया गया, किंतु निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा निगरानी में संशोधन नहीं किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग से प्राप्त मूल नस्ती के परिशीलन में पाया गया कि आवेदिका पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष 7 फरवरी 2011 को विकलांगता के आधार पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर सीधी ने टिप अंकित की। सीओ जेपी रामपुर नैकिंग जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी वांछित ले कार्यवाही करें। उक्त आवेदन से टाइप किया हुआ है जिसमें संलग्न पात्रता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आगे स्याही से एवं 2 आवेदन पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार आवेदिका दीपा पांडे के नाम के सामने स्याही से 1 लिखा है तथा नीचे स्याही से 2 डालकर सतीश पांडे लिखा है। एक ही आवेदन में 2 अभ्यर्थियों का नाम लिखा साहब। हाँ ठीक। उसके बाद क्या किया आपने? जो बात का लिखा प्रति जो भी ये डॉक्यूमेंट साहब ये सभी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। हाँ साहब, ये मैं लास्ट पैरा निवेदन कर रहा था साहब, पेज नंबर 15 से देख लेता हूँ, पैरा 12 में लो। हाँ पढ़िए। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आवेदिका दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर सीधी से सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्य कलेक्टर साहब को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? कलेक्टर साहब बिगड़ पड़े एंडोर्स कर देते हैं। आपके कमिश्नर साहब कलेक्टर साहब को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? कलेक्टर साहब आंख मूंद के एंडोर्स कर देते हैं। Will be required to answer this। सभी के खिलाफ नहीं कर लीजिएगा। कलेक्टर साहब के खिलाफ भी एफआईआर हुई नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अभी तो जांच यहाँ से स्टे हो गई, जांच का विषय साहब वो हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे कलेक्टर के खिलाफ भी एफआईआर की जाए। दिन कलेक्टर जी जिला शिक्षा अधिकारी से जांच क्यों स्टे कर दी गई हाईकोर्ट द्वारा? जांच पे तो नहीं, नो कोर्सिव स्टेप है अगेंस्ट। कब का ऑर्डर है ये? एंड अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ दिस ऑर्डर हैज बीन पास्ड? नो कोर्सिव एक्शन। That is R4 page 28. R4 page 28 document D of the reply. R4 एक सेकंड सॉरी। There is 4 petitions my lord in page 28 my lord 28 से 31 तक सब में साहब वही सेम ऑर्डर। क्या है देखना तो जरा। हो गया 8 से 9 से चले गए। कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए ये पेज पढ़ लें साहब थोड़ा सा। हाँ पढ़िए ना प्लीज। पेज 17 पढ़ रहे थे जी साहब, पेज 15 पैरा 12 से पैरा 12 पेज 15। हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा प्लीज। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि आवेदिका दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन जिसमें कलेक्टर सीधी ने सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग को जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेकर वांछित कार्यवाही करने की टिप अंकित की गई है का आधार लेकर बिना विज्ञापन निकाले तथा नियुक्ति हेतु कोई कमेटी गठित किए बिना एवं रोस्टर अनुसार आरक्षण नियमों का पालन न करते हुए श्रेष्ठता एवं वरीयता का ध्यान न रखते हुए तथा विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की कूट रचित तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से नियुक्ति की गई
तथा पदी दायित्वों का निर्वहन न करते हुए व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया जो लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध है। इस प्रकार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग, जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिंग, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग तथा अन्य सहयोगी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना प्रमाणित पाया जाता है, जिसके कारण अनावेदक सतीश कुमार पांडे, दीपा पांडे, राजेश कुमार साहू एवं विभा शर्मा की नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर की गई है। स्पष्ट है कि उक्त कृत्य के उपरोक्त अनावेदक गण की भ्रष्टाचार एवं कपट का सहारा लेते हुए अपनी नियुक्ति कराने में सफल रहे तथा अवैध नियुक्ति कराकर शासन से वेतन भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इस प्रकरण में निम्न त्रुटियां एवं नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई हैं। शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति हेतु बेहद प्रक्रिया का पालन न करते हुए भर्ती नियम की विपरीत की गई है। नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन नहीं किया गया है। आवेदकगण की नियुक्ति बिना विज्ञापन निकाले की गई है। प्रथम आवेदन जो दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसमें पृथक से हैंड राइटिंग से सतीश कुमार पांडे का नाम जोड़ा गया है। दूसरे आवेदक राजेश कुमार साहू द्वारा कलेक्टर सीधी को प्रस्तुत आवेदन में कलेक्टर की मार्किंग नहीं है तथा उसमें विभा शर्मा का नाम पृथक से हैंड राइटिंग से जोड़ा गया है। अभिलेखों में जानबूझकर कूटरचना कर आदेश दिनांक 3/4/2011 द्वारा अनावेदक सतीश कुमार पांडे, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 दीपा पांडे दिनांक 15/4/2011 तथा राजेश कुमार साहू, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 विभा शर्मा में की गई नियुक्ति अवैध, त्रुटिपूर्ण तथा अभिलेखों में कूट रचना कर विहित प्रक्रिया के विपरीत है। अतः अनावेदक क्रमांक 2, 3, 4, 5 की संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनावेदक गणों को नियुक्ति दिनांक से अब तक भुगतान किए गए वेतन भत्ते, मैं ब्याज राजस्व वसूली की बात वसूल किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। नियमों के विपरीत अवैध नियुक्ति करने के में संलग्न तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग जिला सीधी तथा भर्ती प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाकर नियुक्ति प्रदान कर शासन को आर्थिक क्षति कारित करने तथा अनावेदक गणों के साथ मिलकर अभिलेखों में हेराफेरी, कूट रचना एवं धोखाधड़ी किए जाने के आरोप से में संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार कलेक्टर जिला सीधी 15 दिवस में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आदेश प्रति के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग से प्राप्त मूल नस्ती कलेक्टर सीधी को उपरोक्त कार्यवाही भेजा। हो गया। Then my lord, annexure R2 is the FIR man. जी वो तो देख लिया। R3 है FIR जी। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये मानसिंह उइके, कुमुद शुक्ल और रमाशंकर मिश्रा कौन लोग हैं? ये जिला शिक्षा, ये राकेश पांडे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द एजुकेशन सोसाइटी वाले। राकेश पांडे प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। इनका क्या लोकस है? जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग। इनका क्या लोकस है? ये अप्रूवल होता है कमेटी से साहब, इनकी नियुक्ति की जाती। तो ये कमेटी में एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल था? जी सर। तो ये भी को एक्यूज्ड हैं? इनके नामजद FIR। हाँ ठीक है। और ये कौन है? मानसिंह उइके। Who's appearing for मानसिंह उइके? हाँ आप ही तो अपेयर हो रहे हैं 1.4 में। क्या आप क्या हैं? किसी से पूछ रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे? बिगर पढ़े मत आइए हाई कोर्ट में। इतना टाइम थोड़ा लगता है कि यही फाइल खोलेंगे यही देखेंगे आप लोग। घर में टाइम नहीं मिलता कि आप लोगों को फाइल खोलने का। मानसिंह उइके में 3 पिटिशनर है साहब। हाँ। मानसिंह क्या है ये लोग? मानसिंह ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन। राय सिंह फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। राय सिंह। हाँ। एंड थर्ड इज माय लॉर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हाँ जी। और पंडाराम पडवार इज द फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत रामपुर। चलिए। और ये कुमुद कुमार शुक्ल क्या है? सर हम क्लर्क हैं और सर हमें से चार्ज लेकर के ये साकेत को दे दिया गया सर 4/1/2008 के आदेश से। ठीक। हमने रिजॉइंडर फाइल किया है। जी जी। और ये कार्रवाई कब की है? ये कार्रवाई कब की है? ये कार्रवाई कब की है? अपॉइंटमेंट कब के है? ये कार्रवाई कब शुरू हुई थी सर ये नियुक्ति के लिए?
बताओ। 2011 में शुरू हुई। 2011 में तो पकड़ी गई है भाई वकील साहब, आपको भी पूरी जानकारी नहीं है। या तो विधानसभा में सवाल हो गया, दो 2011 में तो सवाल हो गया। अच्छा, 2011 में नियुक्तियां हुई हैं। जी। ठीक, चलिए। तो आपको वो तो एफआईआर में आपको छोड़ दिया जाएगा फिर इन्वेस्टिगेशन में, और क्या जांच है। होगी तो जांच में 2008। सर हमने वो सब दस्तावेज फाइल किए ठीक है, कर दिए हमसे आप। लेके चार्ज दूसरे को दे दिया गया। कब दे दिया था? सर ये दे दिए गए 5/1/2008 का आर्डर है। 5/1/2008। और कब दिया आपने चार्ज, कब दिया? तुरंत दूसरे दिन दे दिया सर। कहाँ है चार्ज हैंडिंग ये ओवर सर की? ये लगाया है। अरे कागज से बताइए, वहां ऐसे कागज मत दिखाई पांडे जी। ये आपको हाईकोर्ट में काफी टाइम हो गया वकालत करते हुए। सर मैंने जो फाइल किया वो मैं तो फाइल किया तो उसका एनेक्शर बताएंगे ना आप? यस RJ2 है सर। हाँ, क्या लिखा उसमें? उसमें मैंने बताया सर कि कुमुद कुमार शुक्ला मुख्य लिपिक के अवकाश आवेदन कारण संविदा साल शिक्षक वर्ग 2-3 के नियोजन संबंधी समस्त प्रभार आगामी आदेश तक भैयालाल साकेत सहायक वर्ग 2 को तत्काल प्रभाव सौंपा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है जनपद पंचायत। तारीख क्या है इस आदेश की? ये सर 5/1/2008। ठीक ठीक, तो कार्य सौंपा गया था, फिर वापस चार्ज में कब आया? टेम्पररी था, सर हमने आपकी आपके अवकाश के कारण सौंपा गया था। चलिएगा, ठीक। और ये रमाशंकर मिश्र कौन है? हाँ, क्या है, आप क्या है? From 5/11/2009, I'm working on the post of सहायक संचालक कार्यालय शिक्षा अधिकारी सीधी, किस पद पर काम कर रहे थे? असिस्टेंट डायरेक्टर। assistant director, and on असिस्टेंट डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ डीईओ। DU. जी। And on 30/3/2011, that would be RJ2, I was given the tentative charge of district education officer, जी जी and I took up the charge on 1st of April 2011. जी। और ये आदेश कब पारित हुआ है? मेरा 30/3/2011 का आदेश है मेरा RJ2. I'm finding the 30/3। 30/3/2011. किसने पारित किया ये आदेश? अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग भोपाल। नियुक्ति का आदेश अपर सचिव ने जारी किया है। As per next RJ2 आदेश was 30/3/2011. एक सेकंड, I have a copy of the rejoinder. रुक जाइए। कॉपी ऑफ नहीं, whatever is on record is to be seen from the process record। of filing the rejoinders in the process of filing my lord. I filed my वकालतनामा yesterday only. नहीं, So I have नहीं। an extra copy of नहीं, from 2019 if you have been sleeping, आपका नाम तो ऑलरेडी आ रहा है कॉज लिस्ट में। सॉरी, ये सब कहानी मत सुनाइए। reply. The reply has been filed 3 days back, my lord, and we filed a ठीक है, rejoinder yesterday. हाँ ठीक है, तो यू फाइल्ड इट यस्टरडे ना। आई कॉल फॉर अ कॉपी, दीजिएगा इसमें 1.7 में रिजॉइंडर की कॉपी निकाल के दीजिएगा। The rejoinder has not come on record yet, my lord. The IA number is also yet to be generated because certain typing copies had to be filed along with our reply. आपने क्यों नहीं why this delaying tactics? Why this delaying tactics? You think that you will be able to escape? Now on 4/3/24, my वकालतनामा has been filed, my lord, yesterday. Who asked you to file वकालतनामा on 4/3/23? When this matter is pending since 2023, who had appeared earlier? 2018। एक मिनट है, रिजॉइंडर बुलवा लीजिए। इस तरीके से नहीं होगा ये। मिस्टर सत्यम अग्रवाल अपीयर हुए थे 2019 में, फिर चेंज ऑफ काउंसिल कब हुआ? जस्ट टू अवॉइड द कोर्ट, अब चेंज ऑफ काउंसिल भी हो गया। ऐसा थोड़ा ना होता है। I apologize for that, Lord. यू शुड, ये सब टैक्टिक्स वहां ऑफिस में छोड़कर आइए। ये आप जो कर रहे हैं आज, उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, एंड आई विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस। रिजॉइंडर बुलवाइए, इस मैटर को 12 बजे लेंगे। लेट रिजॉइंडर बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। एंड आज आर्ग्यूमेंट्स होंगे, केस एडजॉर्न नहीं होगा किसी भी हालत में। आपको जिसको एंगेज करना हो लेकर आ जाइएगा 12 बजे। Lord, I apologize for that, my lord, but we got. नहीं, but your conduct is shady. Sorry. But the petitioner has engaged us day before yesterday only, my lord. We got. हाँ, the file. that means that your petitioner is very shady. Why he engaged you? Do you get any special privilege in this court?
My lord, he had engaged senior advocate Ramesh Agarwal. He's not available today. That's why I'm arguing on his behalf, my lord. Non-availability of senior advocate is not a ground for adjournment. To argue, have an extra copy of the Yes. request. जी. आपका वकालतनामे में आपके कॉज लिस्ट में नाम आ रहा है. ये ऑफिस ऑफ कब से लिखने लगे वकालतनामे में? इसको मैटर को डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवा दूं क्या? आप लोग वकालतनामे में ये कैसे लिख रहे हैं? संजना साहनी, ऑफिस ऑफ रवीश अग्रवाल सीनियर एडवोकेट. हाउ कैन यू canvass name of a senior advocate in wakalatnama? Should I send this matter to the disciplinary committee? All these senior advocates should understand that they cannot represent themselves in any form before the court except on the instructions of the instructing counsel. ये tactics बंद करिए आप लोग. इसको मैं डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवा दूंगा, आपका गाउन छिन जाएगा, बेइज्जती अलग होगी आप लोगों की. Stop this tactics. This court takes exception to the I apologize for that. wakalatnama in which counsel Sanjana Sahani, Saket Malik and Jasprit Gulati have represented themselves to be office of Ravish Agrawal senior advocate. Mentioning of name of senior advocate in the wakalatnama is a kind of surrogate advertising. This is not permissible. Senior advocate should have the capability and capacity of being engaged and represented through the engaging counsel and should not represent his name in a surrogate manner like this in the wakalatnama. Registry is directed I highly to apologize, my lord. take care of this aspect, and whosoever is represented like this in future, matter be referred to the disciplinary committee for taking action against such senior advocates. Matter will be taken up at 12 p.m. In the meanwhile, reader is directed to call for the rejoinder filed. और किसी का कोई दस्तावेज तो नहीं आना है? कल ही तो फाइल नहीं किया है, आज सुबह तो फाइल नहीं किया है आपने जी. मैं बढ़ाऊंगा नहीं 12 बजे, इसलिए मैंने बता दिया आपको. Reply on the behalf of respondent number 5 and 6. हाँ तो उसको भी आज ही आना, मतलब उसको किया है फाइल. आपको बोला ना सुबह स्पेयर कॉपी लाके रखिएगा यहाँ पर. My lord, I render my unconditional apology, जी my जी lord. ठीक है. The matter was kept today for awaiting the judgment in the reference. But the reference, the order has not been uploaded, although it was listed yesterday. Order has not been uploaded. Upload अभी तक तो मैंने चेक किया तो नहीं दिखा. Shri K.N. Petia, अगर अगले हफ्ते तक आएगा. learned counsel for the petitioner. Shri Darshan Soni, government advocate panel lawyer. Not government at all. Government advocate for the state. He submits that though WA 815/2017 was listed yesterday for delivery of judgment, but till now judgment has not been uploaded on the official website of the High Court. Will stop taking this fact into consideration that judgment has yet not been uploaded and therefore no inference can be drawn as to what has been decided. Reluctantly, case is adjourned list next week. Under the same head. But in this, we have filed the affidavit today by seeking permission of the Honorable Court. I have a spare copy. जी. I have supplied a copy to my senior. बताइएगा. ये देख लिया आपने रिप्लाई? मलट हाँ, क्या कहते हैं? उनका कहना ये है मलट कि हम फिर से जो है अभ्यावेदन पर विचार करेंगे, उसमें कब करेंगे विचार? स्थापना प्रभारी 7 दिवस में प्रस्तुत करें, ऐसा इन्होंने मैडम दिया है. लास्ट पैरा महिला माननीय न्यायालय आयुक्त नगरीय स्वास्थ्य के सही जवाब 7 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. उपरोक्त तथ्य परिपेक्ष में स्पष्ट है कि आरसी साबले द्वारा 33 वर्ष की सेवा पूर्ण की गई है. यह भी तृतीय समयमान दिए जाने के प्रावधान के आवश्यक as per the
affidavit filed by one Shri Bharat Yadav, Commissioner Urban Administration Development Department, Bhopal. Shri Kailash Wankhede, Additional Commissioner, has taken a decision to re-examine the representation of the petitioner Shri R.C. Savle and has directed to produce report within 7 days. This order is dated 6/3/2024. Let report be called for and decision be taken in this behalf on or before 15 March 2024. List the copy of the decision be filed before the High Court by 18th March, and that decision will be a speaking order. List this case on 19th March, top of the list. दे दीजिएगा वापस. Number 4. This case, my lord, last date of hearing, my lord, कलेक्टर को डायरेक्शन था कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने. जी. कंप्लायंस हो गया है. कल हमने बुलडोजर से पूरा हटा दिया इंक्रोचमेंट में. नहीं, अभी रिसेंट मैंने फोटोग्राफ्स मंगाए my lord. ये हटाते हैं वो फिर से वहीं पे. नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी, वो हटाते हैं वो फिर से बनाता है. आप अपना कब्जा लीजिए. सॉरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा इस केस में. लिखिएगा. My lord, नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप पिछली 3 पेशी से आपको सुन रहे हैं. हटाते हैं, आपका अपना कब्जा सिक्योर करिए. my lord, वो एक दीवार हटा के वहाँ फोटो खींच के और यहाँ फाइल कर देते हैं. बाकी वहाँ सेम एज इट इज रहता है. मेरा सिर्फ आप कंटेम्प्ट लगाइएगा. हम इनके अंडरटेकिंग नोट कर ले रहे हैं. इन्होंने हटा दिया. कंटेम्प्ट लगाइएगा. लिखिएगा. कॉपी भी अभी मुझे मिला. ठीक है. श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता फॉर द पिटीशन. अभी की फोटोग्राफ्स मानस देख मणि लें. वर्मा. नहीं, ये सब नहीं. Submits that he has filed affidavit of Srimati Pratibha Pal, daughter of Shri Jagannath Prasad Pal, Collector Rewa, in which it is mentioned that in compliance of the directions of the High Court, Revenue Authority of District Rewa along with police officials have removed the encroachments. In this regard, they have prepared a Panchnama Annexure A1 and have enclosed photographs to show that the encroachment has been removed. Full stop. Though petitioner has objections, but this court is satisfied. This court is of the view that once Collector Rewa, who is the senior and responsible officer, has filed her own affidavit saying that the compliance has been made, then if that report is false, then petitioner will be free to file contempt proceedings against the said collector. But no further indulgence can be shown in the matter, overlooking the affidavit of the collector and the photographs enclosed therewith merely at the instance of the petitioner. Thus, full stop. Thus, taking the statement of the collector, District Rewa, Srimati Pratibha Pal, to be correct, comma, petition is disposed of as the relief claimed has already been granted. तीनों पिटीशन खत्म कर दिए. Next, इसमें जो पंचनामा इन्होंने प्रिपेयर किया है, उसमें किसी भी पिटिशनर के साइन नहीं. आप नहीं जाएंगे तो क्या आपको घर से बुलाने जाएंगे? हम वहाँ थे, मना किया. फोर्सफुली वो हमसे पंचनामा में सिग्नेचर करा रहे थे. अच्छा. जबकि वहाँ से हटाया नहीं था. अच्छा, ठीक. आप कंटेम्प्ट लगाइएगा. झूठ बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट लगाइएगा. ठीक है. आपको लग रहा है, अब हमें लग रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट दूसरा जागृत हो गया है. नहीं साहब. हाँ, समझ में आ रहा है हमको भी. Now you are trying to blackmail the authorities. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. चलिएगा. Next case. Number 5. This matter, my lord, the Honorable Court directed the state to file an affidavit of the collector to show that when notice was issued by SDO on 25 granting up to 5/2,
then why the order was passed on 30/1/2000? एक सेकंड रुक जाइएगा. Yes, आ गया आपका In affidavit. reply to page number 4, if your lordship would see of their affidavit, Lord. हाँ जी, पढ़ते हैं. Paragraph. Page number 4. Yes, my lord, of their affidavit, my lord. हाँ हाँ. Paragraph तो नहीं करे इन्होंने. Quote किया इन्होंने that petition has specifically made allegation that prior to the completion of the time mentioned in the show cause, order of suspension and attachment has been passed. In this regard, aforesaid contention, it is pertinent to mention here that answering respondent followed procedure as prescribed in ये public distribution. कौन कलेक्टर हैं ये आपके? ये कैसे? कौन कलेक्टर साहब हैं, जरा देखें तो. दीपक आर्या. दीपक आर्या. जी. थोड़ा सा बताइएगा हमको. शो कॉज नोटिस में आप एक डेट अंकित करते हैं, ऊपर से ये बोल रहा है प्रोसीजर फॉलोड. गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं हाई कोर्ट को. नहीं मतलब हाउ कैन ही जस्टिफाई दैट? और ये तो कैन ही मिसलीड द हाई कोर्ट लाइक दिस? कॉल हिम. देखिएगा. Affidavit filed by one Mr. Deepak Arya, son of Dhirendra Arya, is cryptic and absurd. On internal page 4 of his affidavit, he has mentioned that allegations made that petitioner, that inverted comma, the petitioner in his petition has specifically made allegations that prior to the completion of the time mentioned in the show cause, comma, order of suspension and attachment has been passed, full stop. In regard to the aforesaid contention, comma, it is pertinent to mention here that the answering respondent followed the procedure prescribed in the Madhya Pradesh public distribution system within bracket control bracket close order, comma, 2015, full stop. The relevant clauses 16 within bracket 3 and 16 within bracket 5 are reproduced here under. It is evident that this court, that collector has not answered the query of this court that when subdivisional officer within bracket revenue bracket close Rehli district Sagar had issued notice on 25/1/2024 asking the petitioner to furnish his reply up to 5/2/24, then how he could have passed orders on 30/1/2024, full stop. Thus it is apparent that collector is trying to mislead the High Court, full stop. Let contempt notices be issued to the collector Sagar to show cause that why contempt show cause notice be issued, contempt show cause notice be issued to the collector Sagar that why contempt proceedings be not drawn against collector Sagar for misleading the High Court and not giving direct reply to the query which was asked by the High Court. Let notices be served through the government advocate Shri Darshan Soni, full stop. Notices be prepared during the course of the day and handed over to Shri Darshan Soni, government advocate, for onward transmission. Collector Sagar may furnish reply within 7 days thereafter. List this case on 18 March 2024, top of the list. In fact, interim order to continue. जी क्या हुआ? नहीं, interim order नहीं है क्या अभी? interim order ठीक है, interim order to continue. ये क्या हो गया? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करते हैं. वो एक कोर्ट का जजमेंट है कि एक ही नोटिस रिक्वायर्ड रहता, सस्पेंशन के लिए नहीं रहता वो. ठीक है, कोई बात नहीं. तो आपने टाइम क्यों दिया था 5/2 तक? वो शायद फाइनल उसके लिए दिया होगा टर्मिनेशन. बट चलिए ठीक है, समझ लेंगे. ठीक है ना भाई, हो सकता हमसे समझने में कोई कमी नहीं हो, इसीलिए तो नोटिस दिया है, वही पनिश नहीं किया है. ठीक है.
But this we have filed today. The reply has been filed. This case, query. क्या Yep. क्वेरी थी? Lord, it was regarding grant of bonus marks. I have been denied bonus marks. From the reply, it is it is stated that since I have not worked in the dispensary under the state government, and therefore I am not entitled to the bonus marks. कहाँ है स्कीम, कहाँ है बोनस मार्क्स की? Okay. Sir, the annexure P1 is the advertisement, and the relevant clause is at page number 14. 14. जी। संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान। एक सेकंड। संविदा पे कार्यरत विशेष उपबंध कर्मियों को अधिकतम आयु बोनस ये नंबर 2 पर है सर। मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय, पीएससी, सीएससी, औषधालय किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर। शासकीय उपक्रम में। हाँ। Now they say that it is the institution where I have worked is not under the state government. आप कहाँ काम करते थे? I was under the central government. My certificate is at page number 31, Lord, P4. शासकीय को स्टेट है? P4. That is what my submission is. P4. जी, P4 is the certificate issued by my employer. That is the central government. जी, बताइएगा। आपने कहा मध्य प्रदेश शासन कहाँ लिखा है इसमें? नहीं, इसमें मतलब in the reply. अरे रिप्लाई तो आप क्या? Can you go outside the terms of the advertisement? This is with respect to the rule. नहीं, तो संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान जी। मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय। मध्य प्रदेश शासन के नहीं, मध्य प्रदेश शासन के नहीं। मध्य प्रदेश is defining the territory कि मध्य प्रदेश में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कार्य क्षेत्र होना चाहिए। But this is with respect to the government of MP. That is what we have कहाँ लिखा है आपने? In the reply we have stated in para. In reply rules तो बता दीजिए प्लीज थोड़ा सा। The rule not modified at R1 is the rule. R1 This is the amendment in the service में क्या लिखा है पढ़िएगा। page 10 पढ़िएगा। नियम 2 ब्रैकेट में 9 संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान। मध्य प्रदेश की किसी शासकीय उपक्रम में चिकित्सालय, पीएचसी, सीएचसी, औषधालय किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 3% अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष हेतु अधिकतम 15% बोनस अंक किए जाएंगे, किंतु लिखित परीक्षा की श्रेणी व न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु we are not concerned with that. We are only concerned with this is with respect to central government, a person working in a central government undertaking in the state of Madhya Pradesh is entitled to bonus marks or not. That is the limited thing. इसमें ये आया है प्रमाणित किया जाता है कि इतना ने श्रम कल्याण संगठन जबलपुर मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के अधीनस्थ आयुर्वेदिक औषधालय सगमानिया जिला सतना में निम्नलिखित अलग अलग अवधियों में 179 के पश्चात ब्रेक देकर पुनः वैध संविदा के में कार्य किया है। ये पीरियड आ गया, अब आपको इसको कंसीडर करना है। चूंकि एमपी की गवर्नमेंट के अंतर्गत ही सर्विस है। लिखा है मध्य प्रदेश शासन। जब आप नियम बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए, उसमें लिख देते हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, फिर हम इनकी पिटीशन पहले दिन खारिज कर देते, आपको तकलीफ ही नहीं देते जवाब देने के लिए। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश शासन में फर्क समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं। मध्य प्रदेश तो पूरा शासन is the under the government, but the intention is that the only persons who are working will not draw intention as per your understanding, and rule is to be read in the totality. You have nowhere mentioned, आपने ठीक है बाद में कह दिया मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय, ठीक है, पीएससी, सीएचसी, औषधालय ऑब्लिक किसी शासकीय उपक्रम में, किसी शासकीय उपक्रम में, आपने ये नहीं कहा मध्य प्रदेश के शासकीय उपक्रम में। बट अगर आगे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश शासन का शासकीय उपक्रम होना चाहिए। आप इसी केस में है क्या? हाँ आइए ना प्लीज आइए, बुला लीजिए ओआईसी को, बुला लीजिए। एडवांटेज ऑफ द माय लॉर्ड एमपी डोमिसाइल ऐसा कहाँ है? तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुका है कि एमपी डोमिसाइल का तो आप कर ही नहीं सकते, तो आर्बिट्रेरी है। एमपी की डिस्पेंसरी में जो साहब तो ये एमपी में ही तो काम कर रहे थे ये, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ऐसा कहाँ लिखा है भाई ये रूल? मैडम आप प्लीज कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? सर वो जो आप ओआईसी हैं इस केस में, उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश के हिसाब से हमारा था कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो क्या किया जा सकता है मैडम?
और सर जो आपने मध्य प्रदेश शासन क्यों नहीं लिखा था रूल में? लिख देते मध्य प्रदेश शासन। हाँ, चलिए सर। इसको डिसाइड कर देते हैं, फिर इसको आप लिखिएगा। श्री आशीष श्रोती, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। पिटिशनर्स कंटेंशन इज दैट नहीं, पर वो he had applied for the post of This is Ayurved Chikitsa Adhikari. Ayurved Chikitsa Adhikari, which was advertised by the Madhya Pradesh Public Service Commission. if I may, Marut, if I'm not trying to interrupt, but further जब इनका कंसिडरेशन हुआ तो इनका जो प्रपत्र थे 1 and 2, तो सेकंड प्रपत्र में भी नहीं था ये। मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी लगाए हमने, हाँ लगाए, पेज 15 पर। बताइएगा प्लीज। पेज 15 ऑफ आवर रिप्लाई, सबसे पहले ही नाम 564 पर है, वीरेंद्र कुमार अग्रवाल। हाँ हाँ अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र 1 एवं 2 मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा अभ्यर्थी द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बता दी, वो तो आपने बता दिया। इसमें बार- कहाँ रिक्वायरमेंट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो अधिकारी ये को- एडवर्टाइजमेंट है इसके साथ जो फॉर्मेट लगा हुआ है, बताइएगा फॉर्मेट कहाँ लिखा है? एडवर्टीजमेंट के साथ फॉर्मेट इज एनेक्चर Format is at page 16, पेज 16। 16 and 17. 16। हाँ, क्या लिखा है इसमें? 16 में नीचे पदनाम जिला आयुष अधिकारी ऑब्लिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, लेकिन आपने तो प्रिज्यूम कर लिया जो उनका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो देगी। दी मैं इतना देखिए, दूसरा पे प्रपत्र 2 भी तो पढ़ चिकित्सा का नाम पति इतना प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग ऑब्लिक डैश डैश विभाग में संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में डैश डैश क्यों कर दिया था इसको? तो लिखते मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत। इसमें अब आपको ड्राफ्टिंग थोड़ा ना सिखाएंगे हम नहीं, नहीं। लेजिस्लेशन की, हाउ लेजिस्लेशंस आर टू बी ड्राफ्टेड, रूल्स आर टू बी ड्राफ्टेड। इसके लिए आपका एक विशेष विभाग है लॉ डिपार्टमेंट में। वी में सीक फर्दर इंस्ट्रक्शन की ये रूल मेकिंग के पहले व्हाट क्या करें हम? रूल मेकिंग थोड़ा ना बदल देंगे। आई हैव टू रीड द रूल, यू कैन चेंज इट फॉर द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। रिलेवेंट नोट शीट में हम वी कैन गैदर दैट। यू कैन नोट शीट से आप रूल बदल देंगे? नहीं, वो तो अब जो रूल है वो, ये तो वकील साहब पहली बार सुन रहे हैं हम, नोट शीट से नियम बदल बट टू देंगे। इन्फर व्हाट आप तो सुपर लेजिस्लेशन हो जाएंगे। नोट शीट से बदल सकते हैं क्या नियम? नहीं, बट टू इन्फर व्हाट वाज दी, तो इन्फर तो ये इससे आ रहा है क्लियर। चलिए हम लिखा रहे हैं, आप इसको चुनौती दीजिएगा, लिखिएगा। Wide order annexure P1 by the Madhya Pradesh Public Service Commission, full stop. In the advertisement itself, there is a provision of grant of bonus marks and it is mentioned as under. ये कॉपी कर लेंगे आप? मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपके पास हाईलाइट जो मैं करता हूँ वहां आता है, नहीं आता है? अच्छा, ये इसमें 6 का 2 है, संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधान। था जो हिंदी में है। अच्छा, ठीक है। And full stop. It is submitted that petitioner was not granted bonus marks and therefore he has failed to secure a place in the merit list. Next paragraph. Counsel for the Public Service Commission in his turn had submitted that bonus marks are granted by the state government and they only prepare a merit list on the basis of the marks secured by a candidate in the competitive examination and submit it to the concerned government for addition of bonus marks and issuance of appointment orders as per the merit. यही है? We receive the bonus marks from the public. अच्छा ऐसा, सॉरी क्या लिखा? Forward to the state government and state government forwards the bonus marks which are added while preparing the final merit list. Next paragraph. It submitted that since petitioner's name was not received, therefore MPPSC cannot be held responsible for said non-forwarding of bonus marks in the hands of the state government. Next paragraph. The state government, in terms of the order dated 29/2/2024, has filed reply on behalf of respondent number 2, supported with affidavit of one Dr. Vandana Borana, wife of Shri Vikas Borana, Assistant Director, Directorate of Ayush,
Satpura Bhavan Bhopal, who is also present in person to assist the government advocate, to say that the bonus marks are admissible only to those persons who were appointed under the state government of Madhya Pradesh, full stop. To support this contention, Shri Darshan Soni has drawn attention of this court to the format which is enclosed along with the advertisement, Annexure P1, and it is submitted that format clearly provides for issuance of a certificate by the district Ayush officer / chief medical and health officer, and since petitioner's certificate is not in the aforesaid format, therefore his case was considered as is evident from annexure R2, ये कार्रवाई विवरण R2 का हिस्सा जी, है, आपको कुछ पेज पढ़ रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, पेज 15 था, ये कार्रवाई विवरण था। ये R2 का ही हिस्सा है। जी, R2 का ही। R2 to submit that since certificate was not in the desired format, therefore no marks have been given to the petitioner, and that petitioner had worked in the Labour and Employment Ministry, Government of India, experience certificate of which being not in the prescribed format is not admissible. Therefore, bonus marks have not been awarded in favor of the petitioner. Next para. After hearing learned counsel for the petitioner and going through the record, there are two things. One, rule is to be examined in its correct form. Rule as has been extracted above. ये यहाँ से लीजिएगा, इनके पेज नंबर 10 रिटर्न से लीजिएगा, आपको सुविधा हो जाएगी। मैं निशान लगा देता हूँ। वही की वही चीज है, वही की वही चीज है ना ये। above, ऊपर जो वहां पर एडवर्टीजमेंट clearly makes a mention that it can be, it uses slashes, and after last slash says from any government entity if a person was appointed on contract basis as Ayush doctor, full stop. Thus, interpretation given by Shri Darshan Soni, learned government advocate, assisted by Dr. Vandana Borana, assistant director, to submit that since petitioner had not worked in the state of Madhya Pradesh in a dispensary /PSC /CSC of the government of Madhya Pradesh, is not entitled to bonus marks, is not made out. Full stop. Rule is to be, next para, rule is to be seen as it is. Full stop. Rule 11 within bracket Roman 9 of Madhya Pradesh Ayush Vibhag within bracket Rajpatrit bracket close सेवा भर्ती नियम 2013 were amended by Gazette notification dated 10th December 2021. Full stop. The amended Rule 11 within bracket 9 provides for grant of bonus marks to contract employees. Full stop. Next. A plain reading of the aforesaid rule leaves no iota of doubt that Ayush doctors working on contract basis in any government entity were also entitled to get bonus marks, and thus this court holds that the petitioner has been wrongfully denied grant of bonus marks. Full stop. Accordingly, petition is allowed. Decision of the respondents to not grant bonus marks is hereby set aside. Next, it is directed that his bonus marks as per the scheme of the rules be computed, forwarded to the PSC for preparation of a fresh merit list
full stop. This order will not be an order, will not be treated an order in personam, but will be an order in rem and will be applicable to all such persons who have produced certificates of contract employment in any government entity, be that of Madhya Pradesh or any other state government or the central government. With the aforesaid, petition is allowed and disposed of. तो ये किताब पढ़े My lord has called the original DPC proceedings, my lord. आ गई Please. जी जी। आपने कहा कि इन्होंने बेंचमार्क नहीं हासिल किया था, यही कहा था ना कल? वे एसीआर कल एसीआर आए थे। हाँ हाँ, पुराने। आज वो डीपीसी प्रोसीडिंग दिखाइएगा। उसमें अभिजीत को दस्तूरदार का साइटेशन वाला 149 पेज पे साइटेशन पेज पे पढ़िएगा जरा इसको। आपने पैरामीटर रखा था 3 अंक, अच्छी बहुत अच्छी श्रेणी के लिए, अच्छी बहुत अच्छा इसका का ठीक है ना? इज इट राइट? नहीं, का प्लस होता है। का प्लस उत्कर्ष होता है, उसके लिए 4 अंक हैं। अरे वकील साहब, ये 4 के लिए तो का प्लस होता है। हाँ तो हम तो 3 बोल रहे हैं, 3 तो का ही होता है ना? जी सर। ठीक है। और अच्छा श्रेणी खा के लिए 2, ग के लिए 1 और घ के लिए 0। ठीक है। आपने खुद लिखा है अंगद प्रसाद नामदेव। ठीक है। डेट ऑफ डीपीसी है आपकी 2017।
आपने तो इसमें फिट दिखाया है, डीपीसी ने फिट दिखाया है। उसके बाद ही साहब ये 11 जून 2021 को ऑर्डर जो पास किया। नहीं, कैसे कर दिया फिट, कैसे दिखा दिया आपने डीपीसी प्रोसीडिंग्स में? 3 कहाँ हैं इनके, 2 कहाँ हैं? 9 और 4 13, और यही बेंचमार्क था। और आपने इनको 1 4 17 से पात्र बताया है। पहले में अनफिट थे। हाँ। पहले डीपीसी में अनफिट पाए गए साहब। कब, कहाँ है वो अनफिट वाला? तीनों उसी में लगे जी। कौन से तीनों हैं बताइएगा जरा। आपने 20/7/17 को किए ना डीपीसी? 20/7/17 को किए ना मैडम? फिर 20/7/17 को आपने इनके 2 ख और 3 क दिखाए और इनको 1 4 द्वितीय समयमान स्वीकृत करने का दिनांक। इज देयर एनी डिस्प्यूट मिस्टर शर्मा अबाउट द डेट? 1 4 17 से इन्होंने पाया था आपको फिट। उसके बाद 1 4 16 से भी पा लिया फिट। 1 4 16 से भी दे दिया? हाँ, ऐसा इनका आप कहना कब से मांग रहे हैं? सर? हम 15 से मांग रहे हैं। 6 12 16 से दे दिया था इनको। 6 12 16 से दे दिया है। पहले 6 12 17 किया था, 6 12 1 4 17 किया था। 1 हाँ, फिर 16 12 16 कर 6 12 16 कर दिया 6 12 16 जी। उसके पूर्व तो आपकी खा है आपके नंबर। वो अगर कम्युनिकेट नहीं होगी तो उसके बेसिस पे रोक नहीं सकते मुझको। ये कब कम्युनिकेट हुई है एसीआर खा वाली? लगातार नहीं हुई सर। है तो क्या अनकम्युनिकेटेड एसीआर पे आप कर सकते हैं क्या? मैडम आप भी तो शासकीय कर्मचारी हैं कि बाहर से आई हैं कहीं से? आपके साथ भी ऐसा हो सकता है ना। आज आप शासन के पक्ष में हैं, कल को हो सकता है शासन को 5 मिनट नहीं लगता पाला बदलने में। शासकीय वकील साहब 2 मिनट में इधर रहते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। कम्युनिकेट नहीं हुई साहब, वो तो वेरी है। हाँ, फिर तो कैन somebody be superseded on the basis of uncommunicated ACRs? देखिएगा, petitioner's case is that petitioner who was working as veterinary assistant surgeon was due for grant of second time scale of pay with effect from क्या डेट है? 6/12/2015। 6/12/2015 They are seeking my lord. 6/12/2015, but Given to petitioner was 6/12/2016. given this benefit with effect from 6/12/2016 on Annexure R2, R1 is there. Annexure R1 on the basis of the ACR gradings, full stop. Next one. Shri, it is submitted that petitioner could not have been superseded in the matter of grant of second time scale of pay on the basis of uncommunicated uncommunicated ACRs. Next para. On request of this court, state government has produced DPC proceedings today, which are available, and the officer concerned, आपका शुभ नाम बताइए? नोडल ऑफिसर डॉक्टर पंपा दत्त। नोडल ऑफिसर डॉक्टर Pompa PO MPA Pompa Dutt is present in person and has produced the original DPC proceedings. Full stop. Perusal of the original DPC proceedings reveal that petitioner was given B grading for the year 2010, 11, 12, 13 and 14. Thereafter, for the year 15, 16 and 17, he was given A grading. Full stop. Dr. Pompa Dutt admits that these ACRs for the year 2010, 11, 12, 13, 14 were never communicated to the petitioner. Full stop. Therefore, judgment लाए हैं? सर अभिजीत घोष दास। हाँ जी दे दीजिए। पैरा 8 देख लीजिए जी। Therefore, in the light of the law laid down by Supreme Court in Abhijit Ghosh Dastidar versus Union of India and others, 2009 का 16 SCC 146, wherein Supreme Court has held that
if the entry of good was not communicated to the applicant when the benchmark required for being considered for promotion was fixed as very good, then entry of good should have been communicated to him as he was having very good in the previous year. Full stop. In those circumstances, in our opinion, non-communication of entries in the annual confidential report of a public servant, whether he is in civil, judicial, police or any other service within bracket other than the armed forces, bracket close, it has civil consequences because it may affect his chances of promotion or getting other benefits, full stop. Hence, such non-communication would be arbitrary, and as such violative of Article 14 of the Constitution, full stop. The same view has been reiterated in the above decision within bracket Devdutt वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का 8 SCC 725 para 41 relied on by the appellant, full stop. Therefore, the entries within inverted commas good, inverted commas close, if at all granted to the appellant, the same should not have been taken into consideration for being considered for promotion to the higher grade, full stop. The respondent has no case that the appellant had ever been informed of the nature of the grading given to him. Next para. Taking these facts into consideration, petitioner is entitled to grant of second time scale of pay from the date when the officer who was immediately junior in service to the appellant was given such time scale of pay, that is with effect from 6/12/2015. ये डेट सही है ना, 6/12/15. Accordingly, petition is allowed and disposed of. Original record is returned back to the officer in charge. I don't mention with all consequential benefits. With all consequential benefits. नंबर 1 उसमें चला दीजिएगा, 1 बजे से मेंशन केसेस लेंगे या कितने DB कितने देर चलेगी? 5 केस हैं, कनेक्टेड है ना? तो 1 बजे से शुरू करिए, फिर जो जितना 1 बजे से निपटेंगे उतने निपटाएंगे, फिर जो बचेंगे उनको जो वहां करेंगे लंच के बाद। जी बताइए प्लीज। सर मैं सीओ जनपद जय तहरी। हाँ बताइए। जी जी सर, हमसे भूल हुई है सर। अरे आपसे भूल कैसे हो सकती है सर? आप तो जनपद है सर। उसमें हम महाधिवक्ता कार्यालय लिखना। महाधिवक्ता तो बहुत छोटे होते हैं, आप तो डायरेक्ट हाई कोर्ट को लिखते हैं सर। वो लिप की त्रुटि है सर। लिप की त्रुटि है? लिप की त्रुटि किसे कहते हैं? तो पहले थोड़ा समझाइए ना, लिप की त्रुटि किसे कहते हैं? लिप की त्रुटि किसे कहते हैं? आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं भाई, डायरेक्ट हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखते हैं। गलती हो गई सर, माफी। आपको बताना पड़ेगा इनको गलती हो गई है। They are also saying morning. They are also saying मतलब ये तो अकेले सिंगुलर आदमी है, they are कैसे हो जाएंगे? He is saying that morning के हिसाब से मैं प्रार्थना। आप दोनों कह रहे हो तो फिर they are हो जाएंगे। We are। अच्छा, तो उनका माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिखने का वो नहीं था। मैं चलिए उसको 2 मिनट। उच्च न्यायालय लिखना चाह रहा था साहब। तो फिर तो आप जब इतना ही नहीं समझ पाते कि महाधिवक्ता कार्यालय और उच्च न्यायालय में क्या फर्क है, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? शासन को लिख दें कि आपको हटा दिया जाए, आप कार्य संपादित करने के लिए योग्य नहीं है। माफी चाहता हूँ सर, कोई गलती नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब इसका निराकरण बताइए। 7G में जो लिखा हुआ है आपने कैसे हटा दिया इनको? अब मुद्दे पर आइए, पिटीशन पर। सर हमारी देवहरा और
वो तो हमें पूरे फैक्ट्स मालूम है। आपकी 2 ग्राम पंचायत जिसमें कि ये ग्राम रोजगार सहायक के रूप में काम करते थे, उनका संविलियन नगर पंचायत में हुआ, नगर पंचायत ने उनको लेने से मना कर दिया, उसके पश्चात आपने इनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी, इन्होंने जाने से मना कर दिया। ना पढ़िएगा रूल 7G, पढ़िएगा सेक्शन 7G, लीजिएगा म्युनिसिपैलिटीज एक्ट दीजिएगा, वो रखा है वहां तीसरे नंबर की किताब पीछे। टाउन एरिया कमेटी और पंचायत as the case may be immediately before the specified date shall be officers and servants of council under this act and shall until other provision are made in accordance with the आप लोग खुद तो कानून पढ़ते नहीं, अब आपको हाईकोर्ट लगता है कानून पढ़ाने के लिए। श्रीमान जी वहाँ से जब ये रिलीव होके आए हाँ, अगर परिषद से, तो हमने इनकी पोस्ट नहीं, कैसे कर देंगे आप? He will be deemed to be an employee of नगर परिषद, 7G ये कह रहा है। How can they be relieved by the नगर परिषद and how can you post them somewhere else? सर ये आप हिंदी में किताब बुला लीजिए, अगर अंग्रेजी में समझ में नहीं आती, हिंदी की है आपके पास में किताब? म्युनिसिपैलिटीज एक्ट हिंदी में है क्या? छपवा कर दीजिए इन लोगों को हिंदी में किताब। पढ़िएगा 7G, पढ़िएगा सर, पढ़िए ना। all officers and servants in the employ of the town area committee or panchayat as the case may be immediately before the specified date shall be officers and servant of the council under this act and shall until other provisions are made in accordance with the provisions of this act receive salary and allowances and be subject to condition of service to which they were entitled or subjected immediately before such date. जी आगे Provided that it shall be competent to the council of discontinue the services of any officer or servant who is its opinion is not necessary or suitable to the requirement of the municipal services after giving such officer or servant notice as is required to be given by the term of his employment. फिर आगे दूसरा Provided further that previous sanction of the state government shall be obtained for discontinue the services. बस यहीं रुक जाइएगा। अब आप ये बताइएगा कब नोटिस दिया आपकी नगर पंचायत ने और कब जो है स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति ली इनको हटाने के लिए? इतना सा बिंदु है सर, ये सीएमओ का मैटर है सर, हमारी ग्राम पंचायत सर। नहीं तो आप इतना तो देख, हम सीएमओ से आपको बुलवा लेंगे आपके साथ में सर। मुद्दे की बात यह है सीएमओ से पूछ लेते हैं उन्होंने कब अनुमति ली, ये उनसे पूछ लेते हैं। और आपने ये प्रावधान बिगड़ देके पोस्टिंग कर दी, किस प्रावधान में पोस्टिंग की? अच्छा आप ये तो बता दीजिए किस प्रावधान में पोस्टिंग की आपने? मनरेगा का सर्कुलर है सर, रोजगार सहायकों की नियुक्ति के लिए। क्या है उसमें, क्या लिखा है? एनेक्शर क्या है? जवाब के साथ एनेक्शर क्या लगाया आपने? सर्कुलर, हाईकोर्ट की चिट्ठी तो लगाई आपने, सर्कुलर एनेक्शर R1। जी सर। क्या लिखा उसमें, पढ़िएगा। नगरीय निकाय में विलय होने वाली ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहे ग्राम पंचायत सहायकों की सेवाओं के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नगरीय निकाय में विलय की गई ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहे ग्राम रोजगार सहायकों की सेवाओं के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। नगरीय निकायों में विलय की गई ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहे ग्राम रोजगार सहायकों को जिस जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत का नगरीय निकाय में विलय हुआ है उसी जनपद पंचायत अंतर्गत अन्य ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थ किया जावे। उपरोक्तानुसार पदस्थ किए जाने वाले ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के अनुबंध, सेवा आदि की अन्य शर्तें इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप ही होंगी। नगरीय निकायों के विलय की अगर 1 सेकंड 2 मिनट रुक जाइएगा। नगरीय निकायों में विलय की गई ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहे ग्राम रोजगार सहायक को जिस जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत का नगरीय निकाय में विलय हुआ है उसी जनपद पंचायत अंतर्गत अन्य ग्राम पंचायत में, ठीक है? तो क्या यह जो है सुपरसीड वही किया? नहीं, ठीक है। अरे भाई आपकी बात, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन को सुपरसीड कर देगा म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के? आपने बहुत ठीक किया, लेकिन आप तो बरी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये तो समझना पड़ेगा ना कि
कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सुपरसीड कर देगा स्टैट्यूटरी प्रोविजन को? नहीं, वो तो नहीं कर सकता। पर तो फिर कैसे जारी कर देते हैं आप लोग? सीएमओ ने अगर कोई पत्र दिया होगा, राइट टू हियरिंग वगैरह, और तो हमें क्या मालूम है? सीएमओ को बुलवा लेते हैं। सर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट और देख लीजिए। हाँ बताए ना। एनेक्चर P7 में मैं काइंडली बी सीन P7, yes your lordship, it is at page number 40 of the petition. Yes. My lord, may kindly come to the page number 41, जी point number 7. हाँ पढ़िए। This is the instruction issued or order issued by the principal secretary. पढ़िएगा। प्रकरणाधीन अपवर्जित पंचायतों में वर्तमान में पदस्थ सचिवों, दिस इज योर लॉर्डशिप, ऑर्डर डेटेड 28/11/2020। जी। वो 2013 का ये देख रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं। ये 2020 का क्लियर इंस्ट्रक्शन है टू ऑल द कलेक्टर्स पढ़िएगा कि वर्तमान में पदस्थ सचिवों ऑब्लिक ग्राम सचिवों ग्राम रोजगार सहायकों का स्थानांतरण एवं तक अन्य ग्राम पंचायतों में नहीं किया जाए जब तक कि ग्राम पंचायतों से नगरीय निकायों का आस्तीय और संपत्ति अमलों का हस्तांतरण कार्य संपन्न न हो जाए। इट्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू ऑल द कलेक्टर्स। ये सो एंड सो एंड स्टिल लिखिएगा, लेट सीएमओ ऑफ नगर पंचायत, पार्टी बनाया आपने? ये बनाया, एक मिनट देख लेता हूँ। नगर परिषद बरगवा within bracket AMLI remain personally present to answer the queries of this court that इन्होंने तो जवाब नहीं फाइल किया है ना? इन्होंने ही तो जवाब फाइल नहीं, रिस्पॉन्ड नंबर 4 ने थोड़ा ना किया है, रिस्पॉन्ड नंबर 3 ने किया है। जवाब रिस्पॉन्ड नंबर 3 का है ना? That why he has not filed a reply to the petition and how adheres the provisions contained in annex section 7 within bracket G. He could have repatriated the services of the petitioners to the CEO Janpad Panchayat for adjustment against the posts of Gram Rojgar Sahayak in other village panchayats. Full stop. In the meanwhile, respondent number 1, 2 and 3 will also file reply that can executive instruction contained in annexure R1 dated 13/5/2015 issued by Madhya Pradesh Rozgar Guarantee Parishad supersede the statutory provisions contained in the Madhya Pradesh Municipalities Act 1961. Full stop. Let affidavit of the principal secretary of the department be filed. Principal secretary party है ना इसमें? जी। Principal secretary of the department be filed in this behalf. That how a government instruction can supersede the statutory provisions and within 7 days in the, full stop, list this case on 21 March 2024 when the CMO of respondent number 4 shall remain personally present. Affidavit be filed on or before 18 March 2024. My lord, what about the salary of these poor petitioners? In the meanwhile, respondent number 4 shall continue to pay the salary of the petitioners and shall bring on record the salary payment voucher as they could not have been removed or repatriated without following the provisions contained in section 7(1)(g) of the Municipalities Act. चलिए, I pray for certified. CC as per rule. Stand. एक बार और क्षमा चाहता हूँ सर। नहीं ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र मणि मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, जाइए, आपके पास मणि है, आप अपनी मणि चमकाइए, जाइए। थैंक यू। My lord, I am praying time for call diary. लिखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बताइए। सर अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह for the petitioner. Applicant Shri Manas Mani Verma prays for time to call for the case diary. Let case diary be called for. List next week. Oh, please. Number 8. Lordship, it's a repeat bail application. My earlier bail application has been rejected by the order dated 29/9/23, that is annexure A3, on the ground that other co-accused persons have not surrendered, Lordship. They are absconding. अब हो गए सरेंडर?
No, Lordship. Till date, there are total 4 accused person. One has died, and one was granted interim protection in WP number 15090/2022. But that has been withdrawn on 29th of February. And one is absconding, Lordship. And I am in. WP कहाँ है वो? WP has interim order was granted on 19th of July 2022. That is annexure A4. A4. But on 29th of February, that has been dismissed as withdrawn. ठीक है, कोऑर्डिनेट बेंच ने दिया था, फिर हमारे पास क्यों ले आए इसको? डिवीजन बेंच ने भी बोला साहब। क्या? काइंडली सी द लास्ट ऑर्डर शीट में लोग। हाँ। केवल डिवीजन बेंच है इसमें। 29/2/2024 पीरियड ऑर्डर्स पास। ठीक है, लेकिन हम तो ये समझना चाह रहे हैं जी कि जब हमने ये बेल डिसाइड करी थी, अच्छा 29 सितंबर 23 को की थी हमने पहली एप्लीकेशन। ओके, चलिए हाँ, फिर अब क्या हुआ? Now, Lordship, charges have been framed. This is the change circumstances. And 420 has vanished. Only 409 is there against me, Lordship. And I am in custody, Lordship, since 6th of July 2023. And only because other persons are absconding or they are not arrested, that cannot be a ground for not considering my bail. 409 बचा है बस। जी सर, ये मैंने वो भी लगाया है सर, annexure A5. A5 is the order sheet whereby charges have been framed against me. देखिएगा, this is second bail application on behalf of the applicant Gokar Singh. First application was rejected as investigation was not complete. Now it is informed that charge sheet has been filed and charges have been framed only under section 409. No charges have been framed under section 420 IPC. Applicant is in custody since 6th of July. 6th of July 2023. Since charges have been framed and whole case of the prosecution is based on documentary evidence, comma, there is no chances of petitioner absconding from the trial as he is. आपके सरपंच थे सर? As he is a former सरपंच कि अभी भी सरपंच हैं? अभी भी है सर। अभी भी सरपंच हैं आप? He is a सरपंच of the ग्राम पंचायत. In view of such facts, looking to the period of such facts, comma, without commenting on merits, 50,000 to sure, no criminal record, 50,000 to sureties. चलिए. Number 9. Kindly see last order sheet dated 27/2/24 में स्टेटस रिपोर्ट भी प्रॉब्लम है। आ गई क्या स्टेटस रिपोर्ट? देखिएगा। साक्ष्य समाप्त हो गई, अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो गई। अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो गई। 313 में अभियुक्त के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गए। In that case, there's not much which would. Yes, that's what I'm saying. Okay. In view of the progress report dated 5/3/2024, furnished by special judge. Could I just interrupt for a moment? Just one factor of this case, although the result of this application would be the same, but I would just like to bring one thing before my lords. Probably 2 lines could be penned in that regard, Manoj. What had happened in this case, Manoj, the only document for age was the birth certificate, which was created after the. No, the fact is that that witness will be trying to influence the outcome of the trial. No, not let अभी 313 के बयान होगा। I'm not saying that. My only submission is I have been in custody for 2.5 years because one witness's chief was deferred for 2 years. कोई बात नहीं। Prosecution ने 2 साल का समय लगाया उनको क्रॉस करने। Case was क्या लिखा? As per the progress report, prosecution evidence is complete. Case was fixed for
defense evidence on 28/2/2024 when accused had not produced any defense evidence and had sought time. He was given time and case was fixed on 1/3/24. Full stop. On 1/3/24, again accused had sought time when case was listed for defense evidence on 6/3/2024. Taking these facts, that matter has now come to an end and only judgment is to be passed by the trial court after recording the defense evidence, Shri Vishal Vincent Rajendra Daniel prays for withdrawal of this application. Highly obliged. Clear number 10. Vivek Kumar Tyagi. For filing an objection. Recently filed a suspension. ठीक, आपका शुभ नाम बताइए. धीरज अग्रवाल. Shri Dheeraj Agarwal for the petitioner. Shri Nitin Gupta, learned Deputy Government Advocate for State, prays for and is granted 4 weeks time to file the objections to the suspension application. List after 4 weeks in the week commencing 8 April 2024. Clear number 11. Satya Prakash Mishra. Lordship, my senior is out of station. I am going for next week. आपका शुभ नाम क्या है? Yogesh Maravi. Shri Yogesh Maravi submits that arguing counsel Satya Prakash Mishra is out of station and prays for time. On his request, case is adjourned. Clear number 12. Shri Udayan Tiwari. जी. Followed, sir, case follow this petitioner. He was granted compassionate appointment जी. by order annexure P4 जी. on page 23. जी. Page 23. जी. He was appointed on the post of तकनीकी सहायक. Yes. आप देखेंगे सर ये लास्ट इसके पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन जी. ये अनुकंपा नियुक्ति तकनीकी सहायक के पद वेतनमान 30-50 45-90 में निम्न शर्तों के अधीन वेतन द्वारा की जाती है. नाउ सब्सिक्वेंटली बाय द ऑर्डर एनेक्चर P5 जी. after 1 year he was regularized जी. and this order was passed on 1/2/2008 with effect from on completion of 1 year. जी. And this order reads as संस्थान के आदेश क्रमांक इतना द्वारा तकनीकी सहायक के पद पर श्री मकान सोयंसो को अनुकंपा नियुक्ति की गई थी. नियुक्ति की शर्त क्रमांक 2 के तहत 1 वर्ष की परिवीक्षाधीन सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत वेतन नियमन किए जाने में श्री वर्मा की परिवीक्षा अवधि दिनांक इतने को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सेवा भर्ती नियम 2003 के नियम 200 के अंतर्गत TE3 वेतनमान इतने इतने में इतने से वेतन नियमन किया जाता है. नाउ दिस ऑर्डर has been cancelled by order annexure P1 जी. 7/8/2012. क्या कहा उन्होंने? इसमें ये कहते हैं, ये थोड़ा पेज 19 देखें सर काइंडली. जी. कार्यालयीन आदेश दिनांक इतना जिसका संबंध श्री सोयंसो के नियमन से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है. श्री वर्मा की नियुक्ति समय 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि. आपको गलत पे स्केल दे दिया था उन्होंने? नहीं, गलत, ये इनका कहना है कि गलत दे दिया. हाँ. अब आप देखें सर इसमें he was a post graduate. Now ये annexure P7 देखें सर एक सेकंड. P7 राज्य वन अनुसंधान. This is the letter dated 29/8/2005. It reads that संस्थान में तकनीकी कर्मचारियों के निम्नानुसार 37 स्वीकृत पद हैं जिसमें वर्तमान में 25 पद भरे हुए हैं. नाउ तकनीकी सहायक के स्वीकृत पद 16, कर्मचारी 13, 3 पद खाली थे. इसमें उन्होंने लिखा है क्वालिफिकेशन में श्रेणी में कंप्यूटर विज्ञान में उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातक होता है. अब इसके नीचे सर आप देखेंगे संस्था में सेवा नियम 2003 के अंतर्गत तकनीकी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित वेतनमान स्वीकृत किए गए हैं. नाउ T1 3050 जिसमें मेरी नियुक्ति हुई थी. इसके बाद T3 जो मुझको दिया है इन्होंने 5500 का. वो कैसे दे दिया, बस उतना सा बता दीजिए. ये हाँ, वो उसी पर मैं आ रहा हूँ सर. अगला पेज देखें सर.
तकनीकी कर्मी पदों सीधी भर्ती टी के स्तर पर होगी। अगले वेतनमानों में पदोन्नति हेतु न्यूनतम समय सीमा 5 वर्ष होगी। भारत सरकार राज्य शासन के अधीन अन्य संस्थानों में तकनीकी सहायक का पद अपेक्षाकृत काफी निचले स्तर का है तथा इसके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कम है। उदाहरण के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अंतर्गत तकनीकी सहायक के पद के लिए वो सब ठीक है जी, सिर्फ इतना बताइएगा कि नियुक्ति के 1 वर्ष के अंदर परिवीक्षा पूर्ण करने का आदेश पारित करते हुए E1 से E3 में कैसे आपका उन्नयन हो गया, इतना बता दीजिए। कहाँ प्रावधान है ये से E3? अनेक्षर सर इनका रिप्लाई देखेंगे। हाँ, इनके रिप्लाई में नहीं आप अरे रिप्लाई छोड़ दीजिए। नहीं रिप्लाई में मैं रूल्स बता रहा हूँ। जी जी जी। R3 है, R3 पढ़िएगा पेज 13 जी जी। पेज 13 में दीज आर दी रूल्स जी 2003 जी। और इसका सर पेज 14 में आप देखेंगे जी। पेज 14 में 100 हाँ जी 100 में सर 2 देखेंगे जी। वर्तमान में कार्यरत जिन तकनीकी कर्मियों की संस्थान में भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर रखी गई थी, उन्हें T3 वेतनमान इतने इतने में समाहित किया जाएगा। नहीं ठीक है, 1 सेकंड के, लेकिन उसके ऊपर पेज 12 भी देखिएगा। हाँ सर, पेज 12 में यह मालूम पड़ता है जी कि परिशिष्ट 3 है ये तकनीकी कर्मी पद। हाँ। T1 सीधी भर्ती का पद है। हाँ। T2 T3 ये पदोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले पद है। बिल्कुल। तो आपको पदोन्नति वाले पद में डायरेक्ट नियुक्ति कैसे मिल जाएगी? ये इन्होंने सर, मैं वही आपको बता रहा था, सी में देखे ना सर, इन्होंने सी में जब ये रूल्स आए थे तो इन्होंने इन रूल्स में ये कहा कि वर्तमान में कार्यरत जिन तकनीकी कर्मियों की संस्थान में भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर रखी गई थी। We'll ask them that can they fill a promotion post through direct recruitment? They did not fill up that post. I have not been appointed as a technical T3 नहीं अपॉइंट किया। नहीं T3 का वेतनमान कैसे दे दिया, यही तो इशू है। इतना हम समझ गए जी। T3 का वेतनमान कैसे मिल जाएगा? उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों की शैक्षणिक योग्यता हमने स्नातकोत्तर रखी है उनको T3 का पे स्केल। Unless you are able to demonstrate that there can be a direct recruitment on compassionate basis on a T3 post, you will not be getting anything. You will have to demonstrate, yes, there were options available. T1, T2, T3, all the 3 posts were to be filled through direct recruitment, and I, being an eligible candidate for holding a T3 post, was given direct recruitment to the post of T3. Yes, you have a case. But this provision is made in the rules itself. ठीक है। I'm not going outside the rules. ठीक। This provision C2 102 ये रूल्स में है। पेज 14 पर ना? हाँ 14 पर। जी। और रूल्स में ये कहते हैं कि जहां हमने स्नातकोत्तर रखा है वहां इनको ये भी स्केल देना। इट्स नॉट आउटसाइड द रिक्रूटमेंट रूल्स। जी ठीक। फिर क्या किया इन्होंने? ना इसके अनुसार इन्होंने जब हमको रेगुलर किया तो उन्होंने हमारी, क्योंकि स्नातक आई वाज स्नातकोत्तर, तो उन्होंने हमको पे स्केल दे दिया। स्नातकोत्तर की डिग्री कहाँ है आपकी? ये स्नातकोत्तर की डिग्री मेरी सर, that I have filed along with रिजोइंडर के साथ मैंने फाइल किया सर। जी। और ये सिर्फ मुझको नहीं दिया, इन्होंने मेरे जैसे और लोगों को भी दिया। ठीक है, दिया होगा। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट। जी। आई एम सिंपली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। जी ठीक है। मास्टर्स डिग्री आपकी? जी। लाइफ साइंसेज में? जी लाइफ साइंस। जी। और आप सर अगर काइंडली सी एन एप्लीकेशन आई हैड फाइल्ड फॉर टेकिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड। जी जी। उसके साथ मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं सर। जी। एनेक्चर P11 इफ माय लॉर्ड्स में हैव अ लुक। इलेक्शन P11। जी। It was a case of another employee. जी जी।
जी He was granted the benefit of this pay scale by order annexure P12. जी जी ये कब से हुआ है ये नियम लागू? सर ये नियम 2003 में बने हैं आपकी नियुक्ति और 2006 हमारी नियुक्ति 2006 की है सर। जी जी ठीक। And these rules have been approved by the state government in 2005. जी 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 ठीक। So my submission is this, my lord, that once they had taken a decision जी and this benefit was extended, there can't be two, my lord, separate. ठीक yes. Para 4 of my reply, kindly read. Para 4 of your return? Sir. जी please. The later on the mistake was, a mistake came to be noticed and the order passed, order annexure P1 dated 7/8/2012 came to be passed, which set aside the order dated 1/2/2008, that is annexure P5, and placed the petitioner correctly in the pay scale of 3,050.4590 with effect from 16/6/2006. The same being the initial date of appointment. However, the order annexure P1 came to be passed by the Deputy Director SFRI, who was not the competent authority to pass such an order, because in the hierarchy to post of technical assistant, the appointing authority happens to be the director of SFRI. Therefore, an order dated 21/11/2012 came to be passed by the competent authority, that is director SFRI, which is on this petition is filed by the petitioner being aggrieved of order annexure P1 passed by the director of State Forest Research Institute, refixing the pay of the petitioner in the pay scale of rupees 5200-1900, 5200 plus 1900, full stop. Petitioner's next para. Petitioner's case is that petitioner had made an application for grant of compassionate appointment and petitioner was granted compassionate appointment on the post of technical assistant in the pay scale of rupees 3050-3950-80-4590 wide order dated 16/6/2006 for a period on probation for a period of 1 year. Next paragraph. Petitioner's case is that on completion of probation, by order dated 1/2/2008, passed by the director, petitioner was given pay scale of 5500-175-9000 with effect from 22/8/2007. Full stop. This pay scale has been tempered with by the respondents by issuing order annexure P1. Next para. It is submitted that petitioner has filed annexure P7, which is the document showing change of the, which is the document which reveals that 5 pay scales are prescribed for technical assistance, namely TE1 in the pay scale of 3050-75-3950-80-4590
सर एक चीज करेक्ट करवा दूं थोड़ा सा फैक्चुअली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अनेक्चर P1 जो कैंसिल हुआ था, अनेक्चर P1 से इन्होंने पे स्केल कैंसिल कर दिए थे, फिर P1 को P2 से कैंसिल किया गया, एंड देन फ्रेश ऑर्डर वाज पास अनेक्चर P3। रिमेन रिजल्ट विल रिमेन सेम, बट P3 इज द अल्टीमेट ऑर्डर। एक्चुअली इसको करेक्ट कर लीजिएगा, P1 के बाद में लीजिएगा P1 was cancelled by the authorities by annexure P2 dated 21/11/2022 and thereafter by order dated P3 22/11/2012. Order annexure P3 was passed, restoring the position of fixation of petitioner's pay in the pay scale of rupees 3050-4590, in which he was initially appointed in place of 5500-175-9000, which was granted at the time of confirmation of the petitioner. Next paragraph. P7 जहाँ लिख रहे थे वहीं पर. It is pointed out that there is a 5-tier pay scales have been prescribed from TE1 to TE5, and drawing attention of this court to the कहाँ गया वो, रिजॉइंडर के साथ है क्या? रिजॉइंडर के साथ वो एप्लीकेशन है सर उसकी, टेकिंग डॉक्यूमेंट ऑन, and therefore that being one of the pay scales that 5500-9000 being one of the pay scales prescribed for technical assistant having qualification of postgraduate in science that could not have been disturbed as petitioner possessed that qualification. Next para. Petitioner counsel has also drawn attention of this court to annexure P7, which is P11, which is agenda number 2, in which it is mentioned that that 15 employees those technical employees who were possessing the minimum qualification of post-graduation at the time of recruitment, they have been absorbed in the pay scale of TE3. Next paragraph. Learned counsel for the petitioner also reads from the said provision to submit that since other similarly situated persons were absorbed in the pay scale of 5500-9000, therefore petitioner too was entitled to such treatment, and the order impugned order annexure P1 and P3 being arbitrary deserves to be set aside. Next para. SHRI Amit Mishra, learned penal lawyer for the state, in his turn submits that fact of the matter is that the order of fixation of pay of the petitioner on completion of probation was issued by the director of the State Forest Research Institute, Jabalpur, who was not the competent authority, and therefore that order being passed by an incompetent authority is not binding on the state. Full stop. It is further submitted that annexure R1 on which reliance is placed by the petitioner. R1 बोला था ना आपने? नहीं सर, वो रूल्स हैं सर, अनेक्चर R क्या है सर? अनेक्चर R3. Sorry, annexure R3. The rules on which petitioner is placing reliance will be of no assistance to the petitioner in as much as in Schedule 3 of the rules which were framed in the year 2003. It is clearly provided that the post of TE3 is to be filled
by promotion of TE2 level officer and TE2 by promotion of TE1 level officer, full stop. Thus, the post of TE1 is the only post which is meant for direct recruitment, and therefore, in terms of the provisions contained in the policy for grant of compassionate appointment, petitioner could have been given appointment only on a post of TE1 and no other post. Next para. At this stage, Shri Gildial, placing reliance on Annexure R3, submits that wide Annexure R3, इसकी डेट क्या है R3 की? R3 मतलब are the rules of 2003 and these rules were rules of 2000 service recruitment rules of 2003 provides that the persons who were working at the time of promulgation of the rules with minimum educational qualification of post graduation will be absorbed in the pay scale of 5500-175-9000 meant for TE3. Next para. The fact of the matter is that after hearing learned counsel for the parties and going through the record, that Sir, one point. He been appointed on compassionate ground. और लिख लिया वो तो ऊपर ही लिख लिया उन्होंने खुद ही बताया था P4 से. The issue is that a person who is appointed on compassionate ground in the year 2006 will be covered by the stipulation contained in clause 2 of paragraph C, which deals with classification of technical employees and provides that technical employees under the 2003 rules, and which reads that within inverted commas, वर्तमान में कार्यरत जिन तकनीकी कर्मियों की वर्तमान में कार्यरत जिन तकनीकी कर्मियों की संस्थान में भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कहां तक लिखा संस्थान में भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर रखी गई थी, कॉमा उन्हें TE-3 वेतनमान रुपए 5500-175-9000 में समाहित किया जाएगा. Inverted commas close, will be applicable to a person appointed in the year 2006 on compassionate basis or not? Question mark. Next para. It is evident that the rules of 2003 have carved out by way of an exception absorption of already working technical assistants. ये technical क्या है? Technical assistant. Technical assistants. E लिखा है ना? Technical assistants who were possessing the postgraduate qualification so that they may be absorbed in against the grade of TE3. Full stop. Next para. Admittedly, petitioner was appointed on compassionate basis in the year 2006 in the pay scale of rupees 3050-4700-100-5200. Next pair. Two issues will emerge: whether there is any provision for direct recruitment to TE3 pay scale, and second, that can petitioner be given benefit of the exception which was carved out in the rules as penned down above. Next para. Both the issues can be answered simultaneously, namely
there is no provision for direct recruitment to the pay band of TE3. Full stop. As per the schedule attached to the rules, that post is a promotional post. Full stop. Admittedly, compassionate appointment can be given on a post meant for direct recruitment. Full stop. Accordingly, petitioner was given appointment in the pay scale of TE1 band. Full stop. Thus, when direct recruitment is not available in the pay band of TE3, then on confirmation, grant of that pay scale is nothing but an erroneous exercise on the part of the authority which passed that order, Annexure P5. Next para. Secondly, the exception which has been pointed out by Shri Gildyal in the rules, namely in the rules of 2003, whereby para 2 of clause C has been read, it is evident that it was an exception carved out for those who were working at the time of promulgation of the rules and not for subsequent appointees. Therefore, this provision will also not help the petitioner. Full stop. Next para. Thus, taking these aspects into consideration, neither the one-time exception prescribed in the rules will help the petitioner, nor he can be appointed directly in a T3 grade, as that post is meant for promotion and not for direct recruitment. Therefore, orders Annexure P1 and P3 issued by the authorities confirming the petitioner in the pay scale of rupees 3050-80-4700-100-5200 cannot be faulted with. Petition fails and is dismissed. T is technical employee. टेक्निकल एम्प्लॉय का देना असिस्टेंट की जगह. नहीं, वो पोस्ट का नाम तो टेक्निकल असिस्टेंट ही है. टेक्निकल असिस्टेंट है. ठीक है, चलिए रहने दीजिए. सर्कुलर तकनीकी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस. वो वाला केस बुला लीजिए 12 बजे के लिए जो रखा था. अब एक एक करके बताइएगा आप. ठीक है, आपको तो सुन लिया. कहाँ है गांगुली साहब? कौन अपेयर हो रहा था? आपको तो सुन लिया. आपका तो सिंपल सा पॉइंट है कि विधानसभा में इन्होंने एडमिट किया है कि पूरा प्रोसीजर गलत है. ठीक है, आपका तो. अब ये बताइए राकेश पांडे साहब के लिए कौन अपेयर हो रहा है? There in item 1.1. हाँ बताइए. My lord, I've already gone through in detail as far as the order is concerned, my lord. जी. Now, my lord, I have certain legal submissions to make. जी. My lord, that illegal submissions भी सुनता है कोर्ट क्या? No, my lord. My submission was that the factual part I'll not repeat, my lord. Okay. My lord, this revision was, my lord, initially filed. Revision? ये revision है? No, my lord. This is a writ petition. हाँ. The order impugned, my lord, has been passed in a revision application. जी. By whom? जी. By whom? My lord, that is one of my contention. My lord, by one Shakuntala Pandey, my lord, may please have a look at page number 19. 19. जी. Annexure? My lord, annexure P4 and item 1.1. हाँ, P4 1.1, yes. जी. हाँ. She, my lord, was the initial person, my lord, who moved the revision application. My lord, my first contention is, जी. now this revision, my lord, has been, my lord, initially filed under the rules of 1995. जी. My prayer is, my lord, may please have a look at the rules of 1995, my lord. जी. Now, this, my lord, says that whenever an order, my lord, has been passed by the Zilla Panchayat, the Janpad Panchayat, my lord, the appropriate remedies lies, my lord, before the collector. My lord, prior to that, जी. come to your locus. You are my lord, Rakesh Pandey. I am, my lord, the erstwhile Adhyaksh of the Shiksha Samiti against जी. My lord, may please have a look. खिलाफ क्या order है इसमें? जी, my lord, the direction has been, my lord, issued to register an FIR against me. कहाँ है वो डायरेक्शन? जी जी. My lord, may please have a look at page number 26. जी. Paragraph 12, my lord. Page 26. जी. Annexure P4. जी, annexure P4, my lord. हाँ. Paragraph 12. Paragraph 12, my lord. It would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. My lord, the 9th line from bottom. Paragraph 12. Tatkali. Just a minute. Yes.
9th line from the bottom. जी, पैराग्राफ 12 के नीचे से साहब, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत रामपुर नैकिन तथा अन्य सहयोगी कर्मचारियों द्वारा ऊपर से पढ़ लेते हैं ना इसको, पैरा 12 को सुविधा हो जाएगी। मैं रीड मिनट। हाँ जी। इट सेज मतलब उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है कि आवेदिका दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, जिसमें कलेक्टर सीधी ने सामान्य प्रक्रिया के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन को जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेकर वांछित कार्यवाही करने की टीप अंकित की गई का आधार लेकर बिना विज्ञापन निकाले तथा नियुक्ति हेतु कमेटी गठित किए बिना एवं रोस्टर अनुसार आरक्षण नियमों का पालन न करते हुए श्रेष्ठता एवं वरीयता का ध्यान न रखते हुए तथा विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की कूट रचित तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से नियुक्ति की गई तथा पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए व्यापक पैमाने का भ्रष्टाचार जो कि लोक सेवक के आचरण के विरुद्ध है। इस प्रकार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन तत्कालीन, दिस इज नॉट द प्रेजेंट पिटिशनर, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत रामपुर। क्या रोल था इसमें? मतलब आई वाज इन चार्ज ऑफ द erstwhile शिक्षा कमिटी who मतलब initial रोल था इन अपॉइंटमेंट्स को निकालने। मतलब my role was to scrutinize the documents and the other eligibility of the employees concerned and thereafter मतलब send the recommendation to the CEO जनपद मतलब who happens to be you had a role ना? जी जी। You are not disputing that you never dealt with that case. No, that is not the case. That is not the case. My submission is my lord, all along I followed the rules and regulations and had the तो इंक्वायरी में मालूम पड़ जाएगा, अगर आप निर्दोष होंगे बरी हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने बड़ी जल्दी करी, बिगर कुछ लिखे हुए स्टे कर दिया। 4 लाइन का ऑर्डर है स्टे का, उसमें समझ में नहीं आ रहा किस ग्राउंड पे स्टे दिया गया है, जिसको हम आगे बढ़ाएं आपके स्टे को। My respectful submission is my primary contention is that this application could not have been entertained. If it is your case, see the parameters of section 482 will be applicable here. If it is your case or anybody's case that you had nothing to do with the selection process and therefore you cannot be criminally held, you cannot be held liable criminally or otherwise with civil consequences, and therefore this order be quashed and no FIR could have been lodged against you, then yes, I'm ready to hear. This is through you, I'm telling all the other petitioners who are appearing in these matters. If you had any role to play, however small it may be, then let the investigation be completed. If you will be innocent, police will give you a clean sheet. My respectful submission is in my case, the FIR has not been lodged. ठीक है, नहीं lodge की गई तो you should be happy then why you are here. No, but this direction we probably you obtained stay prior to that. जी जी जी। हाँ ठीक है, अब stay vacate हो जाएगा, अब investigation हो जाएगा। FIR में बाद में मुलजिम जोड़ने से कहीं गुरेज नहीं है, investigation करने से कहीं गुरेज नहीं है, ठीक है। मतलब my prayer is with 482 के पैरामीटर पे आइएगा, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 482 के पैरामीटर पे आइएगा कि आपका false मैलाफाइड प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, तो उसके ऊपर से तो कोई बात बनती है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू ब्लैंकेटली अलाउ और डिसअलाउ अ पिटीशन। उस पैरामीटर में इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपका क्या रोल था। अगर आपका रोल नहीं होता तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू अलाउ दिस पिटीशन। मतलब आई वुड हैव बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आई वुड हैव क्लैरिफाइड दैट आई हैव परफॉर्म्ड ऑल द प्रोसीजर विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दैट अपॉर्चुनिटी वाज नेवर गिवन टू मी माय लॉर्ड। ठीक है, कहाँ है आपका ड्यूटी चार्ट, कहाँ है प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेशन चार्ट सोसाइटी का ड्यूटी चार्ट कहाँ है? No, I am not disputing, Lord, that at that time I was not duty chart. Lord, I'll file. नहीं, I'll file नहीं. Today case is not going to be adjourned. No, I am not seeking an adjournment. Lord, my most respectful prayer is, in order for this, Lord, when the authorities are acting in quasi-judicial or administrative authority, Lord, any order, Lord, that they pass, and if that order, Lord, entails any kind of civil consequences, my lords have held time and again that in those cases, my lord, opportunity of hearing has to be given. And my prayer is, my lord, this petition, my lord, in the one of the my lord, questions that flew from my lord, your lordship was whether the guidelines, my lord, that have been laid down in cases of 482, whether could, my lord, one of those guidelines would be applicable in this case. Now, my lord, notwithstanding, my lord, that in my case the FIR has not been lodged. One of the guidelines, my lord, that has been laid down in Bhajanlal's case is, my lord, that if there is a statutory bar, then the proceedings would not be maintainable. Now, my lord, may please have a look. My lord, since the FIR is not there, my lord, perhaps in toto that would not be there. But as far as the guidelines and the broad principles are there, my lord, may please have a look at the rules of 1995, my lord. कहाँ है rules of 1995? I'll just supply one copy, my lord. Annexure.
No, I have not filed the rules, my lord. I have a copy of the rules, my lord. I'll my lord, hand over the rules. रूल्स ले लीजिए. जी. Now, my lord, may please have a look at Rule 3 first, if I may draw my lord's kind attention. Rule 3 of the rules of 1995, my lord. जी. फर्स्ट पहले ही पन्ने पे होगा सब, सीधे हाथ पे जो पन्ना है. जी. It says, my lord, appeal and appellate authority, save as wherein it has been otherwise provided in the act or rules or bylaws made hereunder, an appeal shall I, my lord, may please have a look at clause D. In the case of an order passed by the panchayat specified in column 1 of the table below to the authority specified in the corresponding entry in column 2 thereto. Now, my lord, may please just have a look at the table below. Now, in this case, my lord, the undisputed situation is, my lord, that the appointment order had been issued by the Janpad Panchayat. Now, had the, my lord, person aggrieved wanted to assail that, the appropriate remedy, my lord, would have been before the collector. That is, my lord, my first limb of the argument. Yes. With the kind permission, my lord, the second limb of this particular argument. My lord, may please have a look at the, my lord, Rule 5 of these very rules. Just a minute. Ji. Yes, Rule 5. Yeah. Rule 5, my lord, it says, it my lord speaks about revision. Revision is, my lord, the plaint. Rule 5 is in regard to appointment of Panchayat Karmi. My lord, perhaps your lordship is having a look at note 5 under that rule. If I'm not mistaken, my lord, Rule 5 is revision. Just a minute. Revision, yes. Yes. Lordship, may please have a look. It says, not the state government or the state government, the commissioner, the director of panchayat, the collector may, on his own merit, or on the application by any party at any time for the purposes of satisfying himself, as to the legality or propriety of any order passed by, or as to the regularity of the proceedings of the authorities subordinate to him, call for and examine the records of any case pending before or disposed of by it, such authority, and may pass such order in reference thereto as if it/he may think fit. Now, my lord, the important part of this, my lord, please have a look. Provided that it/he shall not vary or reverse an order unless notice has been served on the parties interested and opportunity to them for being heard. This, my lord, is one clause. The other part is even more important, my lord. It says, provided further that no application for revision shall be entertained. It says, my lord, it can't even be entertained against an order appealable under the act. So, my lord, conjoint reading of my respectful submission is, Rule 3 along with Rule 5 will reveal that if at all, my lord, a proceeding could have been, my lord, instituted, then, my lord, it could only have been before the learned collector, my lord, and that too by a person aggrieved, my lord. Who is the person aggrieved, my lord? I'll come to later on, my lord, with the kind permission of this court. But my first submission is, my lord, there was absolutely no jurisdiction or authority with the learned, my lord, additional commissioner to entertain this appeal at the instance of a person who was not even a participant in the selection process, my lord. Who had issued the orders of appointment? My lord, the orders had been issued, appointment orders had been issued by the Janpad Panchayat, my lord. Janpad Panchayat, ठीक. This, G. And my lord, to, my lord, bolster this argument of mine, my lord, my most respectful submission is, my lord, the well-settled legal principle is that, and that an authority, my lord, which has inherent lack of jurisdiction, if an order is passed by it, then, my lord, then that particular order would be a nullity in the eyes of law. Now, my lord, I have supplied the list of books in the morning. With the kind permission, my lord, where I'll just read one paragraph, my lord. Please. Ji. My lord, this is 2007, volume 2. Okay. टू 2007 का 2 MPLJ SCC जी SCC साहब SCC यहाँ रखिए ना किताबें, वहां इतनी दूर कब तक जाते रहेंगे आप निकालने के लिए? दे देते हैं अपन। My lord, I have quoted my. अरे भाई एक सेकंड, इनको किताब तो देने दीजिए, हमारे रीडर साहब किताब ही नहीं दे पा रहे, इतना टाइम लगता है वक्त।
किताबें सारी लाके यहाँ रखी है, जो इस केस से संबंधित किताबें यहाँ रखी है। हाँ बताइएगा। 2000 जी 7 का वॉल्यूम 2। रीडर साहब कब से नौकरी कर रहे हो आप? कब से हो हाई कोर्ट की सर्विस में? 2006 का आप 5 दे रहे हैं, वो 2007 का 2 बता रहे हैं। अगर आप इतना नहीं समझते तो वो बोल रहे हैं किताब उन्होंने दी थी पहले ही लिस्ट, क्यों नहीं निकाली गई हैं किताबें? Lord, I have quoted the relevant paragraphs in my written submissions. If your lordship deems appropriate, जब नहीं, let the book come. जी बुक से देखने से हमेशा एक एडवांटेज रहता है कि उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, मालूम पड़ जाता है कहाँ से क्या पढ़ना है। जी लड़की यहाँ बैठी हुई नुमाइश लगाने के लिए बैठी है क्या ये? 7 का 2 पेज नंबर 355 355। जी बताइएगा प्लीज। जी It says मतलब paragraph 22 मतलब please have a look. This Paragraph 22 जी पेज नंबर 363 पे होगा सर। जी जी मतलब this is मतलब in relation to my basic argument wherein I have मतलब drawn my lord's kind attention to the fact that the learned additional commissioner had absolutely no jurisdiction or मतलब competence to entertain the appeal itself. जी entertain the revision, my lord, I'm sorry. Paragraph 22, my lord, please have a look. The core question is as to whether an order passed by a person lacking inherent jurisdiction would be a nullity. It will be so. The principle of estoppel, waiver and acquiescence or even res judicata, which are procedural in nature, would have no application in a case where an order has been passed by the tribunal/court, which has no authority in that behalf. Any order passed by a court without jurisdiction would be quorum non judice, being a nullity. The same ordinarily would not be given effect to. And thereafter, my lord, the Honorable Supreme Court reproduced certain earlier judgments, my lord, perhaps on this very point. Right. So my first, my lord, respectful submission is, my lord, that there was, even assuming, my lord, there was some kind of grievance by a person, the appropriate remedy, my lord, ought to have been resorted to. Otherwise, my lord, the learned commissioner, my lord, had absolutely no jurisdiction to entertain the appeal, my lord. That is, my lord, the wide import of the statute, my lord. That is the rules of. You have said it. I have noted I'll not repeat. Repeating will not help you in any No, I'll manner. not repeat, my lord. I'm grateful, my lord. The second, my lord, contention is a somewhat, my lord, identical scenario, my lord, was before a coordinate bench of this honorable court. In that case, my lord, this is 2022. This is, my lord, on the question of opportunity hearing. My prayer is, my first contention is, my lord, I have given this judgment also, my lord, in the morning. 2022 SCC online MP 3994. हाँ ये जजमेंट आप पढ़ नहीं पाते क्या? कहाँ ये 2022 का SCC ऑनलाइन? No, my lord, my contention is that if at all there was any kind of finding wherein, my lord, my character has been, my lord, commented upon, that there was some kind of, my lord, interpolation in the records and that there was widespread corruption and so forth. An opportunity of hearing, my lord, ought to have been given to me, even assuming, my lord, there was some kind of illegality. Even in that case, since the authorities were acting in a quasi-judicial or administrative authority, my lord. Then, my lord, they ought to have given me an opportunity of hearing. My respectful submission is, my lord, in this case, which, my lord, cropped up before the learned coordinate court, the collector Damo had, my lord, in somewhat similar circumstances. Given the ratio, I have understood it. Now proceed. Now, my lord, may please have a look at paragraph 2 of this case, my lord. This 2022 SCC online. Ji. It says, my lord, learned counsel appearing for the petitioner submitted that no opportunity. That point is already taken. What you want to, you have said that you were not given opportunity of hearing. Ji. Is your mandate is to pass time, then it's different. No. Otherwise, come to the no, point. I had not read the, my lord, for the. Please. Then, my lord, I am referring to ILR 2019 MP 1581. ILR 2019 MP 1581. दीजिएगा। निकाला था आपने सुबह, लिस्ट दी थी आपने कि नहीं दी थी किताबों की?
कहाँ है? नहीं मिली तो आपने बताया था। आपके पास स्पेयर कॉपी है इसकी ILR की? सब कॉपी नहीं है, मैं अपना डिसीजन आपको दे दिखा देता हूँ। दीजिए जी, आई रीड फ्रॉम माय WS में। जी। Lord, this particular decision I have not quoted, Lord. वो पैराग्राफ मैंने लॉर्डशिप के लिए मार्क कर दिया। इट ओनली सेज मतलब 34/36। जी जी जी। लेट अस 34। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी जी। And my lord, the last contention being that my lord, at the instance of that person, my lord, who had my lord initially instituted this proceeding, my lord, this Shakuntala Pandey. Now, my lord, she was not a participant in the my lord, recruitment process. She was not one of these persons, my lord, who otherwise held the eligibility, and she was, my lord, effectively a busybody, my lord. There was absolutely no occasion, my lord, no occasion for this person to, my lord, institute these proceedings. ठीक। And this point has also, if I may respectfully submit, my lord, been decided by this honorable court in my lord 2012 3 MPLJ 450. 2012 3 MPLJ 450, my lord. And at that time, your lordship, my lord, when presiding in the division bench, lordships have held while interpreting the provisions of these very rules of 1995, my lord. जी। पानी दीजिएगा। 2012 का 3 MPLJ निकला नहीं निकला? ये कौन सी किताब पड़ी हुई है? क्या मतलब 2012 का क्यों नहीं निकाला गया? 12 का बिगड़ देखिए बोल रहे हो, बिगड़ देखिए बोल रहे हो। 2012 का 3 बोला ना आपने? जी 12 का 3 साहब। ये तो 12 का 1 निकाल दिया हमारे यहाँ भी। अच्छा, ये 12 का 3 मांगा था, ये 12 का 1 क्यों निकाला? किसी और ने बताया कि 12 का 1? तो रखिएगा, अभी देखेंगे 12 का 1 किसी और ने बताया होगा। 12 का 3 MPLJ दीजिए। मैं जस्ट हैंड ओवर माय कॉपी में। अच्छा प्लीज, मैंने उसमें मार्क कर दिया प्लीज। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। And my lords have also held that the power that the extraordinary power that your lordships have in 226, that any person, my lord, even a busybody can perhaps approach this honorable court by way of a quo warranto, my lord. That by necessary implication is absent in the rules of 1995. And paragraph 13, my lord, may please have a look. My lords have held that paragraph 13 of that case law, my lord. Yes. The 12 and 13 are the most important paragraphs. पढ़िएगा please. My lord, I have given my copy. अच्छा sorry. जी। कॉपी साहब को दीजिएगा। फेयर वाला जी। Yes. Those are the broad, my lord, arguments and the case laws I have provided. In the morning, your lordship were kind enough to give me permission for filing the written submissions, my lord. That I also. I'll not consider written submissions. आप या तो बहस नहीं करिए या written submissions दीजिए। ये duality नहीं चलेगी। Written submissions reject कर दीजिएगा। Since British Council has argued the matter, written submissions which are still not on record are not required to be taken on record. In the morning, I had taken the permission. You may have taken a permission. ठीक है, चलिए।
Therefore, my lord, my last contention is this, that having, my lord, heard the entire matter, if your lordships are of the opinion that, my lord, still the entire aspect needs to be ascertained, my respectful submission is, my lord, had I been given an opportunity, I would have explained it. So, my lord, if your lordship that's clear. Next case, 1.2. In that case, one important judgment is there, my lord. 1.1 नहीं, इसमें इसी में बताइएगा। 2012 का 2 MPLJ, एक सेकंड, 12 का 2 2012 MPLJ 27 पेज नंबर 27 दीजिएगा। 2012 का 2 MPLJ 27। Honorable Court has held that can be exercised even suo motu in revision by the commissioner, my lord. जी ठीक है, मंगवा लीजिएगा इसको। यस, उसमें बस मैं सर का बता दूं, even suo motu would be there, my lord, that proviso would still come into play. Suo motu can be done when no appeal lies, my lord. ठीक है, that I understood. That I'll answer. हमारी व्यवस्था में जी ठीक है। 1.2 1.2 लॉर्डशिप ऑन बिहाफ ऑफ कुमारी आपका तो अपॉइंटमेंट ही चैलेंज है। जी जी 1.2 1.3 तो सेम आर्गुमेंट होगा, ये बताइए। मैं दो आर्गुमेंट जो मिस्टर कबीर ने ये सर उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ कि वो जो रिवीजन इज नॉट मेंटेनेबल बिफोर द कमिश्नर लॉर्डशिप। जी जी और सर वो इसे अथॉरिटी नहीं, क्योंकि और वो सी वाज नॉट एग्रीड पार्टी, वो शकुंतला। ठीक है। और सर तीसरा ये कि उसने एक ये आरोप है सर कि हमने क्वालिफिकेशन टेस्ट पास नहीं किया। तो सर काइंडली सी एनेक्सर P3 पेज नंबर 22 ऑफ माय पिटीशन। जी ये हमने पात्रता परीक्षा 2008 में पास की है सर। आप दोनों ने पात्रता परीक्षा पास की? जी ठीक है। तो ये कहना कि हमने पात्रता परीक्षा पास नहीं की और क्वालिफाइड नहीं थे, वो लेकिन एडवर्टीजमेंट निकला था क्या? पात्रता परीक्षा तो और भी लोगों ने पास की होगी, एडवर्टीजमेंट निकला था। आर यू डिस्प्यूटिंग दिस फैक्ट कि एडवर्टीजमेंट निकला था? वो सर तो वो था, क्योंकि वो तो हमको अपॉइंटमेंट जनपद ने दिया सर। नहीं एडवर्टीजमेंट निकला था, किसी एडवर्टीजमेंट के परिणाम स्वरूप आपने अप्लाई किया था क्या? जो पात्रता परीक्षा ही एडवर्टीजमेंट के आधार पर होती, क्योंकि वो बोलते हैं कि जैसे पात्रता परीक्षा कराते जो भी पात्रता परीक्षा पास कर लेगा वो जाके आवेदन देगा, मुझे नियुक्ति दे देंगे जनपद पंचायत। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, पोस्ट निकलेगी ना। ठीक, चलिए आर्गुमेंट। और ए वन ऑफ द आर्गुमेंट सर ये कि सर उसमें उसने एक एप्लीकेशन खुद दी थी। वकालत थोड़ी ना है कि जिसने भी LLB कर लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, आ गए वकालत करने के लिए। सर नौकरी है ये, तो कुछ कहना पड़ेगा क्योंकि सर मैं तो बाद में आया इस पिटीशन में, तो जो इसमें लिखा है सर मैं वही आर्गू कर पा रहा हूँ। और एक सर ग्राउंड और है कि ये जो इसने खुद अपना रिवीजन विड्रॉ करने के लिए अनुमति चाहिए थी कमिश्नर शकुंतला ने। ओके। क्योंकि ये हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग थी। तो मेरा निवेदन है कि जब हायर फोरम में केस पेंडिंग है तो वो डिसाइड करने की जो अधिकारिता है सर कमिश्नर साहब को नहीं। एक सेकंड, विड्रॉ करने की अनुमति मांगी थी। कौन सी पिटीशन पेंडिंग थी सर? ये कोवरेंटो 14753 ऑफ 18 14753/18 वाज पेंडिंग। इसमें कोई स्टे था क्या? सर नोटिस हुए थे। कब हुए थे नोटिस? वो हमने कॉपी लगाई थी सर 10/7/2018 को। 10/7/2018 को? जी ठीक है, ठीक। और सर एक ग्राउंड है वो मैंने कॉपी पेश नहीं की सर, कि जो को वारंटो है वो एडिशनल आर्गुमेंट है सर।
कि वो क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय के खिलाफ नहीं लागू होता। कोई जजमेंट दे दीजिए, क्लास 3 क्लास 4 के लिए को वारंटो लागू नहीं होता। मैं अभी सर लिख लेता हूँ मैं आपका आर्गुमेंट। को वारंटो रिट कैन नॉट बी इशूड against class 3 and class 4 employee। जी ठीक है। हाँ चतुर्वेदी साहब बताइए। लॉर्डशिप रिप्लाई का R2 लॉर्डशिप पेज नंबर 11, इसमें लॉर्डशिप है कि रिक्त पद थे संविदा वर्ग 3 के, उसी पर हमारी नियुक्ति हुई थी। पेज नंबर लॉर्डशिप 9 R2 लगा है। रिप्लाई प्रक्रिया क्या थी नियुक्ति के लिए, यह पूछ रहे हैं आपसे। इसमें जो ये लिखा है आवेदन हमने दिया लॉर्डशिप, इन लोगों ने नियुक्ति हमें दे दी वो लॉर्डशिप। तो ठीक है। क्या विज्ञप्ति निकाली थी कोई नियुक्ति के लिए? इशू ये कमिश्नर साहब ने ये डिसाइड किया है कि कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई, ना कोई वरीयता सूची नहीं, कोई आवेदन बुलाए गए, ना वरीयता सूची बनाई गई। इसके बारे में क्या कहना है आपका? लॉर्डशिप इसके तो सरकार कहेगी। ठीक, थैंक यू। और संविदा सालक परीक्षा हमने पास की थी, पेज 13 में P1 में लगा हुआ है। ठीक है, लिख लिया मैंने। लॉर्डशिप यस। अब ये मान सिंह उइके के लिए कौन है? Lord, I'm appearing. हाँ Lord, बताइए। my line of argument would be just same as in serial number 1.1, my lord. I would only like to add one more argument, my lord. Lord, when the revision application was preferred by the complainant, my lord, there was also an application for condonation of delay. Yes. That is Annexure P2, my lord, with my petition. But in the entire order sheet, my lord, there's the application for condonation delay has not been decided. Yes. Without deciding the issue of limitation, my lord, the matter has been decided on merits. अच्छा। And this What issue, is the limitation prescribed for a revision? Lord, that is 45 days. कहाँ है नियम में पढ़ा? Lord, that is Lord, limitation of revision, that is rule 6, my lord, that is 60 days. Section rule 6। My lord. ये कितने दिन की डिले थी इसमें? Lord, even that number of delay has not been explained in the application. अरे भाई, किस तारीख का नियुक्ति आदेश है? Lord, that is चार 3/11 और 15/4/11 का नियुक्ति आदेश है। क्या है? 4/3/11 और 15/4/11 और 15/4/11 और रिवीजन कब फाइल हुई है? Lord, since September 2011. सितंबर 2011 my lord. 11। ठीक है। लिमिटेशन कहाँ पढ़ रहे थे आप? Lord, that is rule 60, my lord. Rule 6, my lord. रूल 6। My lord. हम देखेंगे। My lord. रिवीजन तो रूल 5 में है। Lord, limitation is under has been prescribed in rule 6, my lord. No application for revision shall be entertained under sub rule 1 of rule 5 after the expiration of 60 days from the date of the order, my lord. लिमिटेशन फॉर For this reason, my lord. ठीक है, ठीक है, ओके। Not so that I'm only relying on a one single judgment, my lord, जी। passed by the, which was a reference issued to Allahabad High Court, my lords, whereby it has been categorically held that the matter could be decided on the same day, but there has to be an order on first the application for limitation has to be decided, and then the matter has to be decided. I'll close my arguments now. जी ठीक। यस 1.5 1.6 Lords, in WP number 13633, जी, in which, my lord, I am challenging the order of the commissioner, my lord. जी, Annexure P2, my lord. जी। आपने बताया था कि आपने 5/1/8 को चार्ज दे दिया था। जी सर।
और दूसरी पिटीशन में क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? पहली वाली में सर ये बता रहे हैं सर कि जो कमिश्नर का ऑर्डर है इन विच दे डिड नॉट मेड अ पार्टी टू अस, देयरफॉर आई कुड नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स इन विच मतलब आई एम देयर इज कबीर पॉल साहब ने आर्गुमेंट कर दिया, वो आर्गुमेंट यू आर नॉट अ पार्टी, ठीक है। और सर ये दूसरी वाली जो है इसमें सर हम क्लर्क थे बीईओ के, तो जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, हम कोई कमेटी में जी, क्लर्क ऑफ बीईओ, यस जी। पढ़िए, कहाँ लिखा है आपने? ये सर 5.2 में से 5.2 पढ़िए प्लीज। that the petitioner has been appointed on the basis of compulsory appointment in place of father so and so working as teacher, and the year of 1970 all of a sudden that therefore the petitioner has been appointed on compulsory ground on 476 on the post of LDC. जी ठीक है। ये कहाँ लिखा है कि आपका कोई रोल नहीं है? जी सर, इसमें हमने ये ग्राउंड लिया सर कि हमें कहीं पार्टी नहीं बनाया, देयरफॉर आई एम अनएबल टू, मतलब पार्टी वाला ग्राउंड लिख लेते हैं। जी वो तो आपने बता दिया, वो तो कबीर पॉल साहब वाले आर्गुमेंट हो गया, वही नॉट अ पार्टी। जी सर जी, और कुछ इस वाले में सर यही ठीक है। और नेक्स्ट वाले में सर जो एफआईआर का है वही कहा सर कि इसमें जब हमें पार्टी नहीं बनाया गया, देयरफॉर विदाउट मतलब हेल्डिंग एनी लायबिलिटी ऑफ द पिटिशनर कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द पिटिशनर इन सच प्रोसीडिंग व्हिच इज अपॉइंटमेंट हैज बीन टेक प्लेस, ठीक। therefore FIR which is registered against the petitioner without holding any मतलब the ने एफआईआर की क्वेश्चन मांगी है जी एनेक्स पी से जी, ठीक। यस मैम 1.7 WP 14523 of 19. जी, An FIR has been registered against the petitioner, against which he's come before 14/2019 14523 of 2019 is the WP number. हाँ हाँ, Milord. 14523 ऑफ Ramashankar Mishra. यस यस, उसी में तो आपको बहस करने के लिए बोला है। Milord. हाँ, Milord, as per my rejoinder, Milord, he was working on the post of Sahayak Sanchalak. आपकी एफआईआर कब दर्ज हुई? आप भी क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के लिए आए हैं? Milord. जी, Now we're challenging the order also as also the quashing of FIR. जी, Milord, FIR is registered on 7/7/2019. जी, Milord, may kindly produce my copy of the rejoinder, Milord. जी। That's document number 3601 of 24. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ 3601 of 2024. कब फाइल किया आपने? Not today morning, Milord. I sought permission कॉपी दीजिए उसकी, एक्स्ट्रा कॉपी दीजिए। आ गया क्या रिजॉइंडर? आ गया, ठीक, आ गया जी, बताइए। Kindly come to an extra RJ1. RJ1, यस That is the order dated 5/11/2009. जी, My name comes at serial number 28. That's page number 3, Milord. यस Shri Ramashankar Mishra. जी, He was working on the post of Sahayak Sanchalak Karyalay Jila Shiksha Adhikari Sidhi. जी, Now thereafter, by an extra RJ2, यस I was given the temporary charge of District Education Officer Sidhi. जी। Lord, on 1/4. एक सेकंड, जी, Lord, thereafter by RJ3, I had written a letter that I've joined my post on 1/4/2011. Yes. In pursuance of the order dated 30/3/2011. and these appointment orders were issued on एक 4/3/11 को और एक 15/4/11 को है, Milord. तो 15/4/11 को तो आपके अपॉइंटमेंट के बाद वाला है। No, but the procedure of the entire appointment had taken. Does it contain your signatures or not? My signatures are not there in any of the documents where the appointment was made, Milord. अच्छा, कहाँ है आपका फिर? क्या कहा आपने अपने इसमें? Milord. Milord, my entire case is based on
two line of arguments, my lord. जी. Firstly, I am adopting the arguments made in 1.1 that I Yes. was not a party before the commissioner. Yes. And secondly, my lord, my second argument would be that I was not holding the post of the committee which is constituted by the collector for making the said appointments. जी. Therefore, I had no role to play in those appointments and जी. this FIR against me. जी. So your case is you never dealt with this file even as assistant director in the office of DEO. My lord. जी. इंचार्ज डीओ माय लॉर्ड. इंचार्ज डी तो बाद में बने हैं ये. 30-3-11 चार को बने हैं ये. मैं टाइम बता दे रहा हूँ. राय सिंह इज द वर्किंग इंचार्ज डीओ ऑन 4/10/2008 टू. कौन? मिस्टर राय सिंह. ये तो अपन तो रमाशंकर से डील कर रहे हैं. उनके उसके बाद का इनका भी बता दे. बता दीजिए. राय सिंह 4/10/2008 से. राय सिंह 4/10/2008 से 31/3/2011 तक. 31/3/2011 तक. जी. ये भी इंचार्ज डीओ थे साहब. हाँ. और रमाशंकर मिश्रा इज द इंचार्ज डीओ ऑन 1/4/11 से 11 जुलाई 11 तक. 11 जुलाई 11 तक. इन्होंने क्या फाइल करी, कार्रवाई करी? At the time of issuance of appointment, they are working as an incharge DO, my lord. And who has issued the appointment order? Mr. Rai Singh. Name is. अरे राय सिंह ने तो किया है. इन्होंने इनका पूछ रहे हैं, रमाशंकर का पूछ रहे हैं. They are working at the time of incharge. Appointment order has been issued by the CEO Janpat Panchayat. Is it correct? Yes, ma'am. Appointment order was issued by CEO Janpat Panchayat. But note sheet में जो Mr. नोट शीट में तो राय सिंह तो ठीक है. हम तो पूछ रहे हैं नोट शीट कब मिली, कब भेजी गई जनपद पंचायत को, सीईओ को? वो इसमें है ना. बताइएगा ना. वही तो पूछ रहे हैं आपसे. Para 10 of the commissioner order, man. Para 10 of the commissioner order. मैरिड. एक सेकंड पॉज तो जाने दीजिए वहां तक. एनेक्जा P4 है इसमें. हाँ. पैरा 10 पढ़िएगा. मुख्य कार्यपालन अधिकारी. एक मिनट रुकिएगा, ये हैंग हो गया. पैरा 10. यस. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग से प्राप्त मूल नस्ती के परिशीलन में पाया जाता है कि आवेदिका दीपा पांडे द्वारा कलेक्टर सीडी के समक्ष दिनांक 7/2/2011 को विकलांगता के आधार पर
संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर सीधी ने टिप अंकित किया कि सीओ जेपीआर नेकिन जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेकर वांछित कार्रवाई करें। उक्त आवेदन टाइप किया हुआ, जिसमें संलग्न पात्रता प्रमाण पत्र की छाया प्रति के आगे स्याही से 1 एवं 2 आवेदन पत्र लिखा है। इसी प्रकार आवेदिका दीपा पांडे के नाम के सामने स्याही से 1 लिखा है तथा नीचे स्याही से नंबर 2 डालकर सतीश पांडे तनय श्याम सुंदर पांडे ग्राम सगौनी पोस्ट भरतपुर जिला सीधे लिखा गया है, जो बात का लिखा प्रतीत होता है। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग ने दिनांक 17/2/2011 को टिप अंकित किया कि जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखें। बीओ रामपुर नैकिंग बीईओ कार्यालय की नोट शीट दिनांक 28 फरवरी 2011 में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर सीधी के टिप दिनांक 7 फरवरी 2011 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग के टिप दिनांक 17/2/2011 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी के पत्र क्रमांक 21/2/2011 द्वारा शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ममदर एवं प्राथमिक शाला भरतपुर में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के रिक्त पद दिए गए एवं कलेक्टर के निर्देशों के पालन हेतु सुनिश्चित किए जाने बाबत लिखा गया है। उक्त नोटशीट बीओ रामपुर नैकिंग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भेजी गई, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ नस्ती प्रस्तुत करें लिखकर बीओ को वापस की गई, जिस पर पुनः बीओ द्वारा उल्लेख किया गया कि उपरोक्तानुसार माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुक्रम में यह कार्यवाही शिक्षा समिति की बैठक में पारित की जा चुकी है। अतः आवश्यक मार्गदर्शन हेतु नस्ती आदेशार प्रस्तुत है तथा नस्ती जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की गई, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उल्लेख किया कि कलेक्टर महोदय के निर्देश दिनांक 30 फरवरी 2011 के अनुक्रम में आपके पत्र क्रमांक 240 दिनांक 21/2/2011 के अनुसार पत्र क्रमांक 100 दिनांक 8 फरवरी 2011 द्वारा रिक्त पद दिया जा चुका है। जनपद के लिए शिक्षा समिति प्रमुख है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश का पालन सभी कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाना अतः जिला प्रमुख के आदेशानुसार बातचीत आदेश किया जाना। 1/4 के बाद क्या कार्रवाई हुई, ये तो पूछ रहे हैं। 1/4 के बाद क्या कार्रवाई हुई? 1/4 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया डीईओ का। 1/4 के बाद क्या कार्रवाई हुई? जी, और कुछ कहना है आपको? नहीं, और जो पॉल साहब वगैरह ने बहस की उसके बारे में कुछ कहना है आपको? हाँ, वो निहारिका का एक जजमेंट है, मैंने रिलाई किया तो दीजिएगा। कौन सा? 2021 का। 2021 क्या है? 2021 AIR सुप्रीम कोर्ट 1918 निकाल के लाइए। दो 2021 का AIR सुप्रीम कोर्ट 1918 मान लो। हाँ। लिखिएगा, these petitions are filed by various parties which needs to be elaborated with a view to have clarity in the matter of facts. Next, WP 14753/2018 is a petition filed by Shri Virendra Singh Parihar, and it is in the nature of seeking writ of quo warranto in regard to appointment of private respondents number 225। ये कौन सा केस खोल गया? इसमें कितने को आएगा? 326 है सर। 326 नहीं, 326 नहीं, एक सेकंड। 326 who were given appointments. This item number number 1, in which these orders have been passed. I'm appearing for response number 5 and 6. हाँ, बताइए ना। Or my submission is this that because everything has emanated from this writ petition. जी।
Now what I am not, because much water has flown there after all these inquiries and my lords thing. Yes. But otherwise, if my lord should see whether the writ petition was at all maintainable at all. जी It's a writ of my lord quo warranto is sought in this case. जी And the my lords may please see what he is the relief what he is claiming in that writ petition. जी जी If my lord should kindly जी see the relief clause जी of the writ petition. It is nothing other than the writ of quo warranto. yes He says the relief claim in paragraph 7 issue a writ order in the nature of quo warranto questioning the appointments of private respondents as made in the year 2011 and upon holding that the appointment made on the post of Samvida Shala Shikshak grade 2 and grade 3 of the year 2011 for Janpad Panchayat Rampur Nekin district CD. Now, what the writ of quo warranto will it be maintainable against because Samvida Shala Shikshak? The appointments are made on a contractual post. तो आपका आर्ग्यूमेंट है कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे रेट ऑफ क्यू वारंट अप्लाई नहीं It होती will not apply. ऐसा बताइएगा उनको जजमेंट बताइएगा क्योंकि थोड़ी देर पहले पुष्पेंद्र दुबे साहब भी आर्ग्यू करके गए कि क्लास 3 क्लास 4 पोस्ट के लिए हाँ, class 3, class 4 is another aspect. जी जी क्या कह दिया उन्होंने Yeah. This 2006 volume 11, 2006 volume 11 SCC 731. 2006 वॉल्यूम 11 SCC 73 SCC 731. 73 लीजिएगा 2006 का 11 SCC है कि नहीं है लिस्ट तो दिया था लिस्ट दिया था कब दी थी लिस्ट आपने कब दी थी मॉर्निंग में ही से मॉर्निंग में दिया मॉर्निंग में कब किसको दी थी आपने लिस्ट थैंक यू हाँ बताइएगा My lords may have a look on paragraph 43. पैरा Sir 50 para 43. 43 yes Ji. Whether a writ of quo warranto lies to challenge an appointment made until further orders on the ground that it's not a regular appointment. Whether the High Court failed to follow the settled law that a writ of quo warranto cannot be issued unless there is a clear violation of law. This order appointing the appellant clearly stated that the appointment is until further orders. The terms and conditions of appointment made it clear the appointment is temporary and is until further orders. In such a situation, the High Court, in our view, are in law in issuing a writ of quo warranto the rights under Article 226, which can be enforced only by an aggrieved person, except in the cases where the writ prayed for is for habeas corpus. Now, admittedly, this person is not a contender for the post. जी जी नहीं आपका ये कहना था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट Contractual appointment है, it's not a regular appointment. And it is contractual means it's until further order because that contract may be terminated on any day. yes yes So the writ of quo warranto would not be maintainable. ठीक Notes. है To the submission of. आज पहले पूरा तो करने दीजिए आप इतना let him complete then you will have a chance to reply And my lords, writ of quo warranto is akin to the public interest litigation. And therefore, it's writ of quo warranto, it's only the writ where neither the locus is seen,
nor the delay is seen. जी रिट में ना तो आप लोकस देखते हैं ना उसका डिले देखते हैं. जी जी. But if the writ of quo warranto itself is not maintainable, then all the proceedings which are undertaken on the basis of that, जी. that would be my lord. Yes, ठीक है. I have understood. So that is my lord the issue. Yes. I have one submission to make. I have a judgment. 2013 1 SCC 501. Just a minute. 2013 Volume 1 SCC 501. है क्या? लेकर आइए ना जल्दी से आप. 2013 का एक SCC. जी कॉपी है आपके पास में? पढ़िए. Para 19 is relevant. Para 19. A writ of quo warranto will lie when the appointment is contrary to the statutory provisions. This court in More Modern Corporation Transport Society Limited versus Government of Haryana held that the writ of quo warranto can be issued when appointment is contrary to the statutory provisions. क्या बैकडोर एंट्री हो हाई कोर्ट में? तेरह का एक SCC. इन किताबों को सीधा करिए, इनमें देखिए है 13 का एक. फिर लाइए मेरे को दे दीजिए, मैं देख लूंगा. It's 501. Yes. Relevant para is on page 514. जी. It's para 19. Yes. A writ of quo warranto will lie when the appointment is made contrary to the statutory provisions. This court in More Modern Cooperative Transport Society Limited versus Government of Haryana held that a writ of quo warranto can be issued when appointment is contrary to the statutory provisions. In B. Srinivasa Reddy, this court has retaliated the legal position that the jurisdiction of the Honorable Court to issue a writ of quo warranto is limited to one which can be only issued in appointment is contrary to the statutory rules. The said position has been retaliated by this court in Haribans Lal, wherein this court has held that for issue of writ of quo warranto, the High Court has to satisfy itself that the appointment is contrary to the statutory rules. ठीक. आपके कैंडिडेट्स भी इन्होंने पात्रता परीक्षा पास की हुई थी. कहाँ है उनका ऑर्डर? 2 लोगों के लिए तो बताया कि पात्रता परीक्षा पास की हुई थी, उत्तीर्ण की हुई थी. आपने कब उत्तीर्ण की थी? सर हमने रिप्लाई फाइल किया इसमें. हाँ हाँ. एंड आइटम नंबर 1 में जी सर. आपका रिप्लाई कब फाइल हुआ है? 5 and 6 का रिप्लाई है सर. इट्स ऑन 7/3. आज किया? आज फाइल किया है. अरे बड़ी जल्दी याद आई आप लोगों को जवाब फाइल करने की. जी नहीं पात्रता परीक्षा कब पास की आपने? कुछ लिखा है क्या? बस वही. आपका अभी एंगेजमेंट हुआ क्या रिसेंटली? अभी एंगेजमेंट हुआ क्या? नहीं ये कल हो गया. कल हो गया था.
This is leaving a very poor impression. आपको सीनियर एडवोकेट को भी यहाँ पन्ने पलटने पड़े तो ब्रीफिंग काउंसिल क्या करते हैं आपके? It does not appear to be. ठीक, और कुछ तो नहीं कहना? ये इन्होंने जो 2013 पढ़ा है ये एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, वो बेसिक बात जो कहते हैं वो तो बिल्कुल है। वो वारंटों के लिए वो कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रेरी टू रूल्स है, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज कॉन्ट्रेरी टू रूल्स टू विच पोस्ट। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, कहाँ छोड़ा था? पास किया। Well, I'm sorry that my instructions are they have passed the. Where is the document? लगा नहीं है। नहीं लगा है ना, तो I'll not. हाँ। On the post of Samvida Shala Shikshak, grade 2/grade 3. Next paragraph. Petitioner's contention is that there is a provision for appointment of Samvida Shala Shikshak grade 2 or grade 3 on the basis of eligibility test by issuing an advertisement inviting applications from all eligible candidates. कहाँ है वो प्रावधान? But in the present case, the procedure, this provision was not followed, as is apparent from Annexure P2, which is a reply furnished by the state government to the non-unstarred question number 3560 put by one Shri Sundarlal Tiwari in the Madhya Pradesh Legislative Assembly, full stop. In reply to the said question, it was replied by the state that in Janpat Panchayat Rampur Nekin in the year 2011, 4 persons were given appointment as Samvida Shala Shikshak grade 3, full stop. No advertisement was issued. 4 applications were received, full stop. Merit list was not prepared, full stop. All the 4 persons were given appointment orders and the information is kept in the library, full stop. It was also informed that the matter is pending in the court of Additional Commissioner, Rewa Division, Rewa. Chief Executive Officer, Janpat Panchayat has been appointed to place the facts before the Additional Commissioner, full stop. In reply to Part C, it has been answered that एक सेकंड एक काम करो, उसको पार्ट अच्छा लिख लो, इसको फिर ऊपर क्वेश्चन लिखा देते हैं, that neither any approval was obtained from the district panchayat CD nor concerned committee had given any approval and the appointments were made without approval, full stop. This has been answered, full stop. In view of such answers which were furnished by the concerned minister before the Madhya Pradesh Legislative Assembly, namely Kunwar Vijay Shah, this petition is filed challenging the order of appointments of private respondents number 326, full stop. Next pair. Shri Kabir Paul, appearing for respondent number नहीं सॉरी नहीं आप नहीं, आप तो प्रेसिडेंट है। ये श्री पुष्पेंद्र दुबे
appearing for Kumari Vibha Sharma, Shri Amlesh Chaturvedi for Rajesh Kumar Sahu, and Shri K.C. Gildial for respondent number 5 and 6, namely Satish Kumar Pandey and Deepa Pandey, submits that besides adopting arguments put forth by Shri Kabir Paul, who appears for one Shri Rakesh Pandey, who was at the given point of time president of the Education Society, they would like to point out that respondent number 3 and 4 had passed eligibility test. Full stop. It is further submitted that petitioner before the commissioner, namely Shakuntala, had moved an application for withdrawal of the revision as WP 14753/18 was pending in the High Court. Full stop. It is also submitted that writ of quo warranto will not be applicable in the case of a class 3 and class 4 employee, and to support their contention, reliance is placed on the judgment of a coordinate bench of this court in WP 6608 of 2020, Ravi Shankar Chokse versus State of MP and others, decided on 19/7/2021, wherein Honorable Coordinate Bench has held that a class 3/class 4 person does not hold public office as defined in the Black's Law Dictionary, and therefore no writ challenging the appointment on compassionate ground on class 4 post can be made, and has held that writ of quo warranto cannot be granted. Next paragraph. It is also submitted that it is submitted by Shri K.C. Gildial that for respondent number 5 and 6, that their appointment being contractual, is not amenable to writ of quo warranto, and to support this contention, reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Retired Armed Forces Medical Association and others versus Union of India and others. So also B. Srinivasa Reddy versus Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board Employees Association and others, 2006 का 11 SCC 731. Full stop. Reliance is placed on paragraph 43 of the said judgment to submit that Honorable Supreme Court has held as under dash within inverted commas 43 dot whether a writ of quo warranto lies to challenge an appointment made within inverted commas until further orders inverted commas close on the ground that it is not a regular appointment, question mark, whether the High Court failed to follow the settled law that a writ of quo warranto cannot be issued unless there is a clear violation of law, question mark. The order appointing the appellant clearly stated that the appointment is until further orders, full stop. The terms and conditions of appointment made it clear that the appointment is temporary and is until further orders, full stop. In such a situation, the High Court, in our view, erred in law in issuing a writ of quo warranto. The rights under Article 226, which can be enforced only by an aggrieved person, except in the case where the
writ prayed for is for habeas corpus. Thus, counsel for respondent number 5 and 6 submits that writ of quo warranto is not maintainable. Next para. Though Shri K.C. Gildyal, learned senior advocate for respondent number 5 and 6 submits that writ of quo warranto कहाँ गए? आर्ग्यूमेंट बीच में छोड़ के और आप पीछे बैठे हैं? नहीं अरे भाई तो I'm sorry. कोर्ट को I'm sorry. क्या लिखा? कोर्ट से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू यू. No. But इस हाई कोर्ट का बड़ा दुर्भाग्य है, उसने कैसे कैसे गाउन बांट दिए हैं. क्या लिखा? that is for the हाँ. that I cannot cover. Please wait. Huh? Will not be maintainable, but despite oral submission that respondent number 5 and 6 too had passed eligibility test, admits that there is no documentary evidence available on record to substantiate this submission. Next pair. Shri Gaurav Maheshwari counters this argument by placing reliance on the judgment of Supreme Court in राजेश अवस्थी वर्सेस नंदलाल जायसवाल 2013 का एक SCC 501 full stop. Reading para 19, it is submitted that a writ of quo warranto will lie when the appointment is made contrary to the statutory provisions. Full stop. Next para. Shri Kabir, full stop. Before entering into the submissions of other persons, ये दीजिएगा, volume 1 and 2 दीजिएगा. It will be necessary to clarify that the appointment of a Samvida Shala Sikshak is under the statutory rules, namely Panchayat Shiksha Karmis within bracket recruitment and conditions of service bracket close rules 1997, which were amended in the year 2000, which were repealed in the year 2001 and replaced with another set of statutory rules, namely Panchayat Samvida Shala Sikshak appointment and conditions of contract bracket close rules 2001, and therefore submission made by Shri K.C. Gildyal, learned senior advocate, who has left the court in between, and the reliance placed on the judgment of Supreme Court in Retired Armed Forces Medical Association and others is not made out from the record. And since the appointments of the private respondents are under the statutory rules, therefore, this judgment of 2006 has no application to the facts of the present case. Therefore, challenge to the maintainability of writ only on the ground of appointment being made as a stopgap arrangement is not available, in as much as the appointments of the private respondents are neither stopgap nor they have been made until further orders, and in fact they have been made under the, they are supposed to have been made under the provisions of the statutory rules. Next paragraph. Shri Kabir Paul, appearing for one Rakesh Pandey, who was appearing as president of Education Society, which had admittedly scrutinized the records and documents and had forwarded the documents to the competent authority, submits that as per the rule 3 of the Madhya Pradesh Panchayats within bracket appeal and revision bracket close rules 1995,
there is a provision under clause B which provides that, clause D, which provides that in case of an order passed by the panchayat specified in column within bracket 1 bracket close of the table below dash to the authority specified in the corresponding entry in column within bracket 2 bracket close thereto dot submits that order of a Janpad Panchayat is appealable before the collector, and therefore additional commissioner was not authorized to hear and decide the revision. Next para. It is further submitted placing reliance on rule 5 of these rules of 1995 that the state government, the commissioner, the director of panchayat, rule 5 within bracket 1, another bracket small a. The director of panchayat, the collector may, on its his own motion or on the application by any party, at any time for the purpose of satisfying itself, himself, as to the legality or propriety of any order passed by or as to the regularity of the proceeding of, the authority subordinate to it, him, call for and examine the record of any case pending before or disposed of by such authority and may pass such order in reference thereto as it, he may think fit, provided that it, he shall not vary or reverse any order unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them for being heard, provided further that no application for revision shall be entertained against an order appealable under the Act, full stop. Thus, assailing the orders of the commissioner, additional commissioner, date बताइए मानस जी। 27 मई 2019 27 मई 2019 could not have been directing the authorities to register FIR against the persons, namely Rakesh Pandey, Man Singh Uike, Kumud Kumar Shukla, Ram Shankar Mishra, who are parties before this court, and others, without giving them an opportunity of hearing. And secondly, since order of Janpad Panchayat is appealable in terms of the provisions contained in Rule 3 before the collector, that authority could not have been usurped by the commissioner in hearing the revision petition. Next para. Thus, it is submitted that revision is not maintainable and there could not have been any direction to lodge FIR against the private persons. Next, or the petitioners. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Hashim Abbas Sayyed versus Usman Abbas Sayyed and others, 2007 का 2 SCC 355, and reading from paragraph 22, it is submitted that Supreme Court has held that within inverted commas 22 dot, the core question is as to whether an order passed by a person lacking inherent jurisdiction would be a nullity, full stop. It will be so, full stop. The principles of estoppel, waiver and acquiescence, or even res judicata
which are procedural in nature would have no application in a case where an order has been passed by the tribunal/court which has no authority in that behalf. Full stop. Any order passed by a court without jurisdiction would be quorum non judice, comma, being a nullity, comma, the same ordinarily should not be given effect to. Full stop. Within square bracket, C, Chief Justice of AP versus L.V.A. Dikshitlu and MD, comma, Army Welfare Housing Organization versus Sumangal Services within bracket P, bracket close, limited. Next pair. Shri. Paul also places reliance on judgment of coordinate bench of this High Court in Virendra Kumar Tripathi versus State of Madhya Pradesh 2022 SCC online 3994 to submit that without arriving at a finding of irregularities in operation of fair price shop, no order could have been passed to register FIR. Next pair. Reliance is also placed on the judgment of division bench of this High Court in Monica Wagmare versus State of MP and others. ILR 2019 MP 1581 to point out that Srimati Shakuntala Pandey, who was a revision petitioner before the additional commissioner, had no locus to file that revision before the additional commissioner. Full stop. Reliance is placed on para 34/36 of the said judgment of Monica Wagmare to suggest that in the case of Dr. Raghuveer Saran within bracket Supra, bracket close, comma, the apex court deprecated the practice of casting aspersions on a witness or any other person not before him affects the character of such person or witness. Full stop. The court expressed its concern that such remarks may affect the reputation or career of such person, and in this backdrop it is submitted that without affording opportunity of hearing, Commissioner should not have passed this impugned order directing registration of FIR. Full stop. Next para. Reliance is also placed on the judgment of this High Court, in this High Court in 2012 का 3 दीजिएगा, 12 का 3 है यहीं पर on judgment of High Court in Jitendra Singh versus Ram Babu and others. (2012) का 3 MPLJ 450 and reading from the para 12 and 13, it is submitted that Shakuntala Pandey had no state locus to file a petition, in as much as Honorable Division Bench has held that within inverted commas, if a busybody or a stranger is permitted to file an appeal under Rule 3, comma, then it would amount to bestowing powers upon the appellate authorities mentioned in Rule 3 of Rules of 1995, comma, which are akin to powers
exercised by the High Courts and the Apex Court under Articles 226 and 32 of Constitution of India while dealing with public interest litigation. Full stop. Such an intention can neither be read from the provisions of rules of 1995 nor can it be imputed into it. Next para. इसको लंच के बाद जब सिंगल बेंच असेंबल होगी विल कंटिन्यू. कैसे हो जाए भाई सबकी प्रेजेंस पूछ ले बाद में नाटक करते हैं सबकी प्रेजेंस पूछ ले प्लीज. अरे तो एक क्यों लिखा रहे थे ना
सर आइए नहीं है इसमें कोई 4 बजे को भी कर एक इसमें देखो हो रहा है नो आइए फॉर सस्पेंशन श्री 5 7/12/23 नहीं फाइनेंस में नहीं है ऑब्जेक्शन अवेटेड लिस्ट ऑब्जेक्शन ये देखो ये अपनी फाइल हुई है ये 7/12/23 को फाइल हुई आइए ये देखो 220 नंबर 1 My lord. जी My lord, this is the repeat bail application, my lord, जी for grant of bail, my lord. Previous bail application has been dismissed with liberty to file fresh after completing of 10 years, my lord. At present, my lord, 10-year sentence complete, my lord. Lord, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने रिपोर्ट बुलाई थी जेल से जी 22/8/2023 को 22/8/23 को my lord. 22/8/23 को तो कोई रिपोर्ट लगी नहीं है इसमें कोई ऑर्डर नहीं है 22/8/23 22/8/23 को आया था, my lord. 25/8/23 का ऑर्डर है My lord, लिस्ट नेक्स्ट वीक my lord. उसके हिसाब से my lord 22/8 को एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उस आधार पर my lord 11/8 की रिपोर्ट हो सकता है लेट स्टेटस रिपोर्ट कस्टडी पीरियड ऑफ अपीलेंट नंबर 3 सुल्तान जी my lord, सुल्तान वी कॉल्ड फॉर फ्रॉम द सेंट्रल जेल जबलपुर जी क्या रिपोर्ट आई है इसमें 22/8 की डेट पे एक रिपोर्ट आई थी my lord, जो कॉपी हमको भी दी गई है। आइए नंबर उसमें उस रिपोर्ट के आधार पर my lord ये आया था कि उस समय की स्थिति में 10 साल 11 महीने 16 दिन हो गए और एट प्रेजेंट my lord 11 साल 6 महीने 20 दिन हो गए आज की डेट में। बाकी जो 3 अपीलांट्स हैं उनकी बेल ऑलरेडी हो चुकी है। फाइनली इनका इस तरीके से बेल पे छोड़ना तो कोई मतलब नहीं है कस्टडी की डेट क्या हाँ फाइनली सुन के वो जो भी होगा इस बार उस पर वेदर ही रेडी पूछ लेते हैं इसको फाइनली सुन लेते हैं ना अगले हफ्ते अगले मतलब 3 लोगों की ऑलरेडी बेल। अरे ठीक है आप फाइनली बहस कर दीजिए ना अगले हफ्ते फाइनली सुन लेते हैं इसको तो पार्टी के इंस्ट्रक्शन बेल के लिए थे नहीं पार्टी के इंस्ट्रक्शंस तो ठीक है वकील साहब के इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारे लिए हम पार्टी के इंस्ट्रक्शंस ना गवर्न हम वकील साहब के इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस। हाँ तो बताइएगा बहस सुन लेते हैं इसको लिखा देंगे इसको हाई कोर्ट ये कहता है हाँ कब रखना है बताइए आपको कब सुविधा है तैयारी कर लीजिए तो आफ्टर ए वीक करना है होली वेकेशन के पहले करेंगे बाद में करेंगे आप बताइए आपकी सुविधा के दिन उस तारीख को रख लेंगे इसको फर्स्ट वीक कर दे फर्स्ट वीक में लिखिएगा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ श्री NP दुबे learned counsel for the appellant this court deems it appropriate to hear this appeal finally list this case on 5 April 2024 for final disposal yes IA is accordingly disposed of as withdrawn.
तो नहीं ऐसा तो लिखा देंगे, छुट्टियां भी हो सकते हैं। नहीं तो नहीं आए। अच्छा अपना नहीं है, ठीक है मैंने 2.1 में बेल लगी सब इसमें। 2.12 में बताइएगा 2.1। कोई आ नहीं रहा, क्या बात है? None for the applicant. Shri Manas Mani Verma, London Government Advocate for the state. As nobody is appearing, case is adjourned. List after 4 weeks. Number 3, Ms. Sudha Pandey. This case I am praying 2 weeks time for filing objection. Shri, आपका शुभ शैलेंद्र सिंह पटेल। Shri Shailendra Singh Patel for the appellant. Shri Manas Mani Verma, praise for and is granted 2 weeks time to file objection. List after 2 weeks. Okay. Number 4, Lord, I'm praying for 2 weeks time. Lord, the senior needs to argue is not available today. Shri Pravesh Naveria submits that arguing counsel who has to argue this appeal, argue this application for suspension of sentence is not available and prays for 2 weeks time on his request. List after 2 weeks. number 5.1, My lord, objection awaited है to hearing. देना है आपको objection? Yes, sir, I'm praying. श्री आपका शुभ नाम बताइए। Ramakant Patel. Ramakant Patel for the appellant. Shri Manas Mani Verma with 4 weeks time to file objection. List after 4 weeks. Oh, like. हाँ? हाँ न्यू अपील 23 की। ठीक, थैंक यू। में और क्या सिंबल से 0.1 बैठो चालू हो गया में आए हो कोई टैक्स है 3 फाइल करना बोलो। हाँ हाँ ये इसमें फाइल तो है अवेलेबल है, डाउट करना है। नहीं इसमें ऑब्जेक्शन अवेटेड ठीक है। इसमें भी इसमें कहाँ है फाइल है इसमें तो टाइम नहीं लिया हाँ ये तो वो अभी यदि वो तो पड़ गया अपना 4 वीक्स और फाइल कर करो इसमें नन था 4 नंबर में 4 हाँ इतना ऑब्जेक्शन
Fourteen 87 20 में सभी कह रहे हैं 81 87 14 आगे सर को बोल 20 अभी आप सबको मैं आ जाऊँ से Yeah, because 8735. 87. एक और नोट कर लीजिएगा 108 108 रिक्वेस्ट नो 1081 आ गई चलो नंबर 11 में आ जाओ ना बिल ले आना पैसा
एमपीएलसी से आप लिखा रहे हैं, हाँ, कभी पॉजिटिव कंटेंशन है, हाँ, ठीक, आपकी पैराग्राफ में कभी ये पुरानी ये मत देखिएगा, नहीं इसकी जरूरत नहीं, हाँ, Let's along with the judgment of Rajesh Tiwari, let's I have one more judgment to put forth. It's 2016 to MPLJ 283. 2016 to MPLJ 283. निकलवा लीजिएगा. Let's relevant paragraph is 36, 47, 52. निकलवा लीजिएगा. It is further submitted that revision was not maintainable before the additional commissioner. Srimati Shakuntala had no locus standi as she was not a aggrieved party. Full stop. इनके आर्ग्यूमेंट्स आ गए थे ना, पुष्पेंद्र सिंह और अभिलेष चतुर्वेदी के आ गए ना इनके. Mrs. Sanjana Sahni for the petitioner Ram Shankar Mishra submits that Ram Shankar Mishra was working as the assistant director in the office of DEU CD. He was given charge of district education officer CD by order dated 30/3/2011 and he had taken over as in charge DEO on 1/4/2011, whereas all the material was processed prior to that, and without taking this aspect into consideration that there was no complicity of the petitioner Ram Shankar Mishra, he too has been roped in a mechanical manner. Next para. Shri Gaurav Maheshwari at this stage places reliance on the judgment of division bench of this High Court in Mansukh Lal Saraf versus Arun Kumar Tiwari and others 2016 का 2 MPLJ 283 and reading from paragraphs 40 36, 47, 52. from paragraph 36 42 and 36, 47, 52. 36 47. 47 52 submits that in 52 full stop. Next para. In para 36, Honorable Division Bench of this High Court has observed that within inverted commas, it is well established position by now, and for that matter, comma, it was so in vogue in 1995, comma, that when the rules provide for the procedure to be followed for appointment on any public post within bracket S, bracket close, comma, it must be strictly followed, full stop. Any appointment made dehors the mandate of the prescribed rules, comma, must be treated as non-est, semicolon, having been made without authority of law and thus amenable to quashment by issuance of a writ of quo warranto. Next para. In 47, it has, inverted commas close there. In para 47, it is held that within inverted commas, we declare that all appointments made in similar manner within bracket without following the selection process prescribed by the relevant recruitment rules, bracket close, comma, in breach of statutory rules, comma, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith, full stop. However, we may leave the passing of
a formal general government order for revocation of all such appointments or on case-to-case basis, comma, to be issued by the appropriate authority of the state government. Full stop. Next pair. Inverted commas close. In para 52, it has been held as under. ये quote कर दीजिएगा para 52. Next pair. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate in his turn, places reliance on the judgment of this High Court in पेज नंबर क्या था आपका 2012 का 2 MPLJ 27 हैं पेज 27 ये MPLJ in case of Harish Chandra Yadav versus State of MP and others, to point out that it is held by a division bench of this High Court that right of appeal under Rule 3 of Madhya Pradesh Panchayat within bracket appeal and revision bracket close rules comma 1995 is not restricted to a party to the proceeding full stop. An appeal can under Rule 3 can even be preferred by any person aggrieved full stop. Thus it is submitted that the complainant had a locus in the matter and that locus cannot be said to be not available to the petitioner. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, there are few issues which have been dealt with in different petitions in different forms, but the crux of the matter is as under : in WP 14753/2018 Virendra Singh Parihar, writ of quo warranto is sought seeking quashing of the illegal appointments procured by the private respondents 3 to 6. Next. In other petitions, namely WP 12280/19, 12283/19, respondents number 4 and 3 respectively in WP 14753/2018 are before this court seeking a relief for that the order of the additional commissioner dated 27/5/19 annexure P6 be set aside and the court may grant any other relief as may be permissible under law. Similarly, in WP 13035/19, 13633/19 and 13808/19 13808/19 and 14523/19 quashing of FIR is sought for the reasons mentioned above. Next para. First issue which requires to be dealt with and as raised by Shri Kabir Paul is as to whether revision is maintainable in terms of the provisions contained in Rule 5 of Madhya Pradesh Panchayat Appeal and Revision Rules 1995. Full stop. An ancillary issue has been raised which slipped from the above discussion
by Shri Pushpendra Dubey that there was an application for condonation of delay and Rule 6 prescribes limitation of 60 days to file the revision, but revision was filed after the prescribed period of limitation and therefore without passing an order on the aspect of limitation, no orders could have been passed by the additional commissioner. Next pair. As far as maintainability of revision is concerned, it is argued by Shri Kabir Paul that in view of the provisions contained in Rule 3 within bracket small d, since order of Janpat Panchayat is amenable to appeal before the collector, therefore revision was not maintainable before the additional commissioner. Next pair. A plain and simple reading of the order passed by the additional commissioner dated 27/5/2019 reveals that collector himself was a party to the illegal appointments, though commissioner has slyly given clean chit to the collector CD for the reasons best known to him, in as much as it is mentioned in the said order of the additional commissioner that collector had forwarded an application to the concerned authorities of the Janpat Panchayat to grant appointment to certain private respondents. Full stop. Therefore, once collector was party to the menace which was created, which was sown by the collector CD and which was perpetuated by the other officials of the government or Janpat Panchayat, then appeal to collector would have been like an appeal to the Caesar, appeal against the order of the Caesar to the Caesar's wife, and therefore rightly the petitioner Shakuntala did not prefer an appeal before the collector, though it would have been maintainable in terms of the orders of the division bench of this High Court in अभी नाम लिखा है बता रहा हूँ 27 पेज पे in Harish Chandra Yadav versus State of MP. Full stop. Thus, appeal would have been a futile exercise because collector himself had become a party to the list by forwarding an application to the concerned authorities asking them to examine and issue appointment orders. Therefore, the only remedy which was available to an aggrieved party was that of revision and not of appeal. Thus, the judgment cited by Shri Kabir Paul saying that the appeal was provided and therefore revision was not maintainable is not made out, and thus the judgment. कौन सा judgment था इस point पर? And therefore reliance on this reliance Hashim Abbas Sayyid. Hashim Abbas. Reliance on the judgment of Supreme Court in Hashim Abbas Sayyid versus Usman Abbas Sayyid and others will have no application to the facts and circumstances of the case. Full stop. Principles of estoppel, waiver and acquiescence or even res judicata are not applicable to the facts of the present case, and by no stretch of imagination, after recording a finding that collector was party to the selection process or had become party to the selection process, it cannot be said that commissioner was acting without jurisdiction and his court would be quorum non judice. Full stop. Accordingly, that ground is not made out to support the submissions made by Shri Kabir Paul and adopted by others. Full stop. Next para. Another issue is that Rule 5 of the 1995 rules provides that the state government, the commissioner, the director of panchayat, the collector may on its own motion or on the application by any party at any time for the purpose of satisfying itself
oblique himself as to the legality or propriety of any order may examine the record. Full stop. The only embargo is that no application for revision shall be entertained against an order appealable under the Act. Full stop. It is evident that the right to file appeal stood seized by virtue of involvement of the appellate authority, that is the collector CD, in forwarding the application for grant of illegal appointment, and therefore the second proviso below Rule 1 within bracket, Rule 5 within bracket 1 another bracket small a cannot be said to be applicable to the facts and circumstances of the present case. Next para. As far as issue of limitation is concerned, comma, Rule 6 within bracket 2 provides that the revisional authority may admit application for revision after expiry of 60 days if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period. Next para. As is evident and not disputed from the discussion above, Shakuntala Pandey was a stranger to the proceedings. She had moved an application before the commissioner. Full stop. Appointment orders were issued on और 4-3-11, 15-4-11, 4-3-11 and 15-4-11. Full stop. Revision was filed in September 2011. Thus, once the stranger to the proceedings came to know of this fact that illegality has been committed and from the date of the knowledge preferred a revision before the additional commissioner, then the additional commissioner satisfying itself oblique himself as to the legality or propriety of any order passed by or as to the regularity of the proceedings of the authority subordinate to him cannot be said to be an exercise performed beyond the period of limitation. Full stop. Therefore, that ground of limitation too is not available in the under the facts and circumstances of the present case. Full stop. Now the issue is in regard to opportunity of hearing before giving a direction to lodge FIR. Next para. कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, एडिशनल कमिश्नर नहीं है सर। एडिशनल कमिश्नर ही तो लिखा है। कमिश्नर कमिश्नर का है, कमिश्नर कर लीजिएगा एडिशनल कमिश्नर को। चलिए Chapter 12 of the Code of Criminal Procedure 1973 deals with information to the police and their powers to investigate. Full stop. Section 154 deals with information in cognizable cases. Full stop. Without expounding and expanding the scope of this section, it is evident that police is duty bound to record a FIR or register a FIR in offense, commission of a cognizable offense is brought to its notice. Next para. There is no provision in the CRPC or in any other act that we give an opportunity of hearing before lodging of FIR. Full stop. Thus, judgment cited by Shri Paul in case of Biren Kumar Tripathi, asked by a honorable single judge of this court in as reported in 2022 SCC online MP 3994 will be of no assistance petitioner, because in that case it is held that since the control orders of 2015 provides for a mechanism to investigate, and without conducting such investigation, there could not have been a blanket direction against the
officers of the fair price shop to register an FIR. Full stop. Thus, that judgment being distinguishable on its own facts is not applicable to the facts and circumstances of the present case. Next paragraph. Since the order of the commissioner is nothing but an information on the basis of the material gathered by him that a cognizable offense was committed by committing a fraud on the system and issuing appointment orders dehors the provisions of Panchayat Shiksha Karmi Recruitment and Conditions of Service Rules 1997 or that of Panchayat Samvida Shala Shikshak Appointment and Conditions of Contract Rules 2001, then persons committing such fraud on the system and defrauding the public exchequer by allowing ineligible persons to draw salary from the public exchequer is nothing but a commission of cognizable offense, and therefore information of commission of cognizable offense, since does not require pre-hearing to the persons aggrieved to inform them or to put them on caveat that they have committed a particular offense and they should come and show cause that why action should not be taken, which may be a matter in the case of departmental inquiry requiring adherence to the principles of natural justice, the plea raised by the some of the petitioners that they were not given opportunity of hearing or they were not party before the commissioner is not made out. Next paragraph. Thus, the issue which arises now is that whether the commissioner was justified in passing an order directing the authorities to set aside the orders of appointment allegedly procured by committing a fraud on the system and not following the provisions of the statutory rules made in this behalf, answer lies in the judgment of Honorable Division Bench of this High Court in Mansukh Lal Saraf versus Arun Kumar Tiwari and others Supra. Full stop. Even otherwise, ratio of the judgment of Supreme Court in आपका जजमेंट बताइएगा। राजेश अवस्थी। हाँ, राजेश अवस्थी। 13(1) SCC 501 दीजिएगा। 13(1) कहाँ हटा लिए भाई, किताबें मत हटाओ। 13(1) 2013 का 1 SCC सुप्रा दीजिएगा प्लीज। क्या है पेज नंबर? किताब हटाने की इतनी जल्दी क्या है आपको? That writ of quo warranto will be available. पेज 5 नहीं भाई, ये नहीं 2013 बोला भाई, क्या सोचा दे रहे हो आप? SCC है ये। 13 का 1 SCC दीजिए प्लीज। देखना मैं क्या कर रहे हो यार, ये 13 का 2 SCC है। 13 का 1 बोला ना आपने? 13(1) हाँ, 13 का 1 देखिए। अभी निकाला? हाँ निकाला है, कोट किया है उसको। दिया। And Rajesh Avasthi, where Honorable Supreme Court has categorically noted that What's page 514 para 19 that a writ of quo warranto will lie when the appointment is made contrary to the statutory provisions. Full stop. In the present case, since appointment has been made contrary to the statutory provisions, writ petition is maintainable, challenging such illegal appointments. Full stop. Next para. Therefore, as far as WP
14753/2018 is concerned, it deserves to be allowed and is hereby allowed. Orders of appointment of the private respondents are hereby declared to be null and void. Full stop. Accordingly, full stop. Accordingly, in above terms of declaration, WP 12280/19 and 12283/19 in regard to appointment, safeguarding of their appointment is dismissed. Next para. As far as WPs challenging the order of the commissioner directing to register FIR is concerned, all these petitions 1.1 से 1.6 तक के नाम लिख लीजिएगा। वो जो एक और WP है जो लगी नहीं, जो दो और लोग, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? जो नहीं लगी उसको तो मैं जाके तलाशूंगा नहीं। नहीं वो सेम गैर की तलाश नहीं रहती यहाँ पर। सेम फैट आप क्या कर सकते हैं? आपको लगवाना चाहिए था, सुबह बताना चाहिए था। ऑर्डर था साहब, वो मैंने अभी देखा। ठीक है, रजिस्ट्री को बताइएगा जाकर क्या लिखा। यहाँ गैर की कभी तलाश नहीं रहती। नहीं सर, ठीक है, सेम सेट ऑफ फैक्ट थे। 1.6 तक लिख लीजिएगा। fails to raise a challenge to the direction of the commissioner to lodge FIR in terms of the aforesaid discussion. Full stop. However, they will be free to present their side of the story during the investigation as may be carried out by the competent authority and present their defense, defense. Full stop. Next para. As far as WP 14523/19 is concerned, comma, petitioner has been able to make out a prima facie case for indulgence. Full stop. When petitioner was not involved in the process of selection and he was given charge of in charge DEO on 30/3/2011, a post on which he had taken charge on 1/4/2011. And prior to that, all the files had moved from the office of the DEO, that is, and that were dealt by his predecessor, namely श्री आपने नाम बताया था, मिस्टर राय। क्या नाम था? राय। कौन से राय? FIR में सर। अरे नाम क्या है? नाम तो बता दीजिए। राय सिंह, comma, involvement of the petitioner merely for holding a post after the completion of this act at the scene of crime will not made him culpably responsible for the said acts of his predecessor. Therefore, petition filed by Rama Shankar Mishra seeking quashing of FIR is allowed. FIR qua the petitioner Rama Shankar Mishra is hereby quashed, and it is directed that petitioner will be quashed. Full stop. In above terms, petitions are disposed of. With the kind permission of your lordship, my lord, there's one factual error on my part in WP 11019. In the morning, my lord, by mistake, I had stated that we were in charge of scrutinizing the records. My lord, I have just clarified that particular aspect. I was not in charge of scrutinizing the record. My lord, role was to recommend the my lord, case after the scrutiny had been done. चलिए उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1.1 में the role of श्री कबीर पॉल corrects himself, वहां से जोड़िएगा, इसको काटिएगा मत। So correct himself and submits that his role was not in regard to scrutinization of records, but was to make recommendations after scrutiny of the records in the capacity of president of the educational society. चलिए। One aspect, my lord. अब नहीं। Sir, I'll just place it and अब नहीं, अब तो हो गया, ऑर्डर हो गया, अब क्या होगा? चलिएगा, हटाइएगा ये किताबें, इनको साहब को दीजिएगा, मिक्स मत करिएगा। ये भी रखिए, ये भी रखिए, तीनों किताबें उठाइए। इकबाल ये उसको बोलकर जमादार को बोल के वहां भिजवाना। एक संग ये और दीजिए, लीजिए। अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा। Reliance by Shri Pushpendra Dubey on the order of a coordinate bench of this court in Ravi Shankar Chokse is not applicable to the facts and circumstances of the case, in as much as
dictionary meaning of public office may be of some assistance, but फंडामेंटल रूल्स एफआर दीजिएगा, नीचे वाली किताब में होंगे। तो इसमें वॉल्यूम 2 में है क्या, देखिए एफआर है क्या इसमें, नहीं तो नीचे से निकाल के दीजिए। क्या लिखा? Rule 2 within bracket 1 provides that fundamental rules apply subject to the provisions of Rule 3, to all government servants whose pay is debitable to civil estimates in India, and to any other class of government servants in India to which the Secretary of State and Council may, by general or special order, declare them to be applicable. Full stop. Thus, it is nowhere provided that Class 3 or Class 4 employees or Group C or Group D employees are excluded from the definition of holders of a public office. Next para. Rule 3 of FR3 provides that unless in any case it be otherwise distinctly provided by or under these rules, these rules do not apply to government servants whose conditions of service are governed by army or marine regulations. Full stop. Thus, these rules are applicable to all government servants, and they being applicable to all government servants, all government servants dehors the class or category are amenable to are holders of public office. Full stop. Even otherwise, the definition of public office as extracted by the coordinate bench from the Black's dictionary reveals that within inverted commas essential elements to establish public position as within inverted commas public office inverted commas close our position must be created by constitution, legislature, or through authority conferred by legislature, portion of sovereign power of government must be delegated to position, duties and powers must be defined, directly or impliedly, by legislature or through legislative authority. Full stop. When this is seen, then it cannot be said that an holder of a Group C or Group D or Class 3 or Class 4 post, having been appointed, as in the present case, by the authority conferred by the legislature, which has resulted in promulgation of rules of 1997 or rules of 2001, as the case may be, cannot be said to be not holders of the public office, and therefore reliance on this judgment of Ravi Shankar Chokse is misplaced, because merely a person is a Class 4 employee, he will not be automatically excluded from the definition of public office. चलिए हाँ लीजिए, फाइनल हियरिंग नहीं, मेंशन केसेस ले लीजिए जो भी हैं आपके। कहाँ रखी है लिस्ट मेंशन केसेस की? पहले मेंशन केसेस लीजिए, फिर फाइनल हियरिंग लेंगे।
Lord, kindly see the order dated 4/1/2024 मिनट. There was some direction मिनट. 4/1/24 जी मिनट 4/1/2024. क्या लिखा है इसमें? वेरिफिकेशन बुलवाया. Respondent number 5 certificate से उनके संबंध. Phase 2 में लास्ट पैरा वो इस ओवर देख लीजिए मिनट. Similarly से. Similarly, it is submitted that report was received on 1/12/2017 from the head. पढ़िए क्या लिखा है लास्ट पैराग्राफ. पढ़िए क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए इसी ऑर्डर का लास्ट लाइन. हाँ पढ़िए. Page number 2 का लास्ट पैरा. Similarly, it is submitted that the report was received on 1/12/2017 from the headmasters. कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? आपके ऑर्डर का सर पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 का लास्ट पैरा. हाँ. हेडमास्टर इतना इतना जी ये वेरिफिकेशन हुआ था इसका मार्कशीट का. यादव had not taken admission in the school in the year 2004. So the school record, her name is not recorded either in the school register or student attendant register. Mark sheet was not issued by the concerned school. Therefore, it is evident that respondent number 5 did not even pass 5th class from said school. Thus, OIC submits that mark sheet are being not genuine. Respondent number 5 was not entitled to any appointment. But at this stage, SHRI so and so, Learned Council respondent number 5 has drawn attention of the court to annexure R52, wherein one SHRI S. Bharadwaj, Deputy Director, National School of Open Schooling Certificate, that mark sheet of Kumari Anjali for secondary and senior secondary, wherein she had secured so and so marks, this certainly was correct. Since the communication dated 25/17 is also on record, but it is pointed out that it is not addressed to anybody. बताइए आगे आपका. इसके बाद ये आगे मिला उसमें वेरिफिकेशन हो गया कि वो फर्जी है. वो फर्जी है वो. जी. IA2 या अभी फाइल हुआ लास्ट डेट में 29/2. IA नंबर है 29/2. 29/2. 24. यहाँ तो आई नहीं 29/24. ये बेटा 16 फरवरी को पेश हुआ है. 16/2/24 को. अच्छा. अभी मेमो चल रहा है. ऐसा तो 241 तो नहीं बता रहे हैं आप? 241 है सर. तो आप तो नंबर कुछ और बता रहे हैं वकील साहब हैं? अच्छा अरे सर इसमें IA2 में काइंडली विषय. IA2 बताइए. मैं उपरोक्त विषय पर आपके द्वारा भेजी गई पत्र संख्या 8/2024 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है. राष्ट्रीय भेजे गए पत्र संख्या दिनांक 23/9/2020 के माध्यम से छात्रा कुमारी के दस्तावेजों के फर्जी होने की सत्यापन रिपोर्ट आपको. ठीक है खत्म हो गया आपका केस. रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 आपका तो फर्जी है. पूरा फर्जी साबित हो गया. तो बस लिखिएगा इन व्यू दिस पिटीशन इज फाइल्ड. माय लॉर्ड. हाँ बताइए ना. माय लॉर्ड मैं अपनी रिस्पॉन्डेंट 5 की तरफ से हूँ. हाँ. अभी वकालतनामा पेश हुआ है मंडे को, तो प्लीज मुझको 2 वीक का टाइम चाहिए था. अरे जब पूरी बहस हो गई तब आप बता रहे हैं. इसके पहले कब? ये तो 2019 का मैटर है. इसके पहले कौन थे वकील साहब? तीसरे काउंसिल है मिलाड. तीसरे काउंसिल चेंज हुए. तीसरे काउंसिल बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा वकील साहब. चलिए अभी आज 3 क्या कर सकते. कोई बात नहीं. वकालतनामे के साथ ही फाइल पढ़ लेनी चाहिए थी आपको. 3 कोई बात नहीं. चलिए आपका लिखा देंगे. रिक्वेस्ट लिखा के खारिज कर रहे हैं. रिक्वेस्ट प्लीज 2 वीक का टाइम दीजिए. कोई बात नहीं. चलिए लिखिएगा दिस पिटीशन इज फाइल्ड. being aggrieved of order dated 21/10/2019 annexure P6 passed by the Commissioner Sagar Division Sagar
Annexure P10 भी है गलत। हैं? P10 भी है, बाद में उनको अपॉइंट कर दिया था। एक सेकंड रुक जाइए। Whereby the commissioner on an appeal filed by the respondent number 5 Anjali, wife of Veer Singh Yadav, has held the private respondent to be eligible for the post of आंगनवाड़ी कार्यकर्ता after recording a finding that respondent number 5 had passed high school and higher secondary examination in the year 2010 and 12 respectively from National Open School, Government of India. Next para. It is submitted that these certificates are forged and now, on request of this court, verification report has been filed by the state authorities along with their compliance report IA 2412/2024 and closing therewith annexure IA2, in which the Deputy Director within bracket evaluation of the National National Institute of Open Schooling. Institute of Open Schooling has informed the project officer that the mark sheet of Kumari Anjali Yadav, wide roll number 17008160 990 and 1700192703 for class 10th and 12th are forged mark sheets. Full stop. Therefore, it is apparent that the Commissioner Sagar, while passing impugned order, failed to appreciate the correct facts and has been swayed by other additional commissioner by other considerations than the matter of merit and has issued an order in favor of private respondent. Therefore, that order of appointment, that order of passed in appeal being cryptic and contrary to the fact that private respondent was not eligible to hold the post, and as she was, her educational qualification certificates were forged and fictitious, order of appointment annexure P10 issued in her favor is hereby quashed. 15/11/2019. 15/11/19 is hereby quashed. Respondents are directed to proceed in accordance with law. 38.1 में क्या है? इसी का कंटेम्प्ट था, जिस दिन हमको स्टेटस को मिला था सेम डे अपॉइंटमेंट ऑर्डर। In view of the orders passed in WP 24099/19, Shri Khatka does not press for the contempt proceedings. Accordingly, they are dismissed as withdrawn. Number 77. The man Costa. This petition is also related to the appointment of Anganwadi Karyakarta, my lord. My lord, by annexure P1, the advertisement was issued for the post of रिकॉर्ड है आपके पास में? लिखिएगा। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। सुशील कुमार शर्मा। सुशील कुमार शर्मा for the petitioner. Shri Piyush Bhatnagar for the respondents. He is requested to call for the record of the appointment to the post of आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कहाँ का? आंगनवाड़ी केंद्र धुर्रा। आंगनवाड़ी केंद्र धुर्रा विलेज एंड तहसील डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी list after holy vacation. Any week commencing. List in the week commencing 22 April 2024. Number 83. क्या मैटर है सर? This matter relates to a departmental inquiry
that the penalty of dismissal was imposed. है रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट इंक्वायरी का है कहाँ है तो ऑफिस में कौन जाएगा चलिए सुनेंगे इसको लिखिएगा श्री केसी गिल्डियाल लर्नेड सीनियर एडवोकेट assisted by Shri Veer Kumar, Aditya Veer Singh. Pleadings are complete. Record is in the AG office. It may be called for. List for final hearing in the week commencing 13 May 2024. Number 104. My lord, by way of this petition, the petitioners are challenging the advertisement, my lord, and except P2, my lord. P1 28/2/24, whereby, my lord, the Uच्च माध्यमिक शिक्षक were debarred from participating in the permitted to take part in the recruitment process, but the present petitioners who are working as Uच्च माध्यमिक शिक्षक were debarred from participating in the same post, my lord. उच्च माध्यमिक शिक्षक have been debarred from participating in the matter of selection and appointment to the post of district project coordinator. Will stop issue notice to the respondents. Notice is waived by Shri Manas Mani Verma. For the respondents, he may seek instructions and file reply list in the week commencing 15 April 2024. My lord, interim may be granted, my lord. The coordinate branches has granted interim. क्या interim दे दिया? दिया परमिट परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी। परीक्षा कब है? तारीख क्या परीक्षा की? 13 तारीख है सर। 13/3/24। कहाँ है बताइए? ये एनेक्टेड P1 28/2/24 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि पात्र अभ्यर्थियों की राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा लिखित परीक्षा दिनांक 13/3/24 को एवं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 13/3/24 को होगा। With a view to maintain parity with order passed by a coordinate bench on 6/3/24 in WP 24441/23, it is directed that provisionally petitioners will be allowed to participate in the exam, but their result will not be declared and will be subject to the outcome of this petition. Obliged. List along with इसी के साथ लगा दीजिए। चलिए। Number 105. बताइएगा। Allot annexure P1 page 11 is under challenge. By which the Malot petitioner had attached from Malot Nagarpalika Parishad Dindori to Malot Jila Nirvachan Karyalay by the collector. I am the employee of Malot Municipal Council, Malot. कहाँ प्रावधान है? Malot कि म्युनिसिपल काउंसिल के एम्प्लॉय को Malot में appreciate page number 16 annexure P5. आपको इलेक्शन का काम करने के लिए ऐसा कहीं नहीं this is Malot this is stigmatic order. Some councillors have made complaint. That complaint is on record. अच्छा and this is stigmatic order, Malot. बताइएगा किस प्रावधान में अटैच किया है आपने? हाँ ले लीजिए। श्री Manas Mani Verma seeks praise for time to seek instructions that how an stigmatic order could have been passed by the collector Dindori attaching the petitioner, which according to the petitioner has been passed at the instance of some councillors of the Nagar Parishad Dindori. Full stop. Let instructions be taken. List on 12 March 2024, top of the list. Number 106. Lord, I'm requesting. तो सुबह क्यों नहीं मेंशन किया था आपने? Lord, I thought it will come. Your Lordship, I am making a request for item number 108. It was listed before the Honorable Court to number 4, Lordship, today itself. And it is identical to 106. ठीक है तो 108 भी ले लीजिए। और आपका कौन सा बता रहे हैं? 23. 109 तो अभी आया नहीं हमारे पास में। अच्छा एडिशनल लिस्ट आ गया। चलिए फिर एक काम करते हैं, पहले 107 सुन लेते हैं, वो अलग है, उसके बाद में सब इकट्ठा सुनते हैं। 107 पहले पुकार लीजिए फिर। नंबर 107
That's today it was listed my application app. I application for intervention and application for the temporary intervention. क्या है, क्या मैटर क्या है? My lord direct to the state government to remove the enforcement within 7 days and submit the report on the 11th of March. जी जी Last meanwhile, so by implementing answer 5/3/2024 last. जी Respondent passed the order removing the enforcement, removing the construction within 2 days. जी And notice has been issued on 5/3/2024. ठीक है, फिर आप अपना टाइटल बता दीजिए बस। टाइटल बता दीजिए ना, संपत्ति का टाइटल बता दीजिए। कि आपका एंक्रोचमेंट नहीं है, आपका टाइटल है उस संपत्ति के ऊपर, यही बिंदु है ना? बिंदु ये है सर कि इनने अपनी प्रॉपर्टी से आगे जाके जो सरकारी जमीन है उस पे कब्जा किया। हाँ वही तो, उसी का तो टाइटल पूछ रहे हैं। जी जी सबसे पहले एक मिनट सर आपको इम्प्यून ऑर्डर देखना है ना, तो उसके हाँ इम्प्यून ऑर्डर एनेक्चर I1 I1 क्या है? I1 अच्छा हाँ पांच इसमें से ये देखें, अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 4/3/2024 के परिपालन में हाँ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया हाँ एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि 2 दिवस के अंदर तो आप पढ़ रहे हैं आप, ये IA1 में तो नहीं है ये सब? पेज नंबर 8 पर अच्छा नीचे सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि 2 दिवस के अंदर उक्त आदमी को खाली न्यायालय तहसीलदार चंदिया की जानकारी सुनिश्चित करें ताकि उक्त आर्जी नंबर 100 में किया गया तो हटाया जाए, जगह खाली न करने पर बलपूर्वक उस कर्म हटाने जाने की कार्रवाई की जाए। जी सबसे पहला ग्रीवांस ये लेख रहे हैं कि 248 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। 248 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है, इट मींस पहले आप हमको शोकाज नोटिस देंगे, ये डायरेक्ट छोड़िए सब बातों को, अब तो आप ये बता दीजिए वकील साहब कि आपका इस सरकारी भूमि पे टाइटल कहाँ है? हमने सेल डीड लगाई सर। सेल डीड में ये सरकारी जमीन भी है आपके हिस्से? हमारी अपनी ये सर सरकारी इसमें क्लैरिफाई कर देते हैं कि आपकी जो जमीन है उसका नहीं हटाया जाएगा बस। इसमें भी सर इन्होंने 2 रजिस्ट्रियां लगाई हैं सर। 2 लोगों की हैं। हाँ बाकी जो पहली रजिस्ट्री है वो तो चंदिया की है और जो दूसरी रजिस्ट्री है वो मुड़वारा की लगा दी है इन्होंने। अब वो मुड़वारा में कोई जमीन है जिसका तो हटाया नहीं जा रहा अतिक्रमण। चंदिया का इशू है, चंदिया का इशू है सर। मैं 4/3 का ऑर्डर के बारे में बता दूं सर, आपका जो 4/3 का ऑर्डर। हाँ पढ़िएगा, 4/3 का ऑर्डर पढ़िएगा सर, इसी में मैंने कोड भी कर दिया, इसी आईए के साथ। हाँ पढ़िएगा। Learned counsel for the petitioner submit that the physical determination has already been taken place and report dated 29/9/23 की रिपोर्ट कहाँ है? ये है सर एनेक्चर। वो एनेक्शन नहीं सर, ये क्योंकि डिस्पोजल के बाद इन्होंने बनाया है तो ये हमने सर्टिफाइड कॉपी निकाली हुई थी। इसमें सेकंड पेज पे देखेंगे आप सर, इसमें हाँ इसमें सेकंड पेज पे देखेंगे तो ये 29/9/2023 का इसी ऑर्डर को लॉर्डशिप ने रेफर किया है। उपरोक्त लेख है कि ग्राम चंदिया सो खसरा नंबर 2139 रकबा हेक्टेयर शासकीय रास्ता का सीमांकन आवेदक व उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष किया गया। खसरा नंबर 2138 1 के अंश रकबा इतने वर्ग में 50 वर्ष से रास्ता प्रचलित है जो वर्तमान में सीसी रोड है। खसरा नंबर 2139 जो नक्शे व खसरे में शासकीय रास्ता अंकित है, जिसमें 1 कृष्ण कुमार, 2 अब्दुल हसन, 3 कदीर कासिम, 4 फिरोज, 5 धानु, 6 गिरीश चंद, 7 शिव कुमार ने पक्की दुकान सभी निवासी साके चंदिया का अनाधिकृत कब्जा पाया गया। ये सरकारी जमीन है 2139। इन्होंने क्या रास्ते पे कब्जा कर लिया और रास्ते को गवर्नमेंट ने हमारी जमीन पे बना दिया, इसलिए हम पिटीशन में आए थे। सर ये जो रिपोर्ट पास हुई है 29/9/2023 की, इसका नोटिस हमको नहीं दिया गया। यहाँ पे लॉर्डशिप यहाँ पे इशू ये है कि जो उसके पीछे पंचनामा है सब 3रे 4थे पन्ने पे, जिसमें इनके साइन है। किसके साइन है बता दीजिए। ये देखिए, ये जो है इसमें साइन है रामश्री भवारी सत्यदेव कोटवार। इसके किसी के साइन नहीं है। कहाँ है लोग? हाँ इसमें लिखा है सर, अतिक्रामक जन ने हस्ताक्षर करने से इनकार किए। दे वर प्रेजेंट देयर, दे रिफ्यूज टू साइन। जी ठीक। हाँ 4 तारीख 1 मिनट एक करके, इतना अति उत्साह से काम नहीं होगा कुछ भी। जी बताइए, कहाँ नोटिस कहाँ है इनके? स्टेट अब ऐसे ये जो है सूचना पत्र, सूचना पत्र 20/9/23 का है? उसके पहले लगा है सर सूचना पत्र जी। इनसे रिकॉर्ड बुला लीजिए, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा इनको सूचना मिली नहीं मिली। हाँ ठीक है। लेट रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस डेटेड 20/9/2023 बी कॉल्ड फॉर श्री। आप आ रहे हैं? कौन आ रहा है? हाँ
हाँ हाँ फिर ये मैं समझती हूँ। कहाँ लिखा है हमने ऐसा? कहाँ लिखा है जो आप बता रहे हैं? कहाँ लिखा है? कहाँ है? किस तारीख का है बताइए? दैट इज नहीं, इशू यहाँ दूसरा है। यह है कि आपने इन लोगों को, अच्छा इसमें है तो नोटिस में तो लिखा सभी सूचनाकर्ता ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। सब थे वहां पे, उपस्थित थे, उनकी इन्हीं की नपाई हो रही थी जगह की। सीधी ऑर्डर चलिए, हाँ बताइए। इसमें सर 4 तारीख को तो महिला ऑर्डर पेश किया है। हाँ। उसके पहले सर 2 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको उस ऑर्डर को मॉडिफिकेशन के लिए आइए फाइल किया जाता है। हाँ। आइए 4/3/2024 को है सर। 4/3 आइए सर, ये 2 मार्च 2024 को पेश किया। आइए नंबर बताइएगा वकील साहब। चलिए फिर क्या हुआ? उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ। उसमें ये सरकार का स्टैंड ये है कि सर चूंकि प्रॉपर जो डिमार्केशन प्रॉपर नहीं हो पाया है। कहाँ लिख रही है सरकार ऐसा? सर ये सर इनके पूरे लेटर लगे सर, ये आइए के साथ देखिए। एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सोनल को डेटेड 29/2023। इसकी रिलीफ देख रहे हैं सर, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं खुद नोटिफिकेशन चाहा था जो। हाँ क्या? दे आर पेड द सोनल रिपोर्ट में काइंडली प्लीज टू मॉडिफाई द ऑर्डर डेटेड 29/2023 passed in WP number and further be pleased to grant the permission to the answering respondent to conduct the demarcation in the said area. ठीक हर्ड ऑन आइए। और ये जो है सर, ये जो हमने 29/9/23 को दिया था 7/24 an application filed on behalf of the state government duly supported with an affidavit of one Shri Kartavya Agarwal, son of Shri Piyush Agarwal, in charge Tehsildar Tehsil Chandiya, saying that respondents be allowed to carry out demarcation of the area by manual system within bracket Zareeb, comma 3 days time is granted to carry out the My lord, that has already been carried out. जरीब से? जी 29/9 का जो है ना, 23 का जो आपको दिया है, ये जरीब से किया था। कहाँ मालूम पड़ेगा ये सर, ये देखिए आप इसके जो फर्स्ट पेज को पढ़ेंगे आप, पढ़िए। 6/10/23 का है। हाँ पढ़िए। ये 29/9 के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं वो कि परंतु परस्ते के द्वारा की जानकारी अनुसार वर्तमान में तहसील चंदिया अंदर टीएसएम मशीन खराब है, जिस कारण उक्त सीमांकन टीएसएम मशीन से नहीं किया जा पाया है। ये 1 मिनट में शुरू से पढ़ता हूँ। मिल गया जी। को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त सीमांकन की नाप जरीब से जाकर प्रतिवेदन दिया है। आपके कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं क्या यहाँ पर? नहीं तो फिर आप ये आवेदन क्यों लगाते हैं इस तरीके से? ये छुपा दिया इन्होंने, ये इन्होंने पेश नहीं किया। ये तहसील एजी साहब से पूछते हैं सर क्या बात है ये? सरकार के अन्यत्र बहुत सारे इंटरेस्ट हैं क्या? आप सर इंचार्ज एप्लीकेशन लगा रहा है हमारे ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए कि जरीब से करने की अनुमति दी जाए, और आप पढ़िए इसको, जरीब से ऑलरेडी हो चुका है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देन अंडर नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि कॉन्ट्ररी टू रिकॉर्ड अगर आपके अधिकारी एप्लीकेशंस लगाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाए? ठीक, यस मिस्टर मानस मणि वर्मा, आप बताइए। ये कागज वापस करिएगा, वो तो देख लिया मैंने। मैं तो इस आवेदन के बारे में पूछ रहा हूं जो आपने आवेदन लगाया है, किसके? अरे भैया आपसे पूछ रहा हूं ये आवेदन किस आधार पे लगाया है आपने? ये आवेदन किस आधार पे लगाया है जिसमें आपने जरीब से सीमांकन करने की अनुमति मांगी है, जबकि आप खुद 6/10/23 को लिख रहे हैं कि सीमांकन जरीब से हो चुका है? ये आपके कर्तव्य अग्रवाल जो हैं इनको क्यों नहीं कंटेम्प्ट में बुला लिया जाए यहाँ पर? वो तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, प्लीज डोंट ट्राई टू मिसलीड। आई एम आस्किंग यू डायरेक्टली दैट दिस एप्लीकेशन filed by you 3217/24 which bears a date of 2nd March 24 filed by your in charge Tehsildar seeking permission of the court to permit him to carry out demarcation with a Zareeb
how this application is maintainable when demarcation with Zarif was already carried out and there is a report dated 6/10/2023. लिखिएगा इसमें, बुलवा लेते हैं अभी. नहीं अभी आप उनको आने दीजिए, उनको बुलवा लीजिए मंडे की सुबह. लिखिएगा. And I'll ask the collector to take action against this man. जी. क्या लिखा था? तो उसके लिए मेरी प्रार्थना उसके बाद PSM से नहीं होता फॉर मॉडिफिकेशन. नहीं समझिए तो आप जितने बता रहे हैं वैसा है नहीं. 6/10 को ही आपके तहसीलदार लिख रहे हैं. पढ़ता हूं मैं, आपके लिए पढ़ता हूं. नहीं तो फिर जब ये हो गया सीमांकन जरीब से, तो ये दोबारा सीमांकन के लिए क्यों लिख रहे हैं? व्हाई इज ट्राइंग टू मिस. छोड़िए, तो इसमें तो प्रेयर तो जरीब से कर रहे हैं, जरीब से ऑलरेडी हो चुका. लिखिए, अब आप सुनिएगा, ऑर्डर सुनिएगा, लिखिएगा. पिटिशनर, इनके सबके नाम डाल लीजिएगा. रिस्पोंडेंट काउंसिल श्री उपाध्याय places reliance on IA 3217 of 24 filed by one Shri Kartavya Agarwal, son of Shri Piyush Agarwal, in charge Tehsildar Tehsil Chandiya, District Umaria, seeking permission of this court to modify the order dated 29/8/23 passed in WP 17864/2022 and further grant permission to the answering respondent to conduct the demarcation of the said area by manual system within bracket Zarib bracket close, and be further pleased to grant appropriate time for the same, comma, in view of the aforesaid submissions in the interest of justice. Next para. After placing lot of emphasis on the said application filed on behalf of the state government, comma, Shri D.K. Upadhyay, appearing for the intervener, submits that neither demarcation has taken place with Zarib, comma, in this very application it is mentioned that because of several obstructions, demarcation with TSM machine is not possible, and without carrying out any demarcation with Zaribs, that is physical demarcation, their encroachments are sought to be removed, for which notices have been issued to them to giving them 2 days time to remove their encroachment. Next para. Shri Upadhyay, drawing attention of this court to the report of the Tehsildar Chandiya District Umaria dated bearing number 67/Tehsil addressed to the Superintendent of Land Records District Umaria, has pointed out that since there were orders of the High Court to carry out demarcations as were passed on 29/8/2023 in WP 17864/22, comma, demarcation team was constituted on 14/9/2023. This team, under the leadership of Revenue Inspector, had carried out demarcation and has presented report saying that the demarcation was carried out with Zarib and report has been filed. Full stop. Demarcation which was carried out by the Zarib is available on record. Full stop. Notice was given by the concerned Revenue Inspector on 20/9/2023, where there is a note that
the addressees had refused to accept the notice. It is signed by one Kotwar and another person, full stop. Thereafter, Panchnama was drawn on 27/9/2023, in which it is mentioned that encroachers refused to sign, full stop. Thus, it is evident that once encroachment was identified, demarcation was carried out with Zarib, then the in-charge Tehsildar Kartavya Agrawal was not justified in filing IA 3217 of 24, full stop. It appears that, prima facie appears that Shri Kartavya Agrawal had some other motives and he was acting in collusion with the encroachers by filing this IA, full stop. Issue notice to the said Kartavya Agrawal, in charge Tehsildar, through Collector Umaria, to show cause that why a case be not registered against him for the dereliction of duty and for willful disobedience of the orders of this court, and also the matter be not referred to the Lokayukt for his acting in connivance with the encroachers by filing an application having no substance and contrary to the record, full stop. Notice is be served through Shri Manas Verma, who will accept the notice and serve it through collector on Shri Kartavya Agrawal, who shall remain personally present before this court on 20 March 2024. हैं? वो तो उसको तो होने दीजिए, वो उनकी उपस्थिति के लिए आपका एनक्रोचमेंट. As far as intervention application is concerned, in view of the above discussion, no indulgence can be shown at the instance of the said encroachers, and intervention application fails and is dismissed. Document इसको रिकॉर्ड पे ले लीजिएगा. Lordship, there is one application on behalf of the Feroz Lordship. उसको भी उसे इनका बिना. Kindly appreciate the fact that the Ramkant Barri Lordship, who filed the original petition Lordship, he is not come with the clean hand Lordship. ठीक है. Initially, what is happened to वहाँ पे एक सरकारी रोड है जो पिछले 50 साल पहले से वो इनकी जमीन से निकला हुआ. इनका कहना है कि वो रोड वहाँ से नहीं होगा जहाँ पर हमारी दुकान है वहाँ से. और काइंडली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट कि इसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज बार-बार बोल रही कि जो मैप है वो करेक्ट मैप्स नहीं है और इनकरेक्ट मैप है और इस कारण से डिमार्केशन नहीं किया जा रहा है लॉर्डशिप. और जो दुकानें जो पिछले 50 साल कहाँ लिखा है इस डिमार्केशन रिपोर्ट में? यस लॉर्डशिप, ये देखिए ना आप, इसमें क्या लिखा है? अच्छा मैं इसमें पढ़ देता हूँ. ये तहसीलदार का इसमें आदेश है. राजेश तहसीलदार तो आपसे मिला हुआ है, उसको तो बुलाया है कंटेम्प्ट का नोटिस देकर. मगर जो दुकानें पिछले 50 सालों से, नाम भले ही कर्तव्य है लेकिन वो कर्तव्यस्थ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी. लॉर्डशिप काइंडली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट जो इसमें पिटिशनर आए हुए हैं वो सिर्फ अपनी जमीन से जो एक सरकारी रोड पिछले 50 साल पहले हमें नहीं मालूम, उसको हटाने के लिए जो भी एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाना है. आई नो ओनली दिस मच, दैट्स ऑल. नाउ सॉरी, नाउ नो मोर सबमिशंस. ये केस जब आएगा तब सुनेंगे. चलिए हट जाने दीजिए उसको, हट जाने दीजिए. 50 साल पुरानी दुकान है लॉर्डशिप, वो जो है 248 तो देखना है. ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है, नहीं देखेंगे भाई, आज नहीं देख पाएंगे, दूसरा केस सुनना है. चलिए 11 तक का इसमें समय दे दें. 248 में नहीं हटा सकते. There will be no stay on the. इसीलिए स्टे मांगने हमने स्टे की एप्लीकेशन लगाई. हाँ ठीक है, नहीं दे पाएंगे स्टे. नोटिस है उसमें हमारे कहीं पे भी साइन नहीं है ना हमारे घर पे सर्विस करी. ठीक है. नोटिस आर नॉट प्रॉपर्ली सर्व्ड. अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग में भी गिवन लॉर्डशिप बिफोर. एक मिनट देख रहे हैं. 248 क्या बोल रहा है? 248 बोल रहा है बिंद क्षेत्र में अप्रैल 1995 के प्रथम दिन के पूर्व निर्मित भवनों या निर्माण कारण द्वारा किए गए. अच्छा लिखिएगा, लिस्ट ऑन 11 मार्च फॉर फाइलिंग रिपोर्ट ऑफ रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट, एंड जो डेट दी थी मैंने फॉर अपीयरेंस ऑफ श्री कर्तव्य अग्रवाल टू आंसर द क्वेरीज ऑफ दिस कोर्ट. सॉरी, चलिए 106 नंबर. हमारा जवाब भी कंसीडर नहीं करेंगे. हाँ ठीक है, मत, जरूरत नहीं है. चलिए जी. हाँ प्लीज प्लीज, यू आर फ्री टू आर्ग्यू एज यू लाइक. With the lordship time permission, I refer facts from WP number 3141. Just a minute. 3141.
कौन से नंबर पे लगी है ये? 106.1. 106.2. 1.2. क्या नंबर बताया आपने? WP नंबर 3141. 106 के वंश में? यस जी, 106.1. वो तो 1109. ये क्या 31 और यहाँ क्या दिखा रहा है ये? नहीं, एक मिनट आपसे कुछ नहीं कह रहे, इनको समझना चाह रहा है. ऐसा क्यों दिखाता? जी जी बताइएगा. 3141. यस जी. जी. तीन सवाल हैं. एक कुश्ती महासंघ, एक विलियम बेंटिक और तीसरा जो है वो एनवायरनमेंट का. ग्रीन मफलर भी है. टोटल 5 है मैडम. टोटल 5 है? यस मैडम. अच्छा ठीक है, चलिए एजी साहब को बताने दीजिए. Kind permission, I'll come to that issue also. जी. As per your lordship direction, the Secretary of Madhya Pradesh Public Service Commission जी. is present in the court along with the desired record. जी. So, but there are few important things, हाँ बताइए ना. I wish to place it before your lordship. जी. But this is the writ petition. My lord, may kindly see page 3, my lord, the cause title. No person is impeded in personal capacity. ठीक है. Now, my lord, no allegation of malafide is levied in the whole writ petition. And my lord, may kindly see what is the foundation of filing these writ petitions. The petitioner is raising ground that had he been awarded the marks by adding the marks of the questions as stated above, he would have been declared as eligible. Now, my lord, if we go through with the clause of grounds, all presumptions are there. Now, this is the foundation which is there, my lord, seeking writ of mandamus by the Honorable Court. And with this backdrop, my lord, in page 12 of the writ petition, final reliefs are claimed. Yes. To issue a writ in the nature of mandamus by directing the respondent to amend the final model answer key contained in annexure P1 by showing correct answer. And the reliefs are there. Now, my lord, almost all writ petitions, my lord, are similarly worded. I'll not go to the extent of saying that they are copy paste and they similarly worded identical. ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ईज है, एक ने कंप्यूटर पे बनाया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में आइडेंटिकल पीस निकाल दिए, क्या नुकसान है? अब साहब बस इसके इस बैकड्रॉप से कुछ आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट. हाँ रखिए ना. अब सर मैं इलेक्शन P3 पे आपका ध्यान आता है. P3, yes, P3. Page 21. Yes. ये है साहब एडवर्टीजमेंट which was issued on 5th of September 2020. एक मिनट खुल जाइए. जी. 5th September. ये है साहब एडवर्टीजमेंट है सर 5/9/2023. हाँ. एडवर्टीजमेंट ऑन 5/9/2023. जी. And this advertisement is relating to State's Civil Services Examination 2023. जी. जी. So the pattern of the examination is 3-stage examination. Initially, we conduct preliminary examination. So elementary, the less meritorious candidates, they are eliminated. So elimination round is there. The successful candidate go to the second round of examination, which we call mains, written examination. And then, the successful candidate, they are invited for personal interview. So pattern of examination is 3 stages examination.
and the initial two stages are elimination rounds. अच्छा, means is also elimination. Elimination अच्छा, rounds अच्छा. based on the cutoff. Now, my lord, for the purposes of declaring, my lord, how we will conduct the examination, what is the scheme of the examination, my lord, we make it very clear in the advertisement itself. So, my lord, almost all the candidates are well aware that what is the pattern of the examination, what are the conditions, and what are the norms which are to be taken care of. Now, my lord, as per the norms which are made clear in the advertisement, my lord, may kindly permit me to take your lordship to page 26. 20? Page 26. जी. I invite your lordship's kind attention to clause 5. Yes. परीक्षा योजना. कहाँ लिखा है clause 5? साथ clause 5 26 पेज पे आपने 26 परीक्षा योजना. यस. इसमें साथ परीक्षा की योजना. जी. इसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्लॉज 2 पर. जी. अब मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रारंभिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट इतने पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. दिस इज इम्पोर्टेंट. इस अवधि के पश्चात या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाए. Is it your case that they were received after the due date? या आपका केस है क्या? I respectfully submitting. The moment we publish provisional answer key. 7 दिन में आपत्ति ठीक है. 7 days time. तो इन्होंने 7 दिन में नहीं की है आपत्ति, ऐसा है क्या? बहुत सारों ने नहीं किया, इक्का दुक्का ने किया. तो जिन्होंने नहीं किया अपन उनको बाहर कर देते हैं, बाकी जिन्होंने किया उनको बता दीजिए. जिन्होंने किया, मेरा एक निवेदन था. नहीं तो बता देना उसको, यही इसको कंक्लूड कर देते हैं इसको. At least so that many number of people will be set to rest जिन्होंने नहीं की 7 दिन में आपत्ति, उनके नंबर बता दीजिए. मैं सर एक और जी सर एक ही इम्पोर्टेंट. फिर मैं आ जाऊँ, फिर आप सर नीचे फिर थोड़ा सा पढ़ूंगा. प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा. समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्रवाई की जाएगी. और ये ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधानिक उत्तर सूची में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधानिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा. प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा. ऐसे प्रश्न अक्सर ये इसका 5वां रेलेवेंट में आता जी. अब ये भी बहुत रेलेवेंट है. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट इतना पर प्रकाशित की जाएगी. अंतिम उत्तर कुंजी के नाउ दिस इज रेलेवेंट एंड आई एम सप्लाइंग एम्फेसिस टू इट. अंतिम उत्तर कुंजी की प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा. विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा. सो नाउ माय लॉर्ड, आई स्टॉप रेफरिंग टू दिस advertisement. My lord is well aware of this fact. My lord, law is settled on this point. My lord, when the conditions are clearly mentioned in the act, they knew it very well that the moment, my lord, they find some discrepancy in the provisional answer key, they have the remedy to file representation within a period of 7 days. Now, my lord, there are 2 categories. One category, first category is, my lord, of candidates who filed the representation, and another category who have not filed any representation. So, both these categories are taken care of by clause 5.5, in which it is mentioned विषय विशेषज्ञ समिति जो है उसका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा. कट ऑफ डेट के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी. ठीक है. अब साहब ये जब कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, उन्होंने पढ़ा, इसमें एक आग्रह भी किया गया है कि आप कृपया करके इस एडवर्टाइजमेंट की कंडिकाओं को सावधानी पूर्वक पढ़ें. तो एक अपील की गई है.
वो क्योंकि बंधनकारी हो। अब सर इसमें लॉ सेटल्ड कि सर अगर मान लीजिए ये कंडीशन है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जो फाइनल ओपिनियन जिसके बेस में फाइनल आंसर की पब्लिश की गई है उसको मान्य करना होगा इन कैंडिडेट्स को। इस कंडीशन को किसी ने चैलेंज जी चैलेंज कर भी नहीं सकते सर। सुप्रीम कोर्ट ने सर अशोक कुमार के केस में कहा कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल वुड ऑपरेट जी बिकॉज यू हैव नो प्रॉब्लम विद दिस कंडीशन. You appeared in the examination. The moment you declared unsuccessful, now you turned back and started scrutiny of the advertisement. And then raising litigation before the Honorable Court, challenging some condition, which they in fact cannot challenge at this stage. This is my respectful submission, my lord. Now you, my lord, there are few judgments. नहीं, पहले फैक्ट्स पे पूरा कर लें, पहले फैक्ट्स पे पूरा कर लें। जो पिछली बार कागज दिया गया था उसमें कमेटी कहाँ है, हमने इसीलिए इनको सेक्रेटरी साहब को बुलाया था। कमेटी कहाँ है पहले वो बता दें, कमेटी का कहाँ गठन हुआ। इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, आई विल नॉट शो इट टू देम, ठीक है। हाँ, कमेटी का गठन बताइए, कमेटी का गठन हुआ इस नियम के अनुसार और उस कमेटी ने क्या विचार किया। ये जो पिछली बार दिया था ये इससे अलग है क्या? आपकी क्वेरी आंसर करने के लिए ये आज का रिकॉर्ड है। नहीं, उस दिन जो दिया था आपने उसको हमने वापस सील करा दिया था। सर क्या हो रहा है सर, एक मैं निवेदन कर रहा हूँ जी, जैसे कई सारे आंसर्स में आपत्ति आती जी, तो सर क्या होता है मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस में आपत्ति आई जी, सर कुछ कोर्ट में आ गए पिटीशन पे, कुछ नहीं आए जी। मैं सर आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ जिससे कुछ डाउट क्रिएट हुआ था लास्ट डेट में। तो मान लीजिए 20 क्वेश्चंस में आपत्ति, तो उससे रिलेटेड जो ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है, जो भी होता है वो सब लगाकर सर इसका कंपाइलेशन हो गया मान लीजिए। उसमें से जब कोर्ट ने मांगा कोई क्वेश्चन जो बीच का रहा उसका रिकॉर्ड ला, तो उसका रेलेवेंट का इनने फोटोकॉपी करके। नहीं, आप रेलेवेंट रिकॉर्ड तो आज भी दे सकते, मेरा सवाल समझिए आप। सर उसमें साइन नहीं था। नहीं, वो नहीं, मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने उस दिन भी पूछा था जिस एक कागज में साइन था। आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द नेम, आपके ऑफिसर ने भी आके बोला था देयर इज अ जजमेंट एंड आई हैव कोटेड इट। कमेटी का गठन इसमें लिखा है विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा, तो वो विशेषज्ञ समिति का गठन का क्या प्रावधान है और उस कमेटी ने क्या कंसीडर किया उतना बता दीजिए। उसके बाद आपका अशोक कुमार का जजमेंट लागू होगा। उतना ही पूछने के लिए बुलाया था इनको, सेक्रेटरी साहब को। बारे में मैंने आपको निवेदन किया है, मैंने पूरा एग्जामिनेशन की योजना नहीं, योजना में ही तो पढ़ रहा हूँ मैं, आपके एडवर्टाइजमेंट में पढ़ रहा हूँ पेज 27 पर। वही मैं बोल रहा हूँ सर, जो आप रूल्स बोल रहे हैं सर, आर्टिकल 309 पे है रिक्रूटमेंट को रेगुलेट करने के लिए पीएससी चाहे वो यूनियन की हो चाहे स्टेट की हो, दे कैन फॉर्मुलेट देयर ओन नॉर्म्स। तो वेयर आर दोस नॉर्म्स? नॉर्म्स आर देयर इन द एडवर्टाइजमेंट। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाई यू आर ट्राइंग टू डाइग्रेस this clause on page 27 annexure P3, please read it again. Read clause 5. हाँ ठीक है ना, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, समिति कहाँ, समिति का गठन कहाँ है? क्योंकि उसमें एक सिंगल आदमी का था जो आपने पिछली बार दिखाया था। दिखाइए, हाँ खोलिए ना। तो क्या हो रहा है कुछ एक इम्पोर्टेंट सर, मैं इसलिए यहाँ पर ये तो रिकॉर्ड है सर, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्किप द क्वेरी ऑफ द कोर्ट, बट सर व्हाट माय एंजाइटी इज जी, योर लॉर्डशिप में काइंडली, आई होप माय लॉर्ड योर लॉर्डशिप वुड सर्टेनली अप्रिशिएट जी द एंजाइटी ऑफ 31,000 फॉर्म्स जी which were submitted by the candidate जी, out of which my lord more than 1,71,000 candidates appeared in the preliminary exam. ठीक है, that is my lord, as many as 6,000 candidates they are waiting जी for their opportunity to appear in the final examination जी। Hardly 100 to 150 petitioners are there my lord जी, before your lordship, having no basis and to file a petition my lord, they have I mean, they are taking help of their own imagination. नहीं, वो तो कोर्ट विल डिसाइड एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ योर राइट टू फाइल अपील, बट लेट अस अंडरस्टैंड दैट वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी। नहीं, डेफिनेटली पहले ये 5 में लिखा विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा, तो
ये समिति कितने लोगों की है, ये थोड़ा सा बता दे. I will not touch the names. Neither I'll read the names nor I'll ask him to read the names. I understand I just want to know how many persons committee was constituted. तो वो यूनिट वाइज होती है. कहाँ है उसका नियम, कहाँ है कमेटी बनाने के लिए? Where is the circular which permits you to formulate a specialist committee, विशेषज्ञ कमेटी? कोई आपने सामने बताया ना आर्टिकल 309 में यू कैन रेगुलेट योर ओन प्रोसीजर. तो प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए क्या निर्देश हैं आपके? कहाँ है वो नॉर्म्स कहाँ है? नॉर्म्स तो बता दीजिए. अरे भैया आपने अभी आपके वकील साहब ने बहस करी, इज अ सीनियर काउंसिल. आई हैव नोटेड डाउन दैट आर्ग्यूमेंट that under Article 309, PSC or UPSC is entitled to regulate its own procedure. Now, you must have formulated certain norms to regulate the procedure of constitution of an expert committee. What are the norms for constitution of an expert committee? हिंदी में बोलूं आपको, ये समझ में आ गया आपको? जी. तो मेरा एक निवेदन सर, आपकी बात समझ गया. आप आपस ये समिति के गठन से संबंधित और कोई आदेश या सर्कुलर इसके बारे में स्पेसिफिक क्वेरी कर. जी. मेरा निवेदन एक जी, मैंने अभी बताई विषय विशेषज्ञ समिति. एक और चीज साहब अप्रिशिएट किए गए, पीएससी जो है, चाहे वो पेपर सेटर्स हो, चाहे वैल्यूअर्स हो, चाहे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये उनके एम्प्लॉइज नहीं होते. हम लोग सर एक डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स जो होते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से सर, हम वी सर रिक्वेस्ट देम एंड टू ऑफर देयर सर्विसेज मानो जी द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. हाँ जी, ठीक है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है. वी आर थैंकफुल टू सच. नहीं, भाई हम भी हाई कोर्ट में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, हमें मालूम है कि उनकी ना तो हम गरिमा को कोई टच करना चाहते हैं, ना हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं. हम तो प्रक्रिया पूछ रहे हैं जिस प्रक्रिया के तहत आपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई. अरे भाई, circumventing the question will not help the PSC. So where is the norm? You argued. Had it been the case that I wanted to skip your lordship's question, I would really, why not make a very humble submission before your lordship that first it is to be tested whether these patients are maintainable before your. I asked you in the first place. I asked you in the first place कि जिन लोगों ने debate which we are having. No, we are not having an academic debate. You are required to point out that which one of the petitioners had not filed their objections within the prescribed time. So I said in the first place we'll throw them out. I insist your lordship, but this is not my duty. If the petitioners are requested to demonstrate before your lordship, so let them start. This is the first query which Honorable Court generally makes to the petitioner, that you make out a prima facie. So let them argue. Let them argue first. You started. No, you I started because your lordship has directed personal appearance of the officer. So that does not mean that the officer who has been asked to remain present will hijack the show and not curtail the right of the petitioners to argue. He can wait for his turn. Let the petitioners argue. I'll ask them to show their locus. Once they fail to show their locus, then lordship may kindly hear them. Yes. So, why I tried to assist this honorable court, because the final mains examinations are scheduled for 11th of I know that. For lot of work which is to be completed by the secretary. ठीक है. Their distribution of examination material to ensure. वो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम करता है कि सेक्रेटरी करता है? सेक्रेटरी की भी परमिशन लगेगी ना साहब. अच्छा. तो इसलिए मेरा निवेदन था, मैंने सोचा आपकी बातों को मैं ठीक है करूं. बहुत सारी चीजें जो साफ रखी नहीं गई कोर्ट. हाँ ठीक है, नहीं आपको राइट है, यू हैव अ राइट टू ऑडियंस, आपको सुना. लेकिन जो ये इशू है आपने जो रेस किया है, लोकस पहले इनका देख लें कि लोकस किसका है. चलिए एक एक करके चलिए. My lord, I will rely on two petitions, Your Lordship. जी. ये जो पिटीशन है 3141 जिससे एजी साहब ने बहस चालू करी है, उसमें कौन पिटीशनर के वकील है, वहां से शुरू करें. My lord, I am the counsel for the petitioner. हाँ, वहां से उसी को बेस बनाइए, उसी से शुरू करिए. My lord, there is one more petition I will rely, Lordship. जी. If my lord may permit. जी. My lord. My lord, in this WE 3141, Lordship, 3 questions were disputed, Your Lordship. जी. My lord, first. नहीं, पहले यहाँ से बताइए कि क्या आपने 7 दिवस के भीतर, जैसा एडवर्टीजमेंट में लिखा है, आपत्ति प्रस्तुत की थी कि नहीं की थी? I will reply this very. नहीं, you directly reply this. My lord, and all the counsel for the petitioner
come out first with this issue that किसने 7 दिवस के अंदर या जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है एडवर्टीजमेंट में उसमें आपत्ति प्रस्तुत की थी मॉडल आंसर के लिए. ठीक है, उनको सुनेंगे, बाकी को नहीं सुनेंगे. चलिए, तो वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिससे आपने आपत्ति प्रस्तुत की. रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, पहले डेट्स दीजिए. व्हेन वाज द रिजल्ट फॉर प्रीलिम एग्जाम वाज डिक्लेयर्ड? My lord, prelims was conducted on 17th of December, your lordship. 17th December prelims was conducted. Mr. Anshul Tiwari. 17th December prelims were conducted. Result कब डिक्लेयर हुआ? My lord, provisional answer key was issued, your lordship. जी. On 20th of December 2023. 20th December 23. That is annexure P2, your lordship. P2. जी. And final answer key was published on 18th of January 2024. नहीं, वो तो नहीं, इसके 7 दिन 20 तारीख को किया गया. मालूम. आपने 27 तारीख तक आपत्ति कर दी क्या? मालूम, इसमें मालूम 2 इशू हैं, लॉर्डशिप. There are 2 questions, your lordship, related for not pairing. Anshul Tiwari, you will not succeed like this. Sir. पहले मुझे ये बताइए, 20 तारीख को प्रोविजनल आंसर की लोड होने के बाद आपने अपनी आपत्ति किस तिथि को प्रस्तुत करी? Give me that date first. Then I'll come to the question. मतलब इसी क्वेरी का आंसर दूंगा मैं. मतलब प्रोविजनल आंसर की में आंसर सही दिया गया था पीएससी के द्वारा. ऑप्शन सी दिया था ग्रीन मफलर का और एकेएफआई का. एक सेकंड रुकिएगा, देखते हैं. P2 is the provisional answer. P2 is the provisional answer की मान लो. मतलब ग्रीन मफलर का क्वेश्चन है 28 सेट डी का. एक बार हाँ इधर आइए, ये क्या आता है? ये P2 में ये एरर क्यों आ रहा है? जी, पीडीएफ अपलोड. तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो कुछ क्या करेंगे हम? क्या केस की हियरिंग मुलतवी कर दें? फिजिकल फाइल दीजिएगा 106.1 की. इसमें लिखिएगा यहाँ पर, during the course of the arguments when petitioner counsel referred to annexure P2 in WP 3141, an error occurred while loading the document. Try reloading the page is the caption which is shown on the screen. Full stop. श्री इकबाल, आप किस पद पर हैं? Data entry operator submits that error is because of error in loading the page. Full stop. This is a serious issue. E-hearing is not supported due to the fault of the IT section of the High Court. Let this fact be notified to the Registrar General, who may take action and bring action taken report within 7 days. And place action taken report before this court within 7 days. P2 पढ़िएगा. हाँ, P2. My lord, kindly refer question 28, your lordship, set D का. Set. Page number 20 में, my lord, that is the provisional answer key, your lordship. Set D का. Question 28. 28, yes. My lord, वो मैंने क्वेश्चन भी लगाए, पेज नंबर 33 पे है, your lordship. एक सेकंड, पेज नंबर 33 पे. नहीं, 33 पे तो ठीक है, क्वेश्चन आपने लगाया होगा. मालूम, उसका हमने सही आंसर लगाया था. 28 का, 28 सेट डी का. मालूम. किस नंबर पे बताइए, क्योंकि ये तो उन्होंने तो हमें, हमारे लिए एक काम ये भी हो गया कि हम खोजें बैठ के. मालूम, पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन है वो. अरे भाई, क्वेश्चन से मतलब नहीं है. 28 इसका ऑप्शन सी दिया है. मालूम, हमने सी ऑप्शन टिक किया था. हाँ, और सी ऑप्शन दिया है. पेज 33. My lord, page 33. Green muffler is related to pollution of noise. ठीक है. उसके बाद इन्होंने किसको करेक्ट कर दिया? My lord, उसके बाद उसमें PSC in the final answer key has added another option as a noise air pollution also. एक सेकंड, 18 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट फाइनल आया है ना? My lord. 18 जनवरी. पेज नंबर 18 पे फाइनल आंसर की.
Question 28 of set D, provisional list shows option C, noise, as the correct answer. Later on 18 जनवरी, नॉइस के साथ क्या जोड़ दिया? एयर पोल्यूशन। एयर, बी और सी को इन्हें करेक्ट कर दिया लॉर्डशिप। एयर, ऑप्शन बी वाज एडेड। उससे आपको क्या प्रेजुडिस हुई? मतलब एज पर दी सोर्सेज लॉर्डशिप, मतलब सोर्सेज पे बाद में आएंगे। मतलब ठीक है, चलिएगा। अभी दूसरा बताइए। मतलब तो ये इसकी तो आप आपत्ति कर नहीं सकते थे क्योंकि ये सही आंसर यस मतलब। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए। मतलब सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, हेडक्वार्टर्स ऑफ एकेएफआई, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी, उसका पेज नंबर 34 में हमने क्वेश्चन को भी वो किया है। एक सेकंड, सेट डी में ही देख रहे हैं ना हम? मतलब सेट डी इसमें लॉर्डशिप मतलब प्रोविजनल आंसर की में इसमें जयपुर ने पहले टिक किया था। जयपुर वाज द करेक्ट आंसर व्हिच वाज गिवन बाय द एमपीपीएससी। जी, लेटर ऑन दे चेंज इट टू दिल्ली। यस लॉर्डशिप। जी, एक सेकंड, क्वेश्चन 63 ऑफ सेट डी, ये रीजनल आंसर एससी जयपुर, later on changed to Delhi। जी, इसका भी आप आपत्ति नहीं उठा सकते थे कि सही आंसर था। And my lord, for third question, petitioner has not raised any objection, your lordship. ठीक है, Within time, my lord. जी ठीक है, छोड़िए उसको। कौन से आप दोनों ने 106 एंड 106 सिंगल पिटिशनर, my lord. नहीं, एक और दो दोनों ने नहीं लिया ना ऑब्जेक्शन। 6 आपकी दो पिटीशन है ना, 106 एंड 106.1। my lord 106.1 में एक फैक्ट है थोड़ा, उसमें पिटिशन नंबर 1 ने आपत्ति ली है। my lord, I will show, my lord. In regard to question number this 7 also. my lord, in regard to 3 questions, your lordship, for deletion of 3 questions, your lordship. my lord, kindly refer, my lord, WP 5075. 5075 जी, इसमें तो आप अच्छा, हाँ क्या है इसमें? my lord, here my lord, petitioner has disputed 3 questions. इसमें तो दो ही क्वेश्चंस डिस्प्यूट किए ना, 106 और 106.1 में तो दो ही क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हैं। my lord, उनमें 2 हैं। इतना बताइए कट ऑफ कितना था इन दो, पहले इन दो पिटीशंस को डील कर लें, एक एक करके चलेंगे। कितना कट ऑफ था? मतलब 106 में कट ऑफ अलग अलग थोड़ा होगा भाई। मतलब अलग अलग कैटेगरीज कितने मालूम? हाँ, अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ बता दीजिए। मतलब आई हैव annexed that to your lordship. Annexure P5 is the cut-off list, your lordship. पेज नंबर 33. इस पिटीशन में my lord is referring to अभी आपने जो पिटीशन बताई 3141 my lord, cut-off list अनारक्षित ओपन में 158 पेज 31 पर my lord, पेज 31 पर 158 और ओबीसी के लिए 156। my lord, आप लोगों के कितने नंबर आए? my lord, in this petition, your lordship, the petitioner has scored 154 marks, your lordship. किसमें? In WP 3141 में किस कैटेगरी के हैं ये? my lord, he belongs to OBC category. OBC 154 my lord, 154 marks. जी ठीक है। और 5714 में
In 5714, Your Lordship, the petitioner number 1 has scored 156 marks. He belongs to unreserved category. And the cutoff was 158, Your Lordship. जी ठीक है जी और पिटिशन नंबर 2 Petition number 2 scored 156 marks, Your Lordship. He belongs to EWS category. उसका cutoff 158 है, Your Lordship. जी ठीक है ठीक जी ठीक है हाँ फिर क्या हुआ मतलब now I am referring to WP 5075 106.2, Your Lordship. जी With my Lord's permission. 10 5075 106.2. 5075 क्या खोलेगा My lord, I don't think, my lord. नहीं नहीं अभी तो सवाल संभव ही नहीं है तो वही वेडनेसडे को जाने है वो अपने आप आएगा अपने आप आएगा अपने आप आएगा ऑफ द लिस्ट कर दीजिए अपने आप आएगा 5075 चलिए हाँ बताइएगा My lord, in this petition, Your Lordship, petitioners are disputing 4 questions, Your Lordship. But petitioner number 1 has taken objection with regard to question number 87, 50, and 51 for set C, Your Lordship. My lord, kindly refer annexure P7, page 42. That is the set C, Your Lordship. जी आपने आपत्ति कितने दिन में प्रस्तुत की थी My lord, that was within a time, Your Lordship. At page number annexure P3, page number 25. P3 page 25 yes कहाँ है आपके My lord, 27/12 को आपत्ति वो की थी और पैसा भी इसका जमा कर दिया था इन्होंने. जी My lord, in that objection, Your Lordship, question number 51 is mentioned, Your Lordship, which petitioner is disputing. Question number 51 at serial number 1, Your Lordship, of the objection, online objection. जी At serial number 4. आप चार्ट बना लीजिए सब लोग मिलके कि कौन कौन से पिटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन है किस किस तारीख को आपने आपत्ति लगाई है अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ सुनेंगे उन्हीं को जिनकी आपत्ति समय अवधि के अंदर होगी देन वी विल हियर यू ठीक है इन द मीनवाइल आप जो है आपका जो नॉर्म्स हैं वो प्रस्तुत कर दीजिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की और ये रिपोर्ट एजी साहब के पास छोड़ दीजिए वो दिखा देंगे हमको ठीक है ना एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ठीक है तो नॉर्म्स बुलवा लीजिए और इनको जाने दीजिए और जो आपकी एक्सपर्ट कमेटी की जो भी सो कॉल्ड रिपोर्ट है उसको अपने पास रखिए वापस कर दीजिए विल नॉट कीप इट दोनों लिफाफे वापस कर दीजिए नहीं हमारा लिफाफा तो रहने दीजिए ये जो अभी था ना ये कहाँ रख दिया मेरे हाथ में क्या हाँ इस लिफाफे में वापस रखिए इनको वापस कर दीजिए देखिए आफ्टर हियरिंग arguments for some time हाँ Item number 20. हाँ We have not given any objection. We have not raised any objection. So, my lord, for petitioner number 3 and 4, I withdraw the petition. And my lord, आइटम नंबर 23 में लिखिएगा एक मिनट के लिए हाँ 1 and 2 they, my lord, as a in provisional answer key, the question answers was right here. ठीक है समझ गए आपकी बात लिखा देते हैं 23 में लिखिएगा श्री आयुष शर्मा raised for withdrawal of this petition for petitioner number 3 and 4 as they had not filed any objections to the model answer key which was uploaded on 20th December and as per the advertisement annexure P1 objections were required to be filed within 7 days full stop as petitioner number 3 and 4 had not raised any objection they have no locus and accordingly petition is dismissed qua petitioner number 3 and 4 next pair it is submitted by Shri Anshul Tiwari supported by Shri Ayush Sharma that for certain questions like question number
28 and 63 of set D, earlier options in the provisional answer sheet were given as option C, that is for the question 28 dealing with the question of green muffler is related to pollution of. In the provisional answer key, answer was shown as noise, which was filled by the petitioner. Later on, air was added while publishing the final answer key on 18th January. Similarly, for question number 63 of set D, which deals with where is the headquarters of Amateur Kabaddi Federation of India, in the provisional answer key, option was shown as option C, that is Jaipur. Later on, it was changed from Jaipur to Delhi, and which has caused prejudice to the petitioner. Full stop. This is the position in regard to WP number 5196/24, comma, WP number 3141/24 and 5714/24. Full stop. Next paragraph. Petitioners' counsel are requested to prepare a chart in regard to the questions to which they have an objection, clearly bifurcating as to whether the answers which were given in the provisional answer key, as was uploaded on this December, was modified subsequently, so to prevent them from furnishing their objections, as the answer key which was uploaded was such that petitioners were in agreement with it, and since the answer key was changed subsequently, they had no occasion to file objections, and those questions in regard to which they had raised objection as to the correctness of the option shown as the correct answer in the provisional answer sheet, which according to them and the material possessed by them is not the correct option. Full stop. Let this comparative chart be prepared by the petitioners. In the meanwhile, since Shri Prashant Singh, learned senior advocate, has appearing for the Public Service Commission along with आपका शुभ नाम बताइए. नहीं, वो तो आपका नाम तो आ जाएगा. along with श्री आदित्य पचौरी ऊपर डाल लीजिए. श्री प्रबल सिपाहा, Secretary of Madhya Pradesh Public Service Commission, submits that under Article 309, Public Service Commission has a right to frame its own norms for appointment of an expert committee, comma, is directed to produce those norms as were framed, because Shri Prabal Sipaha, when asked to give the norms, makes a submission that those norms are prepared by the controller of examination and he is not in possession of said norms right now. Next paragraph. नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है. प्लीज डोंट. रिकॉर्ड में है तो अभी दिखा दीजिए. हाँ, क्लियर कर लीजिए. नहीं, नॉर्म्स पूछा मैंने. आई एम नॉट सेइंग दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड. आई एम सेइंग दैट व्हाट आर द नॉर्म्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सपर्ट. आपने बोला वही तो लिखा है मैंने, तो वही तो आप ही का तो लिखा रहा हूँ. आप और इनमें कोई फर्क थोड़ा है. आप जो बोलेंगे उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे बोलेंगे. नहीं, ठीक है, तो वो नॉर्म्स आ जाए. हाँ, ठीक है. हाँ, ठीक है. उसमें लिखा दिया 300 नॉर्म, उसमें लिखा दिया नॉर्म्स फ्रेम टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट. आगे का कंटेंशन भी था. जो नॉर्म्स होते हैं वो एग्जामिनेशन स्कीम हर सिलेक्शन. फुल स्टॉप. उसमें वहीं जोड़ लेना. श्री प्रशांत सिंह फर्दर सबमिट्स दैट the norms which are formed are displayed in the examination scheme itself. Full stop. The fact of the matter is that the advertisement annexure P1 on page 27, as has been read over by Shri, P1 nahi hai, P3, sorry, annexure P3 on advertisement annexure P3 on page 27
in WP 3141/2024, which has been taken as a lead case by Shri Prashant Singh, makes a mention of the fact that makes a mention in clause 5 that within inverted commas विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा, इसको कोट कर दीजिएगा, समस्त अभ्यावेदनों का कोट कर दीजिएगा. And when this court wanted to know that what is the provision for constitution of subject specialist committee, then it was pointed out that there are norms which are framed under Article 309, full stop. Let the norms for appointment of subject specialist committee be brought on record by the Secretary of the Public Service Commission, full stop. He will also hand over the relevant material to Shri Prashant Singh, as it is informed by Shri Prashant Singh that since main exams are going to be started from 11th March, Secretary cannot be spared. Therefore, taking this aspect into consideration, that his valuable services are required in the Public Service Commission, he is exempted subject to the condition of supplying the necessary documents to his counsel. List on, आप चार्ट कब तक बनाकर दे देंगे? प्रोविजनली आप सब लोग अलाउड है एग्जाम में भाग लेने के लिए, जो नहीं है उसको आज कर देंगे. हाँ तो कर देंगे. हाँ क्या होता है आपके निर्देश आए तो हमने सर फिजिकल फॉर्म लेना शुरू किया और ले लेके सर एक आदमी डिप्लॉय किया, वो लोग आ रहे हैं देते जा रहे देते. सबको थोड़ा ना, जिनको पिटिशनर को कितने पिटिशनर्स हैं हमारे सामने? There are bunch of petitions. कितने हैं टोटल? हर चीज का एक कट ऑफ डेट होता है. मेरा निवेदन ये कि आपका निर्देश था, हमने फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट किए. हाँ ठीक है, ये सच है. लेकिन आज अगर निर्देश होगा सर, इट विल बी वेरी टीडियस टास्क फॉर अस सर. इट इज रियली प्रैक्टिकली नॉट फीजिबल फॉर अस. इनके लिए क्या अलग से इम्तिहान कराएंगे? अगर ये पिटीशन में सक्सीड कर जाते हैं तो क्या इनके लिए हम ऐसा नोट कर लेते हैं, एक को भी नहीं देंगे अलाउ, अब अलग से इम्तिहान कराएंगे? मेरा तो जो मेन ऑब्जेक्शन था सर वो हम तो ये रिक्वेस्ट कर देंगे कि कल तक एक टाइम दे देंगे, कल सुबह तक जो फॉर्म जमा करेगा फिजिकल फॉर्म में उसको प्रोसेस करेंगे और उसके रोल नंबर जारी करेंगे, बस इतना कहेंगे. आई विल नॉट ओपन अ पेंडोरास बॉक्स फॉर एवरीबॉडी. जो हमारे सामने है वो सिर्फ मात्र वो, और वह भी कल सुबह एक टाइम निर्धारित कर देंगे. उस टाइम तक जो फिजिकल फॉर्म में सेक्रेटरी साहब के अंडरटेकिंग ले लेंगे कि कल वहां पर एक आदमी को ऑथराइज करेंगे फॉर्म लेने के लिए, छुट्टी का वो नहीं रहेगा. उसको लेंगे तो रोल नंबर देना होता है एग्जामिनेशन सेंटर्स में. कर दीजिएगा. 8-10 लोग बचे हैं, ज्यादा लोग बचे नहीं है. 8-10 लोग बचे होंगे मैक्सिमम, ज्यादा लोग बचे नहीं है. There are many petitioners. जो मेन सबमिशन था उस पर सर फिर बात डिविएट हो गई. सर पिटिशनर को ये एस्टेब्लिश करना होगा कि सर कोई लीगल राइट या कोई, वो तो लिखाएंगे. अभी मैंने कंक्लूड कहाँ किया, अभी लिखा रहा हूँ मैं, आपका आर्गुमेंट पूरा लिखा रहा हूँ. और एक्सरसाइज चल रही. मेरा निवेदन ठीक मेरा निवेदन सर आप कृपया करके उसको अप्रिशिएट करें सर. मेरा आग्रह ये था सिंपली बिकॉज मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाता तो एक नंबर मिल जाता. मुझे ऐसा कल्पना हो रही है कि उसको 2 नंबर कम मिलते तो मैं उससे ऊपर आ जाता. क्या ये बेसिस हो सकता है? मैं आपको 2 बातें, आपका जो सवाल है उसका मैं उत्तर अभी दे देता हूँ आपको. नंबर किसी के कम करने की यहाँ कोई मंशा नहीं है, पहली चीज, ठीक है. और ऐसी कोई पिटीशन में सहायता भी नहीं है. यहाँ सिर्फ इशू ये है कि जैसे 2 केस इन्होंने, अंशुल तिवारी जी ने आर्ग्यू किया 2 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि पहले एक ऑप्शन दिया गया था, बाद में ऑप्शन बदल दिया गया. उतना एग्जामिन करने के लिए हम आपका एक्सपर्ट का मटेरियल देख लेंगे, ठीक है. ऐसे ही अगर इसीलिए इनको कंपाइलेशन बनाने को बोला गया है. अगर अदर क्वेश्चंस में ऐसा कोई मटेरियल होगा, ठीक है, तो देखेंगे. नहीं तो हमें भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट सेज दैट एक्सपर्ट रिपोर्ट इज फाइनल. सर और एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट, हाँ, बहुत सारी एकेडमिशियंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. समय इस पे जाए नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका सलाह है. ठीक है सर. मेरा एक निवेदन ये है सर एक जो 2 क्वेश्चंस के ऊपर इन्होंने आपके सामने बात रखी है सर, एक में हेडक्वार्टर्स बदलने की बात की जी. सर कबड्डी एसोसिएशन पे चुनाव होना बंद हो गया कितना 8 साल 2018 से.
सुप्रीम कोर्ट से सर एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब को उसका नियुक्त किया गया, और वो रिटायर्ड जज साहब दिल्ली में ही रहते हैं, और बायलॉज के हिसाब से जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी का जहाँ घर होगा वही उसका कार्यालय है। तो चूंकि अभी कोर्ट के द्वारा आदेशित और पदेन माननीय न्यायाधीश जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो दिल्ली का पता है, तो वो देख लेंगे ना, वो मटेरियल देखेंगे ना। दूसरा नहीं सर, मैं इसलिए सर मैं अपनी बातें डिफिकल्ट, हाँ बताइए ना, बताइए। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो रहा था कि वो बेल्टेक होगा कि मैककेफ रहेगा। अरे भाई, ऑथराइज टेक्स्ट जो कहेगा वो रहेगा, और ऑथराइज टेक्स्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने उचित माना वो होगा। हाँ। अब गूगल सर्च से सर, गूगल सर्च तो नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। अरे उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए भाई। सब की कोर्ट में ला करके मैं तरह तरह के टेक्स्ट रखता जाऊं कि सर इस टेक्स्ट में मैककेफ लिखा है, इसमें ये लिखा है, और कोर्ट उसका संज्ञान लेने लगेगी। सर ये बड़ा डिफिकल्ट नहीं, उसमें उन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तक प्रस्तुत की है, एंड बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आई कैन से दैट एनसीईआरटी बुक्स आर नॉट टू बी रिलाइड ऑन। ठीक है, इफ यू वांट टू नो दिस देन दे हैव, सो दैट इज टू बी एग्जामिन्ड। आपने जो अगर लिखा है तो बस बात, आपका सवाल सही रहेगा। अगर एनसीईआरटी की किताब में भी बेंटिक लिखा है तो क्यों परेशान होते हैं? आई विल बी द लास्ट पर्सन टू टच दैट। सर में बार जो आप 2-2.25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 1.5-2 लाख बच्चे। हिंदुस्तान में बेरोजगारी कितनी है? नहीं सर, बेरोजगारी सब 6,000 बच्चे भी घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोर्ट में खड़े होकर बहस नहीं कर रहे। हाँ। 6,000 बच्चे भी फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। सर, 150 में से ये 5, 8, 10 बच्चे जिन्होंने आपत्ति की है, ये आपके पूरा हॉल्ट कर देते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस। नहीं, कहाँ हॉल्ट कर दिया भाई, कहाँ हॉल्ट कर दिया? सर हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि सर इनको प्रोफेशनली अपीयर करें। सर ये एक व्यवहारिक पक्ष है। हाँ ठीक है सर, 100 बार झुकेंगे आपके निर्देश। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर दिस शुड हैव प्राइमा फेसी केस। आप एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, इस कोर्ट का और मेरा इस कोर्ट के ऑफिसर के रूप में कभी भी यह मंशा नहीं है कि किसी को भी झुकाया जाए। मेरी सिर्फ एक उत्कंठा है कि सत्य की खोज में सहायक बनूं, ठीक है, और उस उत्कंठा के चलते हुए अगर सत्य की खोज में मैं सहायक बन सकता हूं, सो आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। लेकिन इसमें इनको करना पड़ेगा। आप करेंगे ना इसी की खोज की जो अभिलाषा लेके आए हैं, इनको स्वयं के पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एग्री विद यू। तब होगी जब प्रथम दृष्टया केस हो। तो वही तो, इसीलिए तो उनको बोला चार्ट बनाकर लेकर आओ। सर कुछ एस्टैब्लिश ही नहीं कर रहे सर। यूपीएससी ने क्वेश्चन वो पूछा है, यूपीएससी ने कहा है, एक एक करके बोलिए। क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है मालूम। उसका आंसर है, even the subject experts have relied on the private publication VD Mahajan, and we are relying on the NCERT lordship। ठीक है भाई, मैंने आपके बिहाफ पे उत्तर दे तो दिया जी साहब को भाई। आपके बिहाफ पे मैंने क्या बोला कि अगर ऑथेंटिक टेस्ट होगा, उनकी जो जिज्ञासा थी या जो उनकी एंजाइटी थी वह ये थी कि क्या हम अलग अलग टेक्स्ट बुक्स और गूगल सर्च के ऊपर करेंगे। मैंने आपके बिहाफ पे उत्तर दे दिया है। ऑथेंटिक एनसीईआरटी का टेक्स्ट होगा या कोई इस प्रकार के इस लेवल का पब्लिकेशन होगा, अभी देखा जाएगा। आई एम द लास्ट पर्सन टू लुक इनटू द गूगल सर्च। गूगल सर्च जी उसके अलावा भी 3 क्वेश्चन और है। अरे भाई वो बाद में आपको पूरा तो चार्ट बना कर दीजिए आप लोग। क्यों भाई, सब काम को समेटने के लिए क्या आवश्यक है कि आप सब लोग एक साथ बैठे, जो 5 सवाल हैं उसके बारे में बैठे। शर्मा जी ने बड़े फेयरली बोला कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 ने आपत्ति नहीं की थी। मैंने ये व्यू क्लियर कर दिया कि जिन्होंने आपत्ति नहीं सबमिट की थी उनको कोई लोकस नहीं है। अगर वो एग्जाम में इंट्रीम ऑर्डर से बैठ भी जाएंगे, आई विल डायरेक्ट द सेक्रेटरी नॉट टू डिक्लेयर देयर रिजल्ट्स, देयर कैंडिडेचर। नहीं जी, नहीं, अगर वो वाला कैटेगरी में है आप तो सुनिए, डोंट रिपीट आर्ग्यूमेंट्स प्लीज, इट इज ऑलरेडी 5 o'clock। मिस्टर अंशुल तिवारी ने जो कहा है, आई हैव ऑलरेडी नोटेड इट। अगर आप उस कैटेगरी में है कि जो उत्तर आपने दिया वही उत्तर प्रोविजनल आंसर की में था, देन इवन एजी साहब अंडरस्टैंड्स दैट देयर वाज नो ओकेजन फॉर यू टू फाइल ऑब्जेक्शन। दैट कैटेगरी वी हैव ऑलरेडी डिलिनेटेड। आप एक ही चीज को रिपीट करेंगे, दिस इज नॉट प्रॉपर। My lord, there are some more candidates also who cannot approach this court. Sorry, we are not sitting here in public interest litigation. Sorry. Because वो आप देखिएगा। Because if they have not approached, then they will have to lose. Because if we will success your lordship in these petitions, lordship, that select list will revise your lordship.
होने दीजिए, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो देखे जाएंगे, लेकिन जो मेरे सामने नहीं है उनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जुरिस्डिक्शन नहीं है मेरे को। ठीक है, देखिए petition 5064/24 जी, ये पहली बार लगी है लॉर्डशिप। हाँ कर रहे हैं ना, बोल तो दिया भी कर रहे हैं आपको। आपने टाइम से आपत्ति दर्ज की थी? Lordship, I have asked from the person, हाँ। but he is not picking my phone. I'll inquire it and आधा घंटे में बता दीजिए किस किसने टाइम से आपत्ति की थी। जी। जिसने टाइम से आपत्ति की थी वो सुबह 2 बजे तक हम सेक्रेटरी साहब की प्रेजेंस में टाइम डिक्लेयर कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड ऑफिस में इंदौर में जाकर आवेदन जमा करा दे फिजिकली। यू विल ऑथराइज हुम सो दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू लुक फॉर दैट पर्सन। किसको ऑथराइज करेंगे? हाँ, तो सेक्शन ऑफिसर टू दी सेक्रेटरी बीएससी। अच्छा, क्या चयन शाखा सिलेक्शन ब्रांच, ठीक है, उसमें लिखिएगा। लेकिन आप बताएंगे जिसने आपत्ति की होगी उसी को परमिट करेंगे। आप तो ऑलरेडी परमिटेड है, प्लीज नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। लिबर्टी मतलब सम पर्संस कैन नॉट अप्रोच इंदौर योर लॉर्डशिप, सो दे मे सेंड ईमेल और लॉर्डशिप। नहीं सॉरी, नहीं फिजिकली, उन्होंने बताया ना फिजिकली फॉर्म ले रहे हैं। इतनी लग्जरी नहीं, शाम को ट्रेन जाती है, जाइए 3 बजे का 2 बजे का टाइम इसीलिए रख रहे हैं। अब बस जाइए, ट्रेन जाइए, कार जाइए, 2 बजे का टाइम इसीलिए रख रहे हैं, so that they have time during the day to process your application and generate roll numbers. 2 बजे तक नहीं करेंगे तो नहीं entertain होगी। मतलब just one thing I would like to submit. There was no occasion to submit objections in regard to the objection. मोरे, अगर आपकी समझ में नहीं आता है कोई चीज in regards to the question which was wrongly framed, the Lord Metcalfe वाला question. अगर नहीं था आपत्ति प्रस्तुत करने का तो उनको दे तो रहे हैं। That's it. क्या लिखा? लिस्ट ऑन। आप लोग कब तक बना देंगे चार्ट? मतलब बाय मंडे मान लो। ठीक है, तो मंडे को तो नहीं सुनेंगे इसको, उसके बाद सुनते। लिखिएगा, prepare submit make the compliance by 11th March, list on 13th March, top of the list. In the meanwhile, Shri Prashant Singh, learned senior advocate for the Public Service Commission, is requested to call for the norms and keep all the relevant material on which experts have relied, on an understanding that the said material or the names of the experts, names of the experts will not be shared with anybody and it will be kept confidential and returned back to the council in a sealed cover. But material which was considered by the experts will be shared with the participants and will be discussed in the order. In the meanwhile, it is directed that those candidates who are before this High Court and if they have yet not filled their application form for mains may fill their forms by 2 p.m. in physical form before the section officer establishment section officer selection, who will be deputed by Shri Prabal Sipaha, Secretary Public Service Commission, for this specific purpose, and who will be available in the office of the Public Service Commission from 10 a.m. to 2 p.m. to do the needful. Full stop. After 2 p.m., no forms shall be accepted, and thereafter, Secretary is requested to generate roll numbers for such candidates who submit their application forms and permit them to appear in the main examination slated to be conducted from होगा ना, 11th से शुरू हो रहा होगा ना, कब तक रहेगा? ठीक है, from 11th to 17th और whatever dates, डेट मत लिखिए, from 11th onwards कर दीजिए, बस डेट मत लिखने की जरूरत नहीं। 11-16 है। हाँ ठीक है, हमें उससे डेट से कोई लेना देना नहीं। ठीक, लिस्ट ऑन 13 मार्च 2024। ये कागज संभाल के रखिएगा इस पेज में। शुड आई रिकॉर्ड? वो मैंने आपका रिकॉर्ड आपको वापस कर दिया, आई हैव नॉट टच्ड इट, तो उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है कि लिखिएगा, ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इज रिटर्न। रिकॉर्ड हमको दिया है तो ठीक है, मत लिखिए, चलिए। सीसी टुडे जी, सीसी टुडे, हाँ सीसी टुडे सेम ऑर्डर सब में अरे भाई सब में है सर, 108 109 सब में कर दीजिएगा। It is made clear that this order will govern only the petitioners and nobody else.
पहले